My humble pronouns in the local feast of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. It's my immense pleasure and profound honor to welcome you all to the National Seminar on Environmental Wellbeing and Climate Action towards a Sustainable Planet, organized by IQAC, Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal, and sponsored by MP Council of Science and Technology, Bhopal. We are privileged to have with us Honorable Professor Rajiv Dixit, Vice Chairman, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, as the chief guest. Our guest of honor today is respected Dr. N.P. Shukla, former Chairman, CAQM, National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi. Our Chairman, College Governing Body, Sri Jambu Bandari ji, who will be joining us online, and our esteemed keynote speaker today is Professor Chetan Singh Solanki, who is popularly known as the Solar Man of India, will be joining us online later as he is on his yatra from Mumbai to Vapi and there's heavy rainfall there. Honorable dignitaries on the dais, I welcome you all once again and a very pleasant morning to one and all present here. I, Dr. Megha Singh, Head Department of English, on behalf of the Sathya Sai College for Women, take the privilege to welcome you all in the National Seminar on Environmental Wellbeing and Climate Action towards Sustainable Planet. May I again welcome all the dignitaries on the dais. Chief guest Professor Rajiv Dixit, respected Dr. N.P. Shukla, respected Chairman College Governing Body Jambu Bandari ji. I'm not able to Our Director Dr. Pratibha Singh Madam, Principal Dr. Renu Mishra Madam, Dr. Archana Srivastava Madam, our ex-principal, co-patron of this national seminar and Dean Science Faculty, Dr. Anju Vajpayee, Principal Sri Sathya Sai College, Law College for Women, and Dr. Neena Arora, IQSC Coordinator and convener of the seminar, distinguished guests, esteemed academicians, researchers, delegates, members of the media, faculty members, dear students, and all the participants and researchers who have joined us here and online. The Earth is not merely a planet we inhabit. It's our shared home, our greatest inheritance, and our collective responsibility. The choices we make today will shape the world we leave for tomorrow. As Mahatma Gandhi said wisely, reminded us the earth provides enough to satisfy every person's need, but not every person's greed. Today, we have assembled here not merely to inaugurate another academic program, but to reaffirm our shared commitment towards protecting the delicate balance of nature. Climate change, depletion of natural resources, and environmental degradation are among the defining challenges of our times. They demand not only scientific innovation, but also ethical responsibility, informed public policy, and collective action. The seminar seeks to provide a vibrant platform where policymakers, environmental experts, researchers, academicians, and young scholars come together to exchange ideas, deliberate upon emerging challenges, and collectively envision a sustainable future. An institution becomes truly distinguished when it is blessed with the presence of visionary leaders, eminent scholars, and dedicated professionals. Today, we are deeply honored to be in the august presence of such distinguished personalities. Every auspicious beginning seeks the blessings of Goddess Saraswati, the eternal embodiment of wisdom, learning, creativity, and enlightenment. Moving ahead, may I now request our guest to offer flowers to Goddess of Wisdom, Ma Saraswati. May her divine grace illumine our minds, inspire our thoughts, and bless today's deliberations. I request our students for Saraswati Vandana.
वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना Thank you, dear students, for the soul-stirring presentation. The true meaning of life is to plant trees under whose shade we may never sit. The theme of today's seminar inspires us not only to discuss environmental sustainability, but also to practice it. In keeping with the spirit, our institution chose to honor the distinguished guests with living saplings, symbols of life, hope, resilience, and our shared commitment to protect Mother Earth. A sapling grows, nurtures life, leaves a lasting legacy. May I respectfully invite our director, Dr. Pratibha Singh Madam, to present the sapling in a memento as a token of remembrance to our esteemed chief guest, Professor Rajiv Dixit, sir. Thank you so much, ma'am. I now request our respected principal, Dr. Renu Mishra, to honor our distinguished guest of honor, Dr. N.P. Shukla, sir, with a sapling and a memento. Thank you so much, ma'am. May I request Dr. Neena Arora, convener of the seminar, to present a sapling to our respected director, Dr. Pratibha Singh Madam. Thank you so much, madam. Every institution reflects the vision of a leader, and every successful academic endeavor is strengthened by dynamic leadership. It's my privilege to introduce our respected principal, Dr. Renu Mishra, before inviting her for welcome address. A distinguished academician with over 36 years of rich experience in higher education, Dr. Mishra has made remarkable contributions to teaching, research, and academic administration. She has successfully guided 12 doctoral scholars, published more than 80 research papers in reputed national and international journals, completed 2 UGC funded research projects, and presented her scholarly work at prestigious international conferences held in New York, Zurich, and Bali. She is supervising 5 PhD candidates at present. Her outstanding contributions have been recognized with several prestigious honors, including the Bharat Gaurav Award, Senior Scientist Award, and the Career Excellence Award. May I request our respected principal, Dr. Renu Mishra, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Thank you, Megha. Om Shri Sai Ram. My humble pranam into the lotus feet of Shri Sathya Sai Baba. Respected Chief Guest, Professor Rajiv Dikshit, Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal. Respected keynote speaker, Professor Chetan Singh Solanki, ex-professor, IIT Mumbai, founder Energy Swaraj Foundation. Dr. N.P. Shukla, former chairman, CAQM, National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi. Dr. Jambu Bhandari, chairman, college governing body. Dr. Pratibha Singh, director of the college. Dr. Anju Bajpayee,
Principal, Law College, Dr. Archana Srivastav, ex-principal and Dean, Science Faculty, distinguished senior scientist, Dr. Neena Arora, convener of the seminar, and IQAC team members, esteemed faculty members, research team members, research scholars, dear students, and all dignitaries. Good morning to all of you. It's my great privilege and honor to welcome you all to this one-day national seminar on environmental well-being and climate action towards sustainable planet, organized by our college today. I extend my heartiest welcome to our chief guest, Professor Rajiv Dixit ji. Sir, your leadership in governance and policy analysis provides great direction to how environmental policies can be effectively implemented for public well-being. Your presence inspires us. We're equally honored to have our keynote speaker, Professor Chetan Singh Solanki sir, as an ex-professor of IIT Mumbai and founder of Energy Swaraj Foundation. Your mission of solar-powered sustainable living has given a new vision to the nation. We eagerly look forward to your address. I am delighted to welcome Dr. N.P. Shukla ji, former chairman, CAQM, Government of India, along with our senior scientists, professors, research scholars, delegate, and students. I also warmly welcome Sri Jambu Bhandari ji, chairman of our college governing body, for his constant support and guidance. I extend a warm welcome to Dr. Pratibha Singh, director of our college, for her visionary and leadership. Dr. Anju Bajpayee, principal, Law College, Dr. Archana Srivastav, ex-principal, Dr. Neena Arora, convener of the seminar, IQAC team members, and all the faculty members for their dedicated efforts, coordination, and hard work in making the national seminar possible. The theme of today's seminar is not just academic, it is about our survival and future. Environmental well-being and climate action are directly connected to our health, food security, and quality of life. Building a sustainable planet requires collective action from policymakers, scientists, institutions, and most important, our youth. Through this seminar, we aim to bring together experts and young minds to share knowledge, discuss challenges, and commit to solutions. I am confident that the deliberation today will lead to meaningful outcomes and inspire all of us to take concrete steps towards a greener future. I once again welcome all of our dignitaries and participants, and I also extend a warm welcome to all those who joined us online for this seminar. I thank you everyone involved in making this event possible. I wish this national seminar great success and fruitful discussion. Protecting the environment is not a choice, it's our shared responsibility. Thank you. Sai, one second. Thank you so much, ma'am, for your gracious words of welcome that beautifully reflected the vision of this institution and has set a meaningful tone for the deliberation that awaits us throughout the day. Thank you so much once again. A seminar derives its strength not merely from its participants, but from the clarity of its purpose and the relevance of its theme. To present the objective, significance, and vision of today's national seminar, I humbly invite Dr. Neena Arora, IQAC coordinator and convener of the national seminar. Ma'am has been the guiding force behind the meticulous planning and successful organization of this prestigious academic event. Ma'am, please. Thank you, Neha. Om Shri Sai Ram. My humble pranam in the lotus feet of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. A very good morning to one and all. Honorable Chief Guest, Professor Rajiv Dixit ji, Vice Chairman Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Government of MP Bhopal. Guest of honor, respected Dr. N.P. Shukla ji, former Chairman, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi.
Keynote speaker, respected Professor Chetan Singh Solanki ji, founder, Energy Swaraj Foundation. Chairman, College Governing Body, respected Shri Jambu Bhandari ji. Director, Dr. Pratibha Singh ji. Principal, Dr. Renu Mishra ji. Dr. Anju Bajpai ji, Principal, Shri Sathya Sai Law College for Women. Ex-Principal, Dr. Archana Srivastav ji. Distinguished speakers, esteemed delegates, faculty members, researchers, dear friends, and all participants joined online and offline. It is my privilege to welcome you all to the National Seminar on Environmental Wellbeing and Climate Actions Towards a Sustainable Planet. Thank you for being part of this important conversation about the future of our planet. We stand at a critical moment in human history where environmental degradation, public health, and economic development are closely interconnected. Climate change is no longer a distant concern. It is a reality we experience through rising temperature, erratic rainfalls, polluted air and water, biodiversity loss, and increasingly frequent natural disasters. While development has improved our lives, unsustainable growth has intensified natural disasters. The Assam floods and Himachal Pradesh cloudburst and landslide in 2025, record-breaking heat waves across Europe in 2026, the ongoing wildfire across Canada and the United States, and the rapid melting of Himalayan glaciers remind us that climate change is our present reality. These events underline the urgent need for sustainable development and responsible environmental actions. Environmental degradation also affects our mental and social well-being. Disasters also bring displacement, anxiety, economic losses, and social instability. Climate action is therefore not only an environmental necessity, but also a public health and economic imperative. This seminar aims to strengthen our understanding of the relationship between environmental health, climate change, and sustainable economic development. It seeks to promote innovative solutions, encourage interdisciplinary dialogue, and inspire ethical responsibility among students, researchers, academicians, and policymakers. I am confident that deliberations during this seminar will generate new ideas, meaningful collaborations, and practical solutions for a healthier and more sustainable future. As environmentalist Wangari Maathai said, it is the little things citizens do that's what will make the difference. Every responsible action, however small, contributes to building a sustainable world. In this spirit, to offset the carbon footprint of this seminar, we are launching a plantation drive of 1,000 trees in collaboration with Sri Sathya Sai Seva organization. Let every tree we plant be a symbol of hope, responsibility, and our shared community commitment to protecting our planet. I express my gratitude to the MP Council of Science and Technology, Bhopal, for sponsoring this great initiative. My sincere thanks to all those who have supported this seminar to make it possible. Sustainable development is not a choice, it is our responsibility. Together, let us build a healthier environment, a stronger economy, and a sustainable future for the generations to come. Thank you so much, Simon. Thank you so much, ma'am, for presenting the vision and objectives of the seminar with such clarity and conviction. Thank you once again. Education is the most powerful force for transforming society, and visionary leadership is the foundation upon which every great institution is built.
An institution's journey towards excellence is guided by leaders who inspire, innovate, and empower others to realize their fullest potential. We are indeed fortunate to have amongst us a distinguished educationist whose exemplary leadership has been instrumental in fostering academic excellence, research, and value based education. It is my honor to introduce our director, Dr. Pratibha Singh Madam, before inviting her for her address. A distinguished academician with over 40 years of dedicated service in higher education, Dr. Pratibha Singh is widely respected for her outstanding contributions to teaching, research, and educational leadership. An accomplished researcher and mentor, she has successfully guided 18 PhD scholars, published 42 research papers in reputed national and international journals, and completed 3 UGC funded research projects. Her visionary leadership continues to inspire generations of students and educators alike, nurturing an environment where excellence and values go hand in hand. With all due respect, I invite our esteemed director, Dr. Pratibha Singh, for her address. Ma'am, please. May we have a very good round of applause, please. Firstly, Om Sai Ram, श्री सत साईं भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन. Respected Dr. N.P. Shukla sir, former chairman CAQM, NCR Government of India, New Delhi, guest of honor, chief guest Professor Rajiv Dikshit ji, vice chairman Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, keynote addressee Professor Chetan Singh Solanki ji, ex-professor, eminent scientist, IIT Mumbai. He has referred to as Solar Man of India by Times of India, Hindu, and India Today. Some people also called him Solar Gandhi for his remarkable work in the field of solar energy. Our respected Shri Jambu Bhandari ji, Chairman, College Governing Body, and President of Shri Sat Sai Trust, Madhya Pradesh, and all respected trustee, heartily welcome to all of you. I also welcome to Principal Dr. Renu Mishra, Law Principal Dr. Anju Bajpayee, Dr. Archana Srivastav, ex-principal and head of Department of Physics, coordinator, National Seminar, Dr. Neena Arora, distinguished dignitaries, esteemed resource persons, all HODs of the college, faculty members, researchers, delegates, and dear students. It gives me immense pleasure to announce that our institution is going to host national seminar on environmental well-being and climate action towards sustainable planet. The theme is not only timely, but also a moral imperative for our generation. Today, climate change is no longer a prediction, it is reality. The choices we make today will determine the quality of life tomorrow. Environmental well-being is therefore not an option, but our collective responsibility. As Bhagwan Baba, Shri Sat Sai Bhagwan Baba wisely said, nature is the best teacher. When we live in harmony with nature, we ensure harmony within ourselves and society. This timeless wisdom must guide our action and our policies. As institution of higher education, we are
entrusted with a greater responsibility to nature, inform minds, compassionate hearts, and responsible citizens. Research must move beyond publications to inspire practical solutions and sustainable action. I am delighted that scholars from diverse disciplines have come together to exchange ideas and present innovative research. The souvenir of aesthetics reflects our shared commitment to knowledge, collaboration, and environmental stewardship. I congratulate the IQAC coordinator, Dr. Neena Arora, and her team, organizing committee, and every contributor to making their seminar a meaningful academic endeavor. I also express my sincere gratitude to the MP Council of Science and Technology, Bhopal, for their valuable support. Let us leave this seminar not only with new ideas, but with a renewed commitment to protect, preserve, and restore our planet. The earth does not belong to us, we belong to the earth. Let become the generation that choose action over indifference and sustainability over convenience. I encourage you all to carry the outcomes of this seminar beyond academic discussions and translate them into responsible actions that contribute to a greener and healthier society. Again, I wish to all of you and my best wishes for the seminar, success of our seminar. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, ma'am, for your inspiring and visionary address. Your words have beautifully reinforced the importance of environmental responsibility and collective action towards building a sustainable future. The greatest wealth of a nation lies not merely in its resources, but in the wisdom with which those resources are protected and preserved. It's now my privilege to introduce our distinguished guest of honor, Dr. N.P. Shukla sir, former Chairman CAQM, National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi. Dr. Shukla is an eminent environmental scientist, administrator, researcher, and policy maker whose distinguished career reflects an unwavering commitment to environmental protection and sustainable development. Dr. Shukla holds master's and doctoral degrees in life sciences along with an MBA, combining scientific excellence and administrative expertise. With an illustrious professional career spanning more than 36 years, including 9 years of exclusive leadership in environmental governance, he has made remarkable contributions in the areas of air quality management, pollution control, environmental impact assessment, biodiversity, conservation, forest conservation, hazardous substance management, and environmental policy formulation. He has served with distinction as a former chairman of the Madhya Pradesh Pollution Control Board and the former chairman and full-time member technical of the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, where he has played a pivotal role in formulating and implementing environmental regulations and strategies for improving air quality across the NCR. His remarkable professional journey also includes leadership roles in the MP Council of Science and Technology and Expert Appraisal Committee of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and several premier scientific institutions, making him one of India's most respected environmental administrators. Dr. Shukla has guided 12 PhD scholars, published 84 research papers in reputed national and international journals, authored the reference book Birds of Madhya Pradesh, and successfully completed 11 research projects, making significant contributions to environmental science and policy.
Now, again, please join me in extending a warm and respectful welcome to our esteemed guest of honor, Dr. N.P. Shukla. A round of applause, please. Sir. जी सत्य साईं बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजीव दीक्षित जी, वाइस चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डॉक्टर प्रतिभा सिंह, principal of this institution, Dr. Renu Mishra, Madam Archana Srivastav, Madam Anju Bajpayee, and dignitaries sitting off the dais. सभी को मेरा प्रणाम। एक बात और बोलना चाहता हूं सबसे पहले, ये साइंस हम अपनी मातृभाषा में भी अच्छा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस है तो अंग्रेजी ही होना चाहिए। हम अपनी मातृभाषा में जितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना कोई विदेशी भाषा में नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि साइंस पे सारी बपौती अंग्रेजी की नहीं है। अभी रिसेंट एक स्टैटिस्टिक्स आई, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, IIT, IIM, IIIT, whatever it is, तो जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के, इनका स्टैटिस्टिक्स आया, इसके जितने मेरिटोरियस बच्चे हैं मैक्सिमम वो हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में पाई है। ये स्टैटिस्टिक्स रियल है कि जो बच्चों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में पाई है वो ही मेरिटोरियस हैं IIT, IIM और सब जगह। तो डोंट यू थिंक दैट कि अगर हमको अंग्रेजी में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, अगर अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ये एक भ्रम निकाल देना चाहिए। लेट अस कम ऑन टॉपिक एंड यू नो दैट दुनिया की अभी मैं बधाई देता हूं आपके इंस्टीट्यूशंस को कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना। दिस एनवायरनमेंट दुनिया की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, depletion of ozone layer. And you know that the solution of all these problems, what is one solution? अभी मीना मैडम ने बताया कि हम we are going to have a plantation of 1,000 plants. Plantation is the answer for everything. If you wanted to address climate change, go for plantation. If you wanted to go for to address the global warming, go for plantation. And depletion of ozone layer, greenhouse gas का emission रोकना है. So that plantation is the best and only solution for all such problems. तो अभी मैं कह रहा हूं कि ये आप जो 1,000 पौधे लगा रहे हैं, in fact, I was there, you know that I was in Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining area. NCR में दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा एंड adjoining area में पंजाब वगैरह भी जुड़ा हुआ है।
So there are around 25 districts of 25 districts of this Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. मैडम चरणजीत को नमस्कार. तो आपके यहाँ की एलुमनाई है ना मैडम तो आपके तो मैं we were looking after this plantation program also, and Commission for Air Quality Management is a apex body. आपने सुना होगा ना कि जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, and this is CAQM, and it is an apex body, and all government institution, all government officers or private, everybody are compelled to follow CAQM. 3 साल का मेरा कार्यकाल था और हमने 6 करोड़ 24 लाख पौधे लगाए 3 साल में. देखो, अगर एयर पोल्यूशन कम करना है, और आप देखें आज ही पेपर में मैंने पढ़ा है कोलंबिया में 9 लाख पौधे लगाए गए, 9 लाख का वृक्षारोपण हुआ, एंड 5 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ. एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको कह रहा हूं 6 करोड़ 24 लाख एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड आई वाज हैंडलिंग दिस इशू प्लांटेशन, एंड सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हम हर मंथ में मीटिंग करते थे. गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हर महीने मीटिंग करते थे, पीछे रखते थे. तब 6 करोड़ 24 लाख पौधे लगाए. मैंने अनुभव किया कि जहां पर भी डेंस प्लांटेशन है, ये मेरा अपना अनुभव है, जहां भी डेंस प्लांटेशन है तो वहां टेम्परेचर कम है. ये कोलंबिया का तो आज पेपर में आया है, एंड ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जगह स्टडी हुई है कि जहां घना प्लांटेशन है वहां टेम्परेचर कम है, वहां एयर पोल्यूशन कम है, AQI कम है. AQI में PM 2.5, PM 10, इसका लेवल बहुत कम है. तो अभी आप कह रहे थे कि 1000 पौधे लगाने का प्लान है. You can have, with the same area, you can have 3 times more plants in same area with Miyawaki technique. तो Miyawaki टेक्निक से अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो एक छोटे पैच पे अच्छा फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा. यू मस्ट हैव हर्ड दैट अर्बन फॉरेस्ट. अगर ये पैचेस हमारे शहरों में बीच बीच में बना दिए जाएं मियावाकी से, मियावाकी में क्या होता है 2x2 का 2x2 या 2.5x2 के एरिया में 3 से 5 पौधे लगते हैं, और उसमें डेंस प्लांटेशन होता है मियावाकी टेक्निक में. और हमने देखा है, हमने बहुत जगह ये मियावाकी टेक्निक से, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार मन की बात में ये प्रोग्राम में बोला था मियावाकी टेक्निक. तो मियावाकी टेक्निक से दिल्ली में अगर आप जाएं, द्वारका वगैरह के एरिया में बहुत ज्यादा प्लांटेशन कराया है. और जहां भी ये प्लांटेशन कराया मियावाकी से, तो वो एक तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, दूसरे वहां टेम्परेचर बहुत डाउन है, पूरे शहर का एवरेज टेम्परेचर कुछ है और वहां का कुछ है, बहुत कम है. जिस एरिया में प्लांटेशन ज्यादा है और ये ज्यादा है, वहां पर सब जगह टेम्परेचर कम है, एयर पोल्यूशन कम है, AQI काफी नीचे है, PM 2.5, PM 10 सब नीचे है. So this is our experience. So my request with you कि let us plan
मियावाकी प्लांटेशन, अर्बन फॉरेस्ट बनाए, छोटी जगह में ज्यादा पौधारोपण करें और उसमें इम्पैक्टफुल होगा। इसमें इम्पैक्टफुल उतना इम्पैक्ट एकदम से नहीं आएगा, इसमें एकदम से बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एंड आई अंडरस्टैंड यू हैव अ लॉट ऑफ ओपन एरिया, एंड सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ ओपन एरिया, कुछ छोटे पैच इतना हाल के बराबर अगर जगह मिल जाएगी तो आप इसको अर्बन फॉरेस्ट बनाएं। तो अभी मैडम कह रही थी बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी रियल में, एंड दिस इज ऑल जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इट इज प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज इतनी खराब स्थिति हो गई है कि बायोडाइवर्सिटी दिन प्रतिदिन हमारी ये बायोडाइवर्सिटी वेनिश होती जाती है। हम दुनिया की 8% दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी हिंदुस्तान में पाई जाती है। 4 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इस देश में। दिस इज अवर बायोलॉजिकल वेल्थ। एक जीन, एक जर्म प्लाज्म की कीमत लगाई नहीं जा सकती, अगर लगाएंगे तो अरबों खरबों में करोड़ों में होगी। तो दिस इज द बायोलॉजिकल वेल्थ इंडिया हैविंग, बट वी आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री, गरीब देश। इतनी बायोलॉजिकल वेल्थ होने के बाद ये हमारा जीन चुरा के, हमारा जर्म प्लाज्म चुरा के, आपने सुना होगा ना किस्सा, वो टैक्समती राइस बासमती को मिला के और उन्होंने नया टैक्समती, जर्म प्लाज्म हमारा, वाइल्ड जर्म प्लाज्म हमारा, एरोमेटिक जर्म प्लाज्म हमारा, उसको मिला के और अमेरिका में पेटेंट फाइल हो गया। ये जो चोरी हो रही है बायोलॉजिकल वेल्थ की, कि ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इसको अगर बचाना है, इसको हमको बायोडाइवर्सिटी में नॉट ओनली फ्लोरा फौना, इवन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, तो इन सब के लिए वी नीड टू बी केयरफुल और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं बधाई देता हूँ सत्य साई कॉलेज को कि उन्होंने इतना पर्पसफुल आयोजन किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने वेलकम तो इंग्लिश में बोला था, लेकिन सर से थोड़ा मोटिवेट हुई तो मैं सर को बता दूं कि सर मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल हूँ एंड आई कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, though I belong to Department of English, but since it's a national seminar, so we have the participants all over India, and English being the international language, people do relate with the theme. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका benefit मिल पाए, that's why we chose this language as a medium. Otherwise, sir, language is never be an obstacle. और किसी भी सेमिनार का जो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, वो केवल समस्याओं पे डिस्कशन नहीं होता, उसका समाधान भी होता है। तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज कि सर के इतने छोटे और क्रिस्प उद्बोधन में भी हमें एक समाधान समझ में आया, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट एंड मियावाकी टेक्नोलॉजी। तो जो हम शायद अपने इंस्टीट्यूशन पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसके बारे में सर से और नॉलेज लेकर, क्योंकि सर ने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, हम आगे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ जिन लोग हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर फॉर सच अ एक्सीलेंट डिलीवरेशन। We have the release of the abstract right now. Research is the seed of innovation. Right? There's a slight change in the schedule. Our chairman governing body has joined us online. An institution flourishes when it is guided by visionary leadership and unwavering support. Although he could not be physically present with us today, we are immensely fortunate to have the blessings of our respected chairman of the college governing body, Shri Jammu Bhandari ji, who has graciously joined us through the virtual platform.
He is a distinguished industrialist and social leader from Indore. He is an MBA with an illustrious career spanning industry, education, and community service. He has held several prestigious positions, including Executive Committee member of FICCI, President of the Soybean Processors Association of India, SOPA. He has also contributed significantly to educational and social institutions as founder director of Abhay Prashal and Arihant Cooperative Bank, among others. Widely traveled and honored for his outstanding contributions to industry and society, Sir continues to inspire through his visionary leadership, commitment to value-based education, and dedicated service to society. Sir's guidance, encouragement, and commitment to value-based education have always been a source of inspiration for the entire college fraternity. Under his able patronage, our institution continues to strive for excellence in academics, research, character building, and social responsibility. It's now my privilege to invite our respected chairman, Sri Jammu Bhandari ji, to bless this august gathering with his inspiring words. Sir will be joining us. Sir will be joining us soon. हाँ सर बस आप आपका हाँ सर आप स्टार्ट कर दीजिए आप सुनाइए जी जी बिल्कुल अभी करना सर का नहीं मैं बात कर Sir, please unmute yourself.
Sai Ram, sir. Sir. but फिर भी sorry. Sai Ram, sir. अभी आ रहा है? Yes, sir. You're audible now. My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Respected Chief Guest, Professor Rajiv Dikshit Sab, Guest of Honor, Dr. N.P. Shukla Sab, Keynote Addressee, respected Professor Chetan Shukla Solanki Ji, distinguished resource persons, Director of our college, Dr. Pratibha Singh, Principal, Dr. Renu Mishra, Principal, Dr. Anju Bajpai Ji, IQAC Coordinator, Dr. Neena Arora Ji, and our previous Principal, Archana Srivastava Ji. The esteemed team, the delegates, faculty members, researchers, dear students, and invited guests. First and foremost, I welcome the entire participants to this wonderful college and which for sharing the information that Baba himself in his physical form has come and blessed this college, and we are now over 50 years of running this college. It gives me immense pleasure to extend my heartfelt blessings and warm greetings to all of you on the occasion of this national seminar on environmental well-being and climate change towards a sustainable planet. Today, the world stands at a crucial juncture where environmental conservation is no longer a matter of choice, but a shared responsibility. Climate change challenges us to rethink our lifestyles, our priorities, and our commitment to future generations. Institutions of higher education have a vital role in nurturing environmentally conscious citizens who combine knowledge with responsible action. Inspired by the ideals of our Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, our institution believes that the true education is that which transforms character and instills reverence for nature. Baba reminded us that nature is the manifestation of divine and that protecting it is our sacred duty. Sustainable living begins with individual responsibility and blossoms into collective well-being. I appreciate the Internal Quality Assurance Cell for organizing this timely seminar, bringing together eminent academicians, researchers, policymakers, and young scholars to exchange ideas and explore innovative pathways towards environmental sustainability. I am confident that the deliberations will inspire meaningful research, collaborative initiatives, and practical solutions for the challenges before us. I encourage you all to carry the outcome of the seminar beyond academic discussions and translate them into responsible actions that contribute to a greener and healthier society. I extend my sincere appreciation to the organizers, the guests, sponsors, and every individual whose dedicated efforts have made this seminar possible. I have made it possible. My best wishes for the success of this seminar and Jai Sai Ram. प्रतिभा मैम आपको और सब पूरे कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने कॉलेज में ये सेमिनार होल्ड कर रहे हैं विद सच बिग डिग्निटरीज जो अपने समक्ष हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी सुनकर कि मातृभाषा में बोलो वो भी बहुत अच्छा सुझाव है और आई थिंक वी हैड eye-opening
ऑब्जर्वेशंस हमारे को भी सुनने को मिला. एंड फॉरेस्ट कैंपस में अपने फॉरेस्ट लगाने का भी आइडिया अपन कोशिश कर ही रहे हैं कि हर साल प्लांटेशन करें. एंड आई रिक्वेस्ट दैट प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, आप सब मिलकर अपने दीक्षित साहब को, शुक्ला साहब को, सबको अपने कॉलेज का एक अच्छा सा राउंड दिलाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your blessings. Visionary leadership transforms ideas into actions and knowledge into meaningful change. It's my privilege to introduce our esteemed chief guest, Professor Dr. Rajiv Dikshit, Vice Chairman, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, AIGGPA, Bhopal. A distinguished academician, researcher, and administrator with over 30 years of experience in higher education, Professor Dikshit has made significant contributions to teaching, scientific research, academic administration, and policy development. A specialist in physical chemistry, green chemistry, solid state chemistry, heterogeneous catalysis, and nanomaterials, he has collaborated with premier research institutions such as the National Chemical Laboratory, Pune, and the Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, and several leading universities across India. Presently, he is serving as the Vice Chairman of AIGGPA, the premier policy think tank of the Government of Madhya Pradesh. I think I'm taking a lot of time because it was so much. We welcome sir for this address. Sir, please. आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं. मंच पे हमारे अग्रज एनपी शुक्ला सर, प्रतिभा सिंह मैडम, वाजपेयी मैडम, मिश्रा मैडम, श्रीवास्तव मैडम, अभी छाबड़ा मैडम आई है, बीच में मेरा पुराना संपर्क रहा है उनसे. इस महाविद्यालय के आप सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ लुप्त होती प्रजाति कुछ दिख रही है, हमारे जेंट्स लोग भी बीच बीच में. अच्छा, ऐसा नहीं कि ये कन्या महाविद्यालय इसलिए ऐसा है. यहाँ पे आप किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो यही स्थिति है. लगभग सब महिलाएं ही आजकल प्रतिनिधित्व कर रही. मैं भूल जाऊंगा एक चीज, मुझको भी याद है जब शुक्ला सर ने बोला कि हिंदी में भी विज्ञान की बातें की जा सकती है. अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे जो हमारे कलाम साहब हैं, उन्होंने कहा था एक बार अपने एक वक्तव्य में कि यदि मेरी शिक्षा तमिल में नहीं होती, शायद उन्होंने 11th या 12th तक तमिल में अध्ययन किया है, तो मैं शायद इस प्रकार का वैज्ञानिक ना बन पाता. तो प्राइमरी जो एजुकेशन है आपकी, जिसमें कि सारा का सारा क्रिएशन होता है, सारा का सारा आपका नर्चरिंग होती है, वो सारी की सारी चीजें यदि अपनी मातृभाषा में होती हैं तो मुझको लग रहा है कि व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आता है. तो जब से शुक्ला सर ने हिंदी की बात करी तो कुछ कुछ आप लोगों के चेहरे में मुस्कान आई, और अब आप लोग मुस्कान और भी लाइए. पर्यावरण केवल आप लोगों ने नहीं बिगाड़ा है. मैं 2-3 चीजें यहाँ पे करना चाहूंगा. सबसे पहले हमारे आज के जो आपके कीनोट स्पीकर हैं चेतन सोलंकी जी, मैंने उनके 2-3 व्याख्यान सुने हैं इंदौर में, तो उनसे प्रेरणा आप लोग निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे. मैं भी प्रेरणा लेकर के आज जो शर्ट पहन के आया हूँ, आपने सुना होगा वाह वाह है उनका एक वो है, एक स्लोगन है, सुना नहीं आप लोगों ने? वाह है WAH, रिंकल अच्छे होते हैं. कपड़ों में जो रिंकल होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसा वो अभी आपको शायद शेयर भी करेंगे. तो मैं उनसे प्रेरित होकर आज इस प्रकार की शर्ट पहन के आया हूँ. और निश्चित रूप से ये छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, आज शुक्ला सर ने बोला सिटी फॉरेस्ट वाली जो कंसेप्ट है, तो यही परिवर्तन जो है वो मायने रखेंगे आगे चल. 1-2 चीजें मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारी जो भारतीय, एक तो सर ने समाधान बताया प्लांट्स का,
दूसरा समाधान मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो जीवन पद्धति है, हम भारतीय लोगों की, जो हमारी एक वैदिक समय से जो एक सभ्यता हमारी विकसित है, वो भी इसका समाधान है। रसायन शास्त्र का विद्यार्थी होने के बावजूद मैं आपको बता सकता हूं कि जो 12 प्रिंसिपल्स है, ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैडम, अपन लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये जो 12 सिद्धांत है, ये सारे के सारे 12 सिद्धांत हमारी जो नागार्जुन के समय जो केमिस्ट्री की जो बात करते हैं, हम वाघ भट्टी के समय केमिस्ट्री की बात करते हैं, हर प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो सब भारतीय रसायन शास्त्री करते थे। इवन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स भी हम लोग करते थे। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन थे, ये किसकी सहायता से थे? ये जो जिस प्रकार के प्रोडक्ट का हम लोग उपयोग करते थे, जिस प्रकार के जो रॉ मटेरियल का हम लोग प्रयोग करते थे, वो सब के सब बायो प्रोडक्ट्स। बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो भी डिग्रेडेबल था, वो भी एक प्रकार का पर्यावरण के ऊपर कोई चुनौती नहीं प्रस्तुत करता था। तो ये जो पद्धति हम लोगों की थी, ये बहुत बहुत वैज्ञानिक पद्धति थी और बहुत प्रभावी पद्धति थी। अभी यहाँ पे मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था, तो गोहर महल में बाघ प्रिंट के कुछ कारीगर आए हुए थे, पेपर में उसकी न्यूज थी। तो वो आज भी जो बकरी की मैगनी, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, बकरी की मैगनी और ये जो भेड़ है इसका दूध, वो लोग प्रयोग करते हैं साड़ी में, साड़ी को उसमें गलाते हैं और उसमें फिर ये इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी चीजें बहुतायत में हमारे यहाँ होते आई हैं, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, वही समाधान होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था, ये जो कपड़े के संबंध में ही बात आई कि आजकल इस प्रकार के डिटर्जेंट आ रहे हैं। पहले आपको, आपकी विद्यार्थी तो इस चीज को शायद नहीं जानते हो, हमारी जनरेशन के लोग जानते हैं कि उस समय पीले साबुन आते थे कपड़े धोने के, सनलाइट बड़ा प्रसिद्ध था। तो पीले जो साबुन था, इससे जब हम कपड़े धोते थे तो कपड़े साफ होते थे। ऐसा नहीं था कि हमारे जो हम लोगों की जनरेशन के लोग थे वो गंदे कपड़े पहनते रहते, कपड़े साफ होते थे। पर उस प्रकार की जो एक शाइनिंग है, जो आजकल ये लोग एरियल वगैरह जो दूसरे साबुन वाले बोलते हैं ना, एक्टिव, इतने हार्ड केमिकल का उपयोग कर रहे हैं ये लोग कि शहर का नाले इतने गंदे होते हैं। जब भी वो किसी नदी में मिलते हैं, इंदौर में तो हम लोग देख रहे हैं, जो खान नदी शिप्रा में मिलती है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। कारण क्या है उसका? यही जो डिटर्जेंट है, ये बहुत बड़े सोर्स है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे कानून बना रखे हैं हमने, पर ये जो डोमेस्टिक जो जो हमारा जो ड्रेनेज जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत कर रहा है। मुझको लगता है इस दिशा में भी कुछ कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छे, मुझको याद आता है मेरे बचपन के दिन में कि हमारे यहाँ पीली मिट्टी बाथरूम के बगल में रखी रहती थी, टॉयलेट के हाथ, आप लोगों को शायद सहमत होंगे मेरी बात से, पीली मिट्टी से ही हाथ धोते थे। वो लगभग साबुन जैसा था, ये राख से धोते थे। मुझको तो याद है पीली मिट्टी गधे से डलवाई जाती थी हमारे घरों में, और वो एक गधा पीली मिट्टी डल जाता था, उसका उपयोग किया जाता था। और ऐसे ऐसे बहुत सारे समाधान है। मैं अभी पढ़ रहा था इसकी केमिस्ट्री, जो ये जो एक्टिव केमिकल्स हैं, तो ये लोग इस प्रकार के केमिकल्स यूज कर रहे हैं। अगर इनके रेसिडुअल कपड़े में बच जाते हैं धोने के बाद में, तो वो क्या करते हैं, आपकी विजिबल लाइट को यूवी में चेंज कर देते हैं, तो शाइनिंग इसलिए बढ़ती है। स्किन के लिए भी घातक है। आपकी त्वचा में यदि उसके रेसिड्यू बचे हैं इतने इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के, जो कि विजिबल लाइट को यूवी में बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आपके कपड़ों की शाइनिंग तो बहुत अच्छी लगेगी धोने के बाद, किंतु एक तो वो जो पानी गंदा हुआ वो, दूसरा आपकी त्वचा को भी खतरा है उससे। तो ये सब चीजें हमको देखना होगी। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो तो अपने आप में अद्भुत है ही। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है उसका, माता भूमि पितरोहम पृथिव्या, मैं इस धरती माँ का पुत्र हूं और ये मेरी माता है। जब ये वाला भाव होगा तो पर्यावरण संरक्षण तो हमारे खून में ही होगा। और विशेष तौर से यदि हम बात करें आज कन्या महाविद्यालय की, तो स्त्रियां जितनी पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देती हैं वो अद्भुत होता है। हमारे यहाँ वट सावित्री होती है, जो छठ पूजा होती है, ये कितना प्राकृतिक इसमें संदेश छुपे हुए हैं। और एक और बात संयोग है, अभी मैं पढ़ रहा था
तो एक साइलेंट स्प्रिंग, आप देखिएगा ये किताब साइलेंट स्प्रिंग, ये रेशल कार्सन एक लेडी है, उन्होंने लिखी थी 1962 में, और उनके लिखने के बाद डीडीटी पूरे विश्व में बैंड हो गया। डीडीटी के विरुद्ध जो किताब थी वो ये थी साइलेंट स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब कि बसंत, बसंत में पक्षी चहचहाते हैं। किंतु जब डीडीटी का बहुत प्रयोग हुआ इंसेक्टिसाइड के रूप में, तो बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारा जो जो समुद्र तट हैं वो इतने दूषित हुए कि पर्यावरण में बहुत चिंतनीय समस्याएं पैदा हुई। और ये जो किताब थी, ये किताब टाइम मैगजीन में लिखा है कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ 10 पुस्तकों में से एक। तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर मौका लगे तो निश्चित रूप से इसको मंगवाइएगा अमेजॉन से और इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो मैं कुछ बातें सोच के आया था, वो मैंने आपके साथ में शेयर करी, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। ये सेमिनार, ये पूरा का पूरा आपका जो जिन उद्देश्यों को लेकर आप लोग इसको आयोजित कर रहे हैं वो इसमें सफल होगा, और हम लोग सदैव आपके साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपने इतने सरल शब्दों में प्रकृति, पर्यावरण और उससे होने वाले नुकसान और समाधान के बारे में हमें बताया। और मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन स्किन और कपड़े जरूर समझ में आते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से कि हमें किस तरीके से हमारी त्वचा का भी ध्यान रखने में ध्यान रखना है और कपड़ों का भी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलेवेंट कैरिंग अवे मैसेज by sir that has GS given. Thank you very much, sir, once again. It's a privilege that Dr. Charity Kaur is here with us. She has been here with us for quite a long time, heading Department of Chemistry and many a times principal in charge and in fact principal as well. She is presently at Career College for Women, principal Career College. Career College for Women. So it's important Career College for Women in the So please excuse me for that. She is principal of Career College. May I request Dr. Meena Rola to please welcome her with us at home. वैसे मानव जिंदगी में बट हम परंपरा जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अतिथि देवो भव, टुडे शी इज आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच नीना मैम। Research is a seed of innovation and publication is a bridge that connects knowledge with society. One of the most significant moments of every academic gathering is the dissemination of scholarly work. It is through research and publication that ideas transcend classrooms and laboratories to inspire society and influence future generations. Today, we are delighted to witness the release of the National Seminar Abstract Book, which reflects the intellectual contributions of scholars and researchers from diverse disciplines across the country. We are equally proud to release the latest issue of our multidisciplinary peer-reviewed research journal, Hybro, a testament to the institution's unwavering commitment in promoting quality research and academic excellence since 2014. May I now request the members of the editorial board and publication committee also to please join us on the dais for the readings. I request our dignitaries to please release the abstract book and the journal as well.
खाली हमने एक्सेप्ट करेंगे सरकारी आपने ये सवाल जल्दी किया वेरी गुड। Thank you so much, sir. And we have kept your signatures as the autograph so that you are actually witnessing the research work being published. Our keynote speaker today, Professor Ketan Singh Solanki, could not join us because he is on his yatra from Mumbai to Vapi, and there's so much of heavy rainfall there. So probably he'll be joining us in the post-learn section or even in the technical session 1. We are heading towards the closure of the inaugural ceremony, but I can say that the beginning of a new journey, that is because the entire day is there with us for various deliberations. Gratitude is greater than being great. Even the bees who sip nectar from flowers hum their thanks when they leave. I now invite Dr. Charles Saxena, Associate Professor, Department of Mathematics, to present formal vote of thanks. Thank you, madam. The earth is weeping, the oceans are in pain. The changing season wants us again and again. Let's wake up today before the sky turns gray and build a green planet where a sustainable future can stay. Respected chief guest of honor, distinguished keynote speaker who will join us soon, our honorable chairman sir, director madam, principal law college madam, our ex-principal dean of science faculty and our co-patron madam, I2AC coordinator and co-coordinator, learned delegates, organizing committee members and I2AC cell, teaching and non-teaching staff of our college, and our dear students. A very good afternoon to all of you. It is an absolute honor and privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion
the inaugural function of our national seminar on environmental well-being and climate action toward the sustainable planet. Firstly, on the behalf of entire institution and the organizing committee, I extend our deepest gratitude to our guest of honor, Dr. N.P. Shukla sir, former chairman, Commission of Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi. Thank you, sir, for sparing your valuable time and blessing us with your presence. Your enlightening words and profound thoughts have truly set a magnificent benchmark for this seminar. I extend a sincere vote of thanks to our chief guest, Professor Rajiv Dixit sir, Vice Chairman, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Making, Bhopal, MP. Thank you, sir, for sharing your precious time, your profound wisdom, and your invaluable insights with us today. I express our sincere thanks to our keynote speaker, Professor Chetan Singh Solanki, sir, former professor IIT Mumbai, who will be joining us soon. We express our profound gratitude to the chairman, college governing body, Shri Jambu Bhandari ji, for their immense support. We are thankful to our Director Madam Dr. Pratibha Singh, Principal Madam Dr. Renu Mishra, Principal Law College Dr. Anju Bajpayee, our ex-principal Faculty of Science and co-patron Dr. Archana Srivastav for being the backbone of this event. We highly appreciate our sponsors, MP Council of Science and Technology Bhopal, for their invaluable contribution and unwavering faith in us. Words are not enough to thank the honorable delegates whose esteemed presence in both online and offline mode has elevated this seminar to unparalleled heights. A national seminar of this caliber requires a strong foundation of quality, and our IQAC coordinator Dr. Neena Arora, co-coordinator Dr. Smita Nair, organizing committee and the complete IQAC team has been the visionary architect behind its success. Thank you, everyone. We extend our deepest gratitude to the IT section for managing the complex digital infrastructure with absolute precision and calmness. Thank you, Girdesh Madam and Ekta Madam, for turning potential digital glitches into a smooth, flawless experience for all of our online and offline achievers. An event of this national magnitude is impossible without a strong foundation, and our college staff has been the rock behind pillar behind the seminar. We extend our deepest gratitude to our dedicated teaching and non-teaching staff, the unsung hero who converted a vision into a grand reality. Thank you to our young green minds, our students, for your disciplined presence. Your commitment towards proves that the future of our planet is in responsible hands. Our heartfelt thanks goes to the unseen architect of today's success, those whose quiet and behind the scene efforts kept this event running flawlessly. I would like to conclude my words by these lines. Our words must turn to action, our promises to deeds, to heal this wounded planet and plant tomorrow's seeds. For a green and lasting future, let us stand as one today and leave a living, breathing world before it fades away. Thank you, one and all, and have a highly productive seminar ahead. Sairam. Thank you, Chalu. And thank you very much, all of you. We'll meet here again after a 5 minutes tea break for the first technical session.
नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ।
Om Shri Sai Ram. Esteemed dignitaries, respected speakers, delegates, faculty members, and dear students, I, Dr. Shikha Manloi, Associate Professor Microbiology, on behalf of Sri Sathya Sai College for Women and IQSE, warmly welcome you all to the technical session 1 of our seminar on environmental well-being and climate action towards a sustainable planet. Our speaker of the technical session 1, Dr. N.P. Shukla, is with us. I request Principal Dr. Renu Mishra to please accompany Sir on the dais. In the present scenario, climate change demands action, and action demands new thinking. As we navigate the challenges of climate change, pollution, and resource depletion, it is clear that science, innovation, and sustainable practices must lead the way. Technical sessions like this provide a platform to discuss research, share solutions, and build collaborations that can translate ideas into action for a healthier planet. This session is focused on theme from waste to wealth, economic solutions for environmental health. In this session, we will explore how cutting-edge research in materials, waste utilization, and low-carbon technologies is shaping the future of infrastructure and environmental protection. To steer the discussions of Technical Session 1, we are privileged to have speaker for this session, Dr. N.P. Shukla, with us. Before inviting Sir for his discourse, may I have the privilege of introducing him to all of you. Dr. Shukla holds a PhD and an MBA. He has over 36 years of professional experience, including 9 years exclusively in environmental governance. He has served as the former chairman of the Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, Government of India, New Delhi, and as former chairman of Madhya Pradesh Pollution Control Board. His expertise covers pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, biodiversity, forest conservation, and air quality regulation in the NCR region. Dear delegates, please join me in welcoming Dr. N.P. Shukla to deliver the first results of this session on circular economy and environmental sustainability. So please. Yes, sir. Thank you. Yes. In fact, I have seen that in corridor there was a poster, waste to wealth. Very good poster. I have seen some of the delegate have उन्होंने लगाया होगा. And this waste to wealth, that circular economy. What is circular economy? In fact, that this culture, you know that
ये हमारे देश में कल्चर आ गया है, यूज एंड थ्रो. इट इज अगेंस्ट यूज एंड थ्रो. तो दिस सर्कुलर इकोनॉमी, इसको जो डिफाइन किया है, व्हाट इज दिस सर्कुलर इकोनॉमी? इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम eliminating waste and its continual use of resources through reuse, repair, refurbishment, manufacture, recycling. ये विंडो छोटी कर सकते हैं सिर्फ इतनी, नहीं होगी. इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर देंगे, स्लाइड लेफ्ट में कर. इसकी जरूरत नहीं है. So this circular economy, that maximization of resource utilization, and you know that आजकल use and throw culture जो है, इससे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है और उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस जनरेटिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्ट एंड दिस वेस्ट. इनफैक्ट अभी वेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो गई है. व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट इज अ डिस्प्लेस्ड रिसोर्स. वेस्ट इज अ डिस्प्लेस्ड रिसोर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का जो वेस्ट है वो दूसरी कंपनी का रॉ मटेरियल बन सकता है, राइट? सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. और जो इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है एंड इतने प्रॉब्लम उससे डेवलप हो रहे हैं, तो we must think of circular economy. आपने सुना होगा 5R, reuse, refuse, ये सब अभी बहुत सारे R हो गए हैं. 9, 10, 11 R हो गए हैं. Reduce, reuse, refurbish, recycle. तो this is all required. एक आपके घर में कभी एक छोटा सा फंक्शन होता है और ढेर सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है, इतना पैकिंग मटेरियल. तो दिस कल्चर नीड्स टू बी चेंज्ड. एंड सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि डिजाइन आउट वेस्ट एंड पोल्यूशन. आप इस तरह डिजाइन करें कि उससे पोल्यूशन ना हो. एंड जैसा मैंने कहा, वेस्ट इज अ डिस्प्लेस्ड रिसोर्स. वो गलत जगह पे है तो वहां पर वेस्ट है. एक जमाना था, यू माइट बी नोइंग दैट दिस पावर प्लांट जनरेट्स लॉट ऑफ फ्लाई एश. आपने नाम सुना होगा फ्लाई एश. तो दिस पावर प्लांट्स में एक एक दिन में 15 से 20 हजार टन कोयला जलता है और उस कोयले में करीब करीब 40% फ्लाई एश होती है. आप ये समझ लीजिए कि इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम. एंड पहले क्या होता था, अभी भी होता है, हजारों हेक्टेयर जमीन पावर प्लांट के लिए वो एश बर्न के नाम पे रख दी जाती थी. वो एश बर्न कहलाते थे, एश डाइट कहलाते थे, जहां पर वो स्टोर होता था फ्लाई एश. तो वो फ्लाई एश, इतनी जमीन चाहिए. अगर वो पावर प्लांट लगाना है तो आपको कितने 100 हेक्टेयर जमीन चाहिए वो फ्लाई एश का बर्न बनाने, क्योंकि उसको क्या करें, इतना इतना जनरेट होता है. मैंने जैसा आपको बताया ना, 15 से 20 हजार टन पर डे कोयले का कंजप्शन एक पावर प्लांट में. तो अब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ी. अभी वो फ्लाई एश सारा का सारा सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है और जा रहा है.
आपके घर में जो सीमेंट है उसमें 30% फ्लाई ऐश है। So this became raw material for cement industry. It is a waste of powerhouse, power plant, but it is a raw material for cement industry. And you know that वो जो फ्लाई ऐश है जिसकी कोई कीमत नहीं थी वो सीमेंट की कीमत में बिक रहा है. That cement is having at least 30% of fly ash. Similarly, वो iron slag ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ. And I have seen, I was chairman of Madhya Pradesh Pollution Control Board. तो हमने ये प्रॉब्लम देखी, महसूस करी. इसका आज ब्रिक्स बन रहे हैं, इसकी टाइल्स बन रही हैं, रोड में इस्तेमाल हो रहा है. This is all what happens. This is now we need to stop this generating waste, so-called waste. तो हमें कल्चर में हमारे चेंज करना पड़ेगा. And this is the difference. What I was telling you, that use and throw culture. Take, make, dispose. Abhi reduce, reuse, recycle. This concept needs to be implemented in our daily life. हम क्या कर सकते हैं? मैंने देखा बहुत से घरों में बच्चे तो वेस्ट, कोई वेस्ट होता है तो उसका एक अच्छा हैंडीक्राफ्ट, कोई अच्छा आर्टिकल बना देते हैं, कुछ अच्छा वो बना देते हैं. तो ऐसा कुछ that kind of attitude needs to be inculcated in our children. कि उसका वेस्ट का क्या इस्तेमाल करें. आप देखें, मुझे याद आता है पहले हमारे घरों में वो जो नवजात शिशु होता था तो भाई बहनों के कपड़े उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते थे. बहुत दिनों तक नए कपड़े नहीं पहनाते थे नवजात शिशु को. एंड देयर माइट बी रीजन, स्वास्थ्य, कल्चर, हेल्थ, हाइजीन, व्हाटएवर इट इज. बच्चों, वो छोटे बच्चे को अपने बड़े भाई के या कजन्स के कपड़े मांग के पहनाए जाते थे. पुराने कपड़े होते थे घरों में, वो बिछौना बना दिया जाता था उन पुराने कपड़ों से. आज हम इतने एडवांस होते जा रहे हैं, ये हम अपनी परंपरा भूल रहे हैं. दिस इज इनफैक्ट आवर इंडियन कल्चर. ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये हमारे कल्चर का पार्ट है, अपने इंडियन कल्चर का पार्ट है ये सर्कुलर इकोनॉमी. एंड इसको हमें भूलना नहीं है, इसको फिर से लाने की आवश्यकता है. तो दिस टेक, मेक, डिस्पोज को बदल के रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स एफिशिएंसी. अब हम देखते हैं कि रिसोर्स कितना एफिशिएंट है, कितनी सर्विस दे सकता है, कितना लॉन्ग उसका हम उपयोग कर सकते हैं. So that resource efficiency, we must think of resource efficiency. And पहले सिंपली वेस्ट जनरेशन की बात होती थी, अभी वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात होती है कि हाउ टू मिनिमाइज द वेस्ट. तो ये कॉमन डिफरेंस है, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइफ और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ecosystem regeneration. This is all common kind of things you understand very well. तो environment की benefit के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा. भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक बड़ा मिशन लागू किया है, लाइफ मिशन. मिशन लाइफ ये जो कॉप में इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको वो किया, डिस्क्लोज किया कि वी मस्ट चेंज अवर लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल शुड बी सच दैट शुड नॉट इफेक्ट नेगेटिवली योर एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है
तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें हमारे एड्रेस हो जाएंगे। मैं अभी इनॉग्रल सेशन में कह रहा था कि ये ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, इससे बचना है तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। मिशन लाइफ यही कहती है कि आपका आपका जो डे टू डे की लाइफ है उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भाव होना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। एंड आपने देखा होगा ये पहाड़, कई शहरों में आपको कचरों के पहाड़ मिल जाएंगे। कई शहरों में, जो लोगों ने दिल्ली विजिट किया होगा, दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ों के ढेर, तो कचरे का, लीगेसी वेस्ट पहाड़ बन गए। और कितना एरिया वो वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए, कितना एरिया, कितनी लैंड की कितनी कीमत है। बट वो आज वो पहाड़ बन जाएगा। हमारे यहाँ पर भी था ये, यहाँ पर आपने देखा होगा ना, ये पीपुल्स के रास्ते में, हाँ वो खंती थी, क्या भानपुरा खंती। अब देखिए वो भानपुरा खंती पूरा वेस्ट वो खत्म हो गया है और सुंदर उन्होंने उसको ग्रीन वहां उसको कैपिंग कर दिया है और कैपिंग करके उसके ऊपर घास लगा दी है। सो दिस इज ऑल रिक्वायर्ड। पहले क्या होता था, शहर में एंट्री करते ही आपको वो कचरों के पहाड़ दिखते थे। तो कितना खराब इंप्रेशन आता होगा। कोई विदेश से विजिट करता होगा, वो इंडिया के बारे में क्या सोचता होगा। तो वो जो लीगेसी वेस्ट, अभी आपने देखा है, मैं सीएक्यू में था पिछले साल तक, वो जितने बड़े बड़े पहाड़ थे उनको टारगेट है दिसंबर में वो जीरो हो जाएंगे। इस दिसंबर 2026 में वो सब जो कचरे के पहाड़ दिल्ली में देखे होंगे आपने, वो सब जीरो हो जाएंगे। सो लाइक दैट वी नीड टू वर्क इन मिशन मोड। देयर हैज टू बी सम टारगेट, एंड टारगेट को हमको अचीव करना है। तो लैंडफिल, नो लैंडफिल, आजकल जीरो वेस्ट पॉलिसी है। अब देखिए आपका घर का कचरा है या जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसमें अराउंड 50% इज इनर्ट वेस्ट। आजकल जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। जीरो वेस्ट कंसेप्ट मीन्स अगर ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसमें अराउंड 50% ये है इनर्ट वेस्ट है। ये इनर्ट वेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा सकता है। अराउंड 8% वेस्ट इज अ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक का भी समाधान है, मैं अभी आपको बताऊंगा। 8% प्लास्टिक वेस्ट है एंड अराउंड 40% इज ऑर्गेनिक वेस्ट। एंड दिस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर दें आप, या एनर्जी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जो मेटल्स है ये रिसाइकल हो सकते हैं। सो लाइक दैट नथिंग इज वेस्ट। Every component of municipal solid waste can be utilized. This is circular economy. And how long you can utilize that resource? खासियत इस बात पे है कि हमारे यहाँ कपड़ा, बड़े भाई के बच्चे कपड़े छोटे भाई ने पहने, छोटे भाई के कपड़े फिर दूसरे कजन्स ने पहने, फिर कजन्स के बाद में उसका उपयोग ये हो गया कि उसको बिछौना बना लिया, उसके वो आपके बैग थैले बना लिए। तो लाइक दैट दिस वाज द कल्चर ऑफ दिस कंट्री। अभी सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट पश्चिम से हमको दिया जा रहा है। इनफैक्ट हम तो उसको पालन पोषण करने वाले लोग हैं उस कल्चर को, बट हमको आप कहना पड़ रहा है दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। This concept was given by Western scientific personals. But हमको इस बारे में सोचना है
कि अगर हमको अपना पर्यावरण बचाना है और ये करना है तो वी मस्ट थिंक ऑफ दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट, एंड दिस इज ऑल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि देयर आर द बेनिफिट्स एंड वी मस्ट थिंक ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अगर हमको जिंदा रहना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। How it supports sustainability, climate action, lower carbon emission, ये एक बहुत बड़ा ये है, गेन है। अगर हम कार्बन एमिशन बचा पाए, आज दिल्ली में कोई अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होने हैं, इंटरनेशनल इवेंट, अभी G20 हुआ था, तो G20 में सारी दुनिया के लोग आए, पर उसका शेड्यूल इस तरह फिट किया गया कि वो जो पीरियड है दिल्ली में 15 सितंबर से और 30 नवंबर तक, उसी के बीच में दिवाली होती है, उसी के बीच में वो कटाई होती है, उसी के बीच में वो पराली जलती है और उस बीच में ठंड होती है। तो हाउ टू अवॉइड दिस? तो सरकार को ये सोचना पड़ा कि अगर दिल्ली में ऑर्गेनाइज करना है तो वी हैव टू स्किप दिस पीरियड। एट दैट पीरियड तो इतना प्रॉब्लम रहता है दिल्ली में, इतना AQI हाई, अगर उसको कहो कि AQI 300 हो गया, 400 हो गया, तो वो फॉरेन का आदमी तो बेहोश हो जाएगा। हम लोग तो बड़े मजबूत हो गए हैं, इम्यून हो गए, रेजिस्टेंस हो गया है हमने, हाँ। बट तो AQI लेवल इज सो हाई, एंड AQI लेवल इज हाई, उसकी एक अलग रीजन है। There is a geographical and climatic condition of NCR is different from other places. NCR एक कटोरे जैसा है, वहां डिपोजिशन होता है, डिस्पर्सन नहीं होता। अपने यहाँ भी उधर से ज्यादा फ्लाइट ये जलती है पराली। अपने यहाँ भी आप देख लें ना, खेतों में वो गेहूं का जब कटाई होती है खूब जलता है, बट अपने यहाँ डिस्पर्सन हो जाता है बिकॉज जो ज्योग्राफी है हमारी, इट इज सच दैट वो रुकता नहीं है। वहां पर क्या है, कटोरे जैसे में जो डिपॉजिट हो जाएगा, डिस्पर्सन नहीं होता। ठंड में क्या होता है, हवा भी बहुत स्लो होती है, तो विंड वेलोसिटी नहीं है, तो वो नहीं बनता, जाता नहीं है। सो दिस इज द रीजन, देयर आर अ ज्योग्राफी एंड देयर इज अ क्लाइमेटिक कंडीशन। ड्यूरिंग दैट पीरियड क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। पाकिस्तान में पराली जलती है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली में आता है, वो दिल्ली से नीचे बिहार तक, वो एयर शेड कहते हैं। पाकिस्तान से चालू होके, पाकिस्तान पंजाब से चालू होके और वो बिहार तक, आप देखिए बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां का AQI बढ़ जाता है। ये हवा जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ये देश के अंदर ये हिंदुस्तानी हवा है, ये पाकिस्तान की हवा है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। तो दिस इज, तो अगर ऐसे इशू में हमको सारी दुनिया को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमको अगर पृथ्वी बचानी है, इंसानियत बचानी है, तो मिलके काम करना। हम ये नहीं सोचे कि हमारे घर में साफ रहना चाहिए, बाजू के घर में कचरा रहे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा वो सिद्धांत है, सब सुखी हों। ये इंडियन कल्चर, ये कोई दुनिया में और कोई नहीं बोलता, ये इंडियन कल्चर बोलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों। ये नहीं कहते कि दूसरा ऐसा हो जाए। ये खासियत है हिंदुस्तानी कल्चर की, ये हमारी संस्कृति की खासियत है, जो इतनी पर्यावरण प्रिय हमारी वो है। तो ये आप देखिए चैलेंजेस क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको बताया
कि क्लाइमेट चेंज की ऐसी विभीषिका है। आप देखिए, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। अगर पहले 1 एकड़ में 20 टन अनाज होता था, तो आज वो घट के 15, 12 और 10 टन हो गया है। तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बायोडाइवर्सिटी, आपसे बात कर रहा था, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम। तो इसको रोकना हम सबकी जवाबदारी है। तो वी मस्ट थिंक ऑन द लाइन ऑफ हाउ टू हैव सस्टेनेबिलिटी टू एनवायरनमेंट। तो ये क्लाइमेट तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए। देन रिसोर्स डिप्लीशन, मेरा एक दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने ये प्रूफ किया है कि जो हम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं पृथ्वी के जो ये संसाधन हैं, जिस गति से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले 50 साल में आपको 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। एक पृथ्वी आपके लिए काफी नहीं रहेगी। जिस तेजी से आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हो और रिसोर्स डिप्लीशन की समस्या आ रही है, तो यू विल रिक्वायर 4 अर्थ। राजीव जी ने इनॉग्रल में कहा था कि हमारा वो पृथ्वी हमारी माँ है। अगर जिस दिन हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा कि पृथ्वी हमारी माँ है, तो हम अपने आप पर्यावरण को बचाएंगे, हम अपने आप पृथ्वी को बताएंगे, क्योंकि हम अपनी माँ को परेशान नहीं देखना चाहेंगे। सो दिस रिसोर्स डिप्लीशन। देन प्लास्टिक पोल्यूशन। मैं आपको एक प्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होगा व्हाट इज व्हाई देयर इज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, व्हाई नॉट ऑन कंप्लीट प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के इतने उपयोग हैं कि प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर और प्लेन भी प्लास्टिक से बन रहा है। तो ऑन सम प्लेसेस यू आर कंपेल्ड टू गो फॉर दैट। पर सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हम मल्टीपल यूज बना सकते हैं। और आप देखिए, कोई भी नदी, तालाब, समुद्र, उसके किनारे ढेर लगा है, सारा पॉलीथीन पड़ा हुआ है, इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इतना वो आपका वो पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। आपने खाया फेंक, उसका खामियाजा समुद्र को भुगतना पड़ रहा है, समुद्र के जीव जंतुओं को भुगतना पड़ रहा है आपकी गलतियों की सजा। प्लास्टिक जो है, तो हाउ टू यूज दिस। अगर आप सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, वो आपको सिंगल यूज प्लास्टिक देता है, पॉलीथीन दे देता है। उसमें सब्जी में जितनी तरह की सब्जी है अलग अलग पॉलीथीन में, यू आर वेरी कंफर्टेबल इफ ही इज गिविंग इन सेपरेट पॉलीथीन बैग एंड यू प्रेफर दिस। So there should not be a mixing, it should be separate. Okay. तो भाई आप ये भी तो कर सकते हो कि अगर वो जो पॉलीथीन है आप बाजार में डालो, तो भाई हमारे को तेरा पॉलीथीन नहीं चाहिए, तू इस पॉलीथीन में डाल दे। तो वो जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, यू कैन मेक इट मल्टीपल यूज पॉलीथीन और प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, अगर बाजार से कोई अच्छा प्लास्टिक का थैला मिल गया आपको, तो उस प्लास्टिक के थैलों का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक में बहुत सारे फायदे भी हैं। मॉइस्चर से बचाना है, पानी से बचाना है, तो प्लास्टिक बहुत अच्छा कवर है। मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक, अभी मैं बात कर रहा था कि कार्बन एमिशन कैसे, हाउ टू कंट्रोल दिस कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करना है। प्लास्टिक is a very good fuel if it is burnt at 800 degree and above. ये बहुत अच्छा ईंधन है। अगर ये 800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जलाया जाए, अगर ये
ये बहुत बड़ा पॉइजन है अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे जलाएं, 800 डिग्री के नीचे जलाएं, तो ये बहुत बड़ा पॉइजन है। दुनिया की जितनी घातक बीमारियां हैं, मैलिग्नेंसी से लेके एवरीथिंग, it is because of dioxin and furan. And this dioxin and furan gas इतनी घातक गैस होती है, और ये जितना क्लोरीनेटेड प्लास्टिक है, इसको जलाने से डायऑक्सिन फ्यूरान इस्तेमाल होता है। मैंने कई घरों में ऐसा देखा कि वो अपने घर में जला रहे हैं, वो ताप रहे हैं, तो प्लास्टिक वो उसमें तसले में ताप रहे हैं, आग ताप रहे हैं, प्लास्टिक जला के वो सीधा इनहेल कर रहे हैं एमिशन कि डायऑक्सिन फ्यूरान गैस। आप साइंटिफिक लोग हैं, आप देखिए डायऑक्सिन फ्यूरान गैस से दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारी क्रॉस करने वाली, सबसे ज्यादा सबसे जो घातक बीमारियां हैं वो डायऑक्सिन और फ्यूरान से होती है। तो मैंने आपको बताया कि 800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इट इज अ वेरी गुड फ्यूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोयले से 3 गुना ज्यादा होती है लगभग। मतलब अगर 1 किलो प्लास्टिक आपने जलाया पावर प्लांट में या सीमेंट इंडस्ट्री में, ये जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री तक जाता है। तो वहां पर क्या होता है, अभी कंसेप्ट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था, तो मैंने सारे सीमेंट वालों को कंपलसरी किया था कि ये जितना प्लास्टिक शहरों का है उसको आपको जलाना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री में। तो ये मैंने अपने टाइम पे सारी सीमेंट इंडस्ट्री में ये कंपलसरी करवाया था। अगर 1 किलो प्लास्टिक सीमेंट इंडस्ट्री में जलता है तो 3 किलो कोयला बचता है। तो आप सोचिए 3 किलो कोयले का जो एमिशन है, यू कैन चेक विथ दिस प्लास्टिक। अगर 1 किलो प्लास्टिक जलाया तो 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलेगी कोयले से। तो कोयले को यू कैन रिप्लेस। सो दिस इज द सिचुएशन। तो प्लास्टिक का अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। प्लास्टिक का अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है और उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो प्लास्टिक का बेस्ट यूज ये है कि उसको अभी सीमेंट इंडस्ट्री में, अभी इंदौर का सारा जितना प्लास्टिक है वो सारा का सारा नीमच में अल्ट्राटेक की फैक्ट्री है। अभी 1 हफ्ते पहले मैं वहां पर था, उन्होंने मुझे बताया कि सारा इंदौर का जितना प्लास्टिक है सब हमको मिलता है। मंदसौर, नीमच, यहाँ का पूरा प्लास्टिक मिलता है। उतना कोयला बच रहा है, उतना कार्बन एमिशन बच रहा है। सो लाइक दैट you require to think of how to protect our environment and what are the causes for the degradation of environment. तो इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। आप मुझे बता देना जब बंद करना है, क्योंकि मैं अगर ये स्लाइड की भरोसे रहूंगा तो बहुत बोलता चला जाऊंगा। तो आप बोल देना, तो आई विल क्लोज। हो गया क्या, टाइम हो गया क्या? सो दिस इज द कंडीशन। मैं तो बोलता चला जाऊंगा तो 2-3 घंटे बोल रहा हूँ। दिस इज ऑल यू नो दैट कि, तो मैंने कहा ना, प्लास्टिक वेस्ट को भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है और ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए हमको काम करने की जरूरत है। ई वेस्ट है ना, हिंदुस्तान में सबसे पहले 2011 में इन्वेंटराइजेशन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एंटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया। आई वाज चेयरमैन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट दैट टाइम इन मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमने किया। आज आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप एक गैजेट खरीद के लाते हैं, आप कोई टीवी खरीद के ले आए, आप वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आए, 2 साल बाद पता चल रहा है कि उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मॉडल चेंज हो गया है। ये बदमाशी है, ये बिजनेस है कि उन्होंने कहा मॉडल चेंज हो गया तो वो उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं है।
कि उसको रिप्लेस कर दे और फिर उससे वो हमारी वॉशिंग मशीन चलने लगे, या हमारा टीवी, अब साहब इसके ये जो मॉडल है इसके कंपोनेंट नहीं, तो वो इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सारा। ये मॉडल चेंज कर देते एक साल में, 2 साल में, और उसकी वजह से आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, और आपको ना चाह के भी उसको एक छोटे स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से उसको वेस्ट में डालना पड़ रहा है। सो दिस इज द कंडीशन। ये जो मार्केट, ये जो बिजनेस है, आपको मजबूर करना है कि आप उसका नया प्रोडक्ट खरीदो, नया मॉडल खरीदो। अब ये जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस मोबाइल का कोई वो नहीं है, हमारे पास इसका कोई स्पेयर नहीं है, अब हम इसकी हमारे पास बैटरी भी नहीं है, तो लिहाजा इसको फेंक दीजिए, दूसरा खरीदिए। तो ये जो बिजनेस हाउसेस हैं, आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डीलर आपको जो कंपोनेंट, जो गैजेट बेच रहा है, उसके पास उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो टीवी आया था तो हमने किसको बेचा, और उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसको वापस लेना पड़ेगा। और रिसाइकिल, जो मैंने कहा, अभी हमारे ये मोबाइल में आपको वो गोल्ड और प्लेटिनम और सभी कुछ वो मिल जाएगा, तो उसकी रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। तो इन रिसोर्सेस का अभी जो बात हो रही है, ये मिनरल्स के ऊपर, प्रीसियस मिनरल, मेटल्स, ये सब मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है नया लगाने की। सो वी मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। अभी ये लेक्चर बहुत लंबा है, फिर कभी मौका मिला तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने वेस्ट को वेल्थ में बदलने के साथ साथ पर्यावरण को हम किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे ख्याल से हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, वो सर्कुलर इकोनॉमी की एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस अपने घर से शुरू कर सकते हैं कि आपके घर से निकलने वाला जो भी पेपर वेस्ट है, आप उसको रद्दी वाले को बेच के अपना पॉकेट मनी निकालें। Thank you so much, sir, for bringing deep insight to your discussions on sustainability. So, you have told us a healthy environment is the foundation of a strong economy. The circular economy bridges the two by turning environmental challenges into economic opportunities through innovation, responsible consumption, and policy support. Sustainable development is possible only when our economy works with nature, not against it. Once again, thank you so much, sir. Our next speaker for technical session 1 has joined us. I request Dr. Archana Srivastava, Madam, co-patron and ex-principal, Dean Faculty of Science, to please accompany Madam on the dais. Our speaker is Dr. Paramita Das, an accomplished researcher whose academic journey spans across the globe and recipient of many research awards. Dr. Paramita Das is Associate Professor and Head, Department of Chemical Engineering at the Indian Institute of Science, Education and Research, ISER, Bhopal. I request Dr. Sunita Yadav, Organizing Secretary, to please welcome Dr. Paramita Madam with a sapling.
As a part of our commitment to a greener tomorrow, we welcome you not with a bouquet that fades, but with a sapling that grows. I request Dr. Archana Srivastava, Madam, to please present a memento to the Madam. Thank you so much, Madam. Before inviting Madam for her valuable insights, I would like to read her bio sketch. Dr. Das is Associate Professor and Head Department of Chemical Engineering at IISER Bhopal, an expert in materials engineering and sustainable nanotechnology. Dr. Das has published extensively and is recognized as a Young Woman Researcher Awardee and ENIAS and INAE member, that is Indian National Young Academy of Science and Indian National Academy of Engineering, respectively. She holds an MTech from IIT Delhi in Polymer Science and Technology. She received her PhD with a magna cum laude, that means great praise or honor, award from RWTH Aachen University, Germany, and completed postdoctoral research at Denmark Technical University and Nanyang Technological University, Singapore. Her research focuses on materials engineering and sustainable nanotechnology for developing functional nanocomposite materials toward environmental sustainability. She has published 35 peer-reviewed articles, 1 book, and 11 book chapters with an H index of 18. Dr. Das is also a DAAD, that is German Academy Exchange Service Program Scholar, India's member at INSA 2024, senior member of INAE 2026, and recipient of the Young Woman Researcher Award 2024. She currently serves as head of the Institute Counseling Cell and associate editor for Frontiers in Soft Matter at IISER. Dear participants, please join me in welcoming Dr. Paramita Das to deliver the second address of this session, Cellulose Nanocrystals, Engineering Nature-Inspired Nanocomposites for Flexible Food Packaging. Madam. Okay, so good afternoon, everyone. My sincere regards to the Honorable Director, Principal Madam of Sri Sathya Sai College for Women, all the dignitaries, organizing committee of this national seminar, especially Meena Madam, and for sending me this invitation. I also know many other faculty here, and also all the audiences and other faculty colleagues. Today I will talk about cellulose nanocrystals, engineering nature-inspired nanocomposites for flexible food packaging.
So before I proceed, I'll just give a very brief overview about our institute. It's not. Okay, so this is an overview of Bhopal, where I'm working. And this is our campus, and you can see our hostels, and this is our admin building and our library. We are very close. We are at Bhauni, and very close to the airport. So I invite all of you, whenever you get chance, please do visit us at Bhopal. In the Department of Chemical Engineering at Bhopal, we work in several thrust areas. For example, AI in chemical engineering, energy conversion and storage, environment and sustainability, materials engineering, multiple transport, reactive engineering, and catalytic. So today, based on the national seminar theme, I will talk about my topic is on environment and sustainability. So we work, our research group work in a very interdisciplinary area. We work in the areas of materials engineering and sustainable technology. Our research group is functional and composites laboratory, and we develop novel functional materials and apply nanotechnology in a way that minimizes environmental impact and maximizes resource efficiency. So today's Dr. Dikshit, Dr. Shukla already told you about the problems of the environment, like the pollution, the burden, especially I will talk about the plastic burden. And the previous talk, Dr. Shukla already emphasizes on the problem of plastic burden. So in my talk, I will say how we can mitigate that. So also we focus on the design of nanocomposites using inorganic organic materials, and also incorporate functionality so that we can use those materials for more than one applications. So my research group, we are focusing on sustainable development goal, especially SDG 2, zero hunger, SDG 6, clean water and sanitation, SDG 12, responsible consumption and production, and SDG 14, that is life below water. So as you all know that, plastic, without plastic, we cannot basically live our life. Because if we think our daily life, we start our day with something made of plastic. For example, you take the example of your toothbrush or your toothpaste. It's made of plastic. The bristles are made of nylon. And if you take the toothpaste, the tube, everything, your slipper, the clothes you are wearing, the spectacles, everything, whatever we use nowadays, although we are trying to replace the water bottle from plastic to glass nowadays or to steel, but still our life without plastic is very difficult. Because we are not only using plastic here. If you go to hospitals, all the catheter, all the tubings, all the blood bottles, nowadays blood bottle is not made of glass. You see the pouch. So everything is plastic, but as a responsible citizen, we have to dispose this in a proper way, or we have to find solutions or alternatives to this petrochemical-based plastics. So yeah, here you can see that the world produces more than 400 million tons of plastic every year, and major user or major industry of these plastics is the packaging industry. So, and those are basically the single-use plastic, which Dr. Shukla just told. So, what is the scenario? The outcome is, you can see these dumping yards. The plastic goes into the water, and then the water and the animal and the water fishes, they consider them as their food, and they eat that. And then like people who eat fishes, that in an indirect way it goes to the human body. So the pollution which is caused by the plastic is called white pollution. And there is a global concern due to plastic burden leading to significant pollution of both marine life as well as terrestrial habitat, and that is impacting the health and the environment both. And then nowadays you all know about this term called microplastic or nanoplastics. That means these plastics, when they degrade into small pieces less than 2 millimeter, it's called microplastic. Now, this microplastic are very easily can go into this marine life, and then through them it comes to our our life cycle. So, therefore, around the globe there are regulations to reduce plastic waste and encourage the use of sustainable materials.
So there are some statistics that by 2050 the world population will reach 9 billion, and as we increase our population, the demand for plastic will also increase, and as the demand for plastic increases, that will also lead to plastic waste. So that will lead to again global warming, water pollution, air pollution, all these things. So what would be the remedy? The remedy, one of the remedies which I'm telling is that we can replace this conventional dense petroleum-based plastic material, for example, polypropylene, polyethylene. The plastic bag which we use is made of plastic, the polyethylene, basically polythene also we call it. Those by some bio-based material or bioplastics. Or we can use some green synthesis procedure and or also use some waste material and convert into valuable items, like from waste to wealth. We can think in that manner. So in our lab, we work on these different 4 different verticals. Today, I will talk on this nanocellulose-based materials for environmental sustainability. So nanocellulose is cellulose. We all are quite familiar of it. Cellulose we can get, it is abundantly present in our nature. It is the most promising sustainable materials of modern times due to its intrinsic behavior, intrinsic properties, its renewability, and its abundance. So it can be extracted from biomass waste. Previously, in the previous talk, Dr. Shukla told you about the burning of parali, the rice straw, rice husk by the farmers. So yeah, but we can take those parali and we can extract cellulose from there, and we can reuse that cellulose into valuable products. So I will show you in my talk some of this work which you have done. So cellulose can be extracted from different biomass waste, for example, agricultural waste like rice straw, wheat straw, rice husk, corn cob, banana fibers, cotton stalk, kitchen waste also like vegetable waste, fruit peel, industrial waste like bagasse, pulp, paper waste, and from forest waste like sawdust and plywood, etc. So you can see in this graph that how if we consider here, we search for the publications and patents using the keyword nanocellulose over the year 2000 to 2023. So we found that over the year, the research on nanocellulose is increasing. Okay, even the red color one, this shows the publication per year, and the blue one shows the patents. So now, what is cellulose nanocrystals? Of course, it is a cellulosic material, but it is in a nano form. So that's why and it is crystalline. So we call it cellulose nanocrystals. So as you can see, it's it can be extracted from a tree. Okay, so the tree it has the tree has this plant cell. This plant cell is made of several macrofibrils, like dhaga hai. Like a lot of dhaga, if you cut together, it becomes a bunch of dhaga, like that, the bunch of threads. It is called the macrofibrils, and each of these macrofibrils are made of a lot of microfibrils. Microfibril means the diameter of these fibrils are in micron size, and these microfibrils contains cellulose molecules. It has cellulose, lignin, pectin, all these things. We have to, if you want to extract the nanocellulose, you have to remove the lignin part, the pectin part. This we have to remove, and we have to extract the cellulosic part. Now, if you have to extract the cellulosic part, there are different techniques. I will briefly talk about it in my next slides. So we get this kind of cellulose nanofiber, and which contains both the amorphous region and a crystalline region. So if we do some acid treatment, the acid will attack at the amorphous region, and the amorphous region will be dissolved, and we'll get only the crystalline part known as the nanocrystals, cellulose nanocrystals. So these cellulose nanocrystals are nanocellulose because we also can extract fibers, nanofibers from cellulose. These are extracted from plant or some other biomass. Some bacteria are also there. They also produce cellulose. Those are called bacterial cellulose. So these cellulose are very interesting. As I said, these nanocellulose, they have very interesting properties. They have a lot of hydroxyl group on their surface. So we can modify, we can functionalize using those hydroxyl group. They are soluble in water, so we can use water as a solvent to prepare some material. They are biodegradable. They have high aspect ratio. Aspect ratio means the ratio of length to diameter. So any this aerospace industry or any high performance material you see which is replacing the metal,
those plastics are called high performance plastics. And if you want to enhance, they are composite basically. They are not simple plastic, because plastic basically doesn't have very good mechanical strength. You have to enhance that mechanical strength, and that we can do by incorporating some reinforcing filler. And that filler could be clay, could be graphene, could be fibers. The mechanical property of a material depends on the aspect ratio. So if higher is the aspect ratio, the material can bear more load. So the cellulose nanocrystal has a very good aspect ratio, because its length is good. Like it is around 600 nanometer, and its diameter is around 3 to 4 or 5 nanometer. So you can see the ratio of L by D, it is very high. And also it has inherently very good tensile strength and Young modulus. So this is much higher than the metals. And one more good thing is that they can self-assemble. This cellulose nanocrystal, if you put it into water, and if you leave it, the water will evaporate with time. You will see this kind of film is obtained. This is on a petri dish. It is very shining in nature. Okay, why this shows some kind of shiny nature, or this kind of illustrious nature, just like the pearl you see, because it has a very good ordered structure. If you see its microstructure under scanning electron microscope, I take a piece of this film and then I see its cross section under microscope, not the normal optical microscope, under scanning electron microscope. Then you will see this kind of structure here. Okay, this structure is like this kind of like a helical structure it forms, and you can really calculate the helical pitch. That is, it takes a turn from 0 degree to 360 degree. So from 0 to 360 degrees is a one complete turn, just like DNA. So it gives you the pitch length. So because of this highly ordered structure, it also gives very good mechanical properties. But the problem is, if we use alone cellulose nanocrystal to prepare any material, the material will be very fragile, very brittle, because it's only a crystalline material. It doesn't have any cementing agent, gluing agent. It's just like brick. So can we build a house only using brick? We cannot, right? We need to have cement so that it can bind the bricks together. So same here, when we prepare some material, we need to have some binder. In this case, polymer acts as a binder. So we all know polymer is a macromolecules. Polymer or plastic, you can say. Plastic is a common term of polymer. Polymer is the more scientific term. So here we are using, instead of using petrochemical based polymer, we are using biopolymer. So that we can have CNC, cellulose nanocrystal, I'm calling it CNC. This is also bio-based, sustainable material. And if we use a biopolymer, then we can prepare a composite or functional film or membrane, which can replace the conventional plastic packaging material by we can prepare this bio-based plastic material. So in here, and very briefly, I will explain that we have extracted CNC from orange peel, from waste paper, from office waste paper, from rice straw, and it goes through several steps, which is reported in literature. You can also go through. Basically, we have to do 3 steps. First is the cleaning. After cleaning, and we have to do this alkylation step, which removes all this hemicellulose and part of lignin. And then you have to use a bleaching process, which removes the lignin part of this the extract which we are getting from the biomass. And after we do the bleaching step, we get a cellulose fiber, macro and nanofiber, which contains both amorphous and crystalline part. Then we do some acid hydrolysis using sulfuric acid. You can also use phosphoric acid or nitric acid. Depending on the use, the acid which you use, you will get some functional groups here. So this cellulose, it has hydroxyl group, plenty of hydroxyl group, as you can see. Now we are using sulfuric acid to hydrolyze it. We get this SO3H functional groups here. And this is called the sulfate half ester group. Now we get the CNC, and here you can see this is a very transparent solution, very shiny one. And we have done several, like at every step after alkylation, after bleaching, we have monitored how the extraction process is going on by doing several microscope. We have taken several scanning electron microscope, and we have seen that from different biomass sources, if we extract CNC, we get different kinds of morphology, and at the end we can see that these are this nano CNC, which is kind of like a dumbbell shaped particle. We get the particles.
Okay, then also we check their sizes, the length and the width, and then calculate the aspect ratio. We see that we change the source of the biomass to extract CNC, the aspect ratio can also change. Based on that, we can choose the CNC from which biomass to prepare our final product. Now, in the first product, the film, where we are taking inspiration from biological material, because any material will perform better if we have a good structure. If the structure is not good, then we cannot expect any good performance from the material. So, to have a good structure, if we look into our natural material, like let's say bone, teeth, seashell. This is crab. So this crab is basically made of chitin, and if you see this shell, it is made of chitin only, chitin molecules, but it has a very good different kind of structure. So it has this kind of structure which is called this Boldigan type structure, or called chiral nematic structure, and it has a basically chitin as a reinforcing material and protein as a binder material. So you can see its structure, microscopic structure. We can basically calculate their helical pitch. So we are inspired from this kind of material, and we thought we will mimic this microstructure into our membrane, our nanocomposite, and then probably we'll expect very good performance. So we can also we have also mimicked the structure of this seashell, which has a brick and mortar type structure. Here you can see the bricks, which is made of calcium carbonate, and it has a very less amount of proteins, which is a binder. So, as I shown you in the previous slides, that the cellulose nanocrystal can itself self-assemble into this kind of helical structure. So, we take cellulose nanocrystal as the filler material, and we use a biopolymer as the binder. And here you can see that we have extracted the CNC, which I have shown in the previous slide. We got this kind of rod type structure, which is cellulose. Now, further, as I told you that cellulose has a lot of hydroxyl group on its surface, we can further fine-tune this cellulose. We can modify the surface of cellulose nanocrystal to incorporate additional functional property. Nowadays, if we get a product which can serve multiple purposes, we'll go for that product instead of a product which serves only one purpose, right? So, for selling point of view also, if I can prepare a membrane or a film or a composite which has multiple functionality, that will be better acceptable. So to incorporate some functionality, we further utilize this hydroxyl group of cellulose, and we use another biopolymer that is called dopamine. That's a monomer, dopamine. This is then converted to polydopamine after polymerization. And polydopamine, you all probably heard about this. This is abundantly available in mussel. The mussel is again some kind of marine life. You can see there. It is known as universal glue. So polydopamine it has so much of like you can see structure. It has a catechol group. It has a catechol group. It has amine functionality here, and it can adhere to any surface, even on Teflon. So it is known as Teflon. It's a non-sticky pan, Teflon, made of Teflon, but it can also adhere to Teflon. So it's a universal glue, and we polymerize this dopamine on the surface of the cellulose nanocrystals, and then we grow this polydopamine on the cellulose nanocrystals to incorporate some functionality, because this polydopamine has similar structure like melanin, which is present in our skin, which prevents us from the UVs. So if we have this kind of coating on a cellulose nanocrystal, and then when we prepare the product, that product can also get some protection from UV lights. So then finally, also another purpose of modifying this cellulose nanocrystal with polydopamine is to have a better interaction of this filler with the binder polymer. And as a binder polymer, we have used a biopolymer carboxymethyl cellulose. Okay, it's another biopolymer carboxymethyl cellulose, and then we have prepared this nanocomposite. It looks black in color because this polydopamine itself has some coffee kind of black color is there. So we get the film as a black color. As a comparison, we also prepared a film which is made of CNC and only carboxymethyl cellulose. There is no polydopamine, just to see addition of having this extra polymer coating, whether it is improving the property of the material at the end or not. So yeah, we have done several characterization like atomic force microscopy, FTIR, XRD, just to ensure that this modification has been done, performed from XPS,
we have confirmed that this nitrogen coming from this polydopamine is present in our modified CNC. That shows that functionalization has been successfully done on CNC. Then we have done this mechanical testing. It is a tensile stress versus strain curve performed at 50% relative humidity. Why I'm calling humidity specific humidity is that these are all made using water as a solvent. It is made by solution casting. So these are very waterborne material. So if we change the humidity, its mechanical property may deteriorate because the moisture will act as a plasticizing effect. It will break the intermolecular hydrogen bond and it will deteriorate the mechanical property. So if we use this material in a very high humid condition in a place where the humidity is high, its mechanical properties will not be same as if I am using this material in a place where the humidity is less than 30% or 40%. So we have to check the mechanical properties at different humidity. So here you see that the material property is very good at low humidity, around 20%. And as that 50% is the standard humidity in a room condition. The standard condition is 25 degrees centigrade temperature, 50 plus minus 5% relative humidity. That is standard. So here we got tensile strength around 160 megapascal, and also the stiffness is around 10 gigapascal, which is very high as compared to the conventional commercial packaging film. Okay, and even if we go at high humidity, you see this is the pure CMC. Its mechanical property, the strength decreases, and this is the polymer CMC. And CMC without any polydopamine modification, its mechanical property also drops. But this is the ternary composite, that is a CMC and polydopamine modified CMC composite. It shows also very good mechanical property even at very high humid condition. Okay, so. And then also we varied the polymer and the filler ratio, and you can see here the microstructure. This is very similar to what I've shown in the crab, that we get a helical structure, and we can also calculate the pitch length at different composition. So we achieved not only microstructure, but also we achieved microstructure at different length scale. So here you can see by changing the polymer, we can basically calculate the helical pitch length, which is in nanometer range. So up to nanoscale, we get a very good microstructure, and that also reflects its mechanical properties. Okay. Okay, and also once the material breaks, we also further checks how the material breaks. So, we purposefully make a small cut in the film, and then we stretch it in the tensile testing, and we see how the crack breaks. Because we don't want something, if there is any by mistake some cut, and if you stretch it, it immediately breaks. That is called a catastrophic failure. Like there is a small cut, and if it is under load, it will immediately propagate the crack. Rather, we want something that even if there is a small cut, it will not propagate the crack, it will delay the crack propagation, so that the life of that product will increase. So here we can see that we made a cut here, you can see, and then as we do the mechanical testing, the pulling, tensile testing, we see that here the CNCs are protruding from the fracture surface, and also this delamination, different layers are also forming. This kind of crack deflection or layer delamination, this helps in retarding the crack propagation. And some micro cracks also generated. This material, as you can see, also here, it shows this UV absorption. So this solid line, these are the composite made of CMC, carboxymethyl cellulose, and only CMC. No polydopamine modification is there. But this dotted line shows the modified CMC composite. So here you see in the UVA to UVB to UVC, this range 200 to around 500, this wavelength, it is absorbing the light. So this is the UV region. So this membrane, this composite, which is made of the CMC and DCMC, D stands for the polydopamine modified CMC, it is able to absorb the UV light. So it gives some UV shielding properties. And then we also check its water stability, because if this material made of are waterborne, they should not be easily degraded in water. So here you can see this is the pure CMC, this is the CMC, and these are the polydopamine modified CMC composite. And with time you see that all the pure CMC dissolves, that is a biopolymer hydrophilic, dissolves within 60 minutes.
and then other also degrades, but the polymer, the composite which is made of polytopamine modified CNC remains stable in water for more than I think 7 days, 168 hours. And also this is biodegradable. These composites are biodegradable because petrochemical based plastics take years, like 100 to 200 years to degrade. But these bio-based materials degrades almost. Here we have done the soil burial test using sewage water from our sewage water treatment plant at Bhopal, and we see that after 20 days these materials are degrading. And also we have checked this material using this fruit banana piece, and we covered this one container we take where we did not put any packaging film. This is just a control. Here we covered it with a CMC composite, and this one we covered with the CNC polytopamine modified CNC composite. And here we have irradiated this fruit under UV for 45 minutes. Even for the ternary composite, we irradiated for 60 minutes, like 1 hour, and then we see that the fruits which is not covered with any packaging film is almost blackish, it's degraded, but the one which is covered with the our packaging films remains fresh. So this material shows UV blocking properties. I will take I'll just take 5 minutes. Another composition is another architecture is the composition of gradient architecture. Here basically you can vary the composition of this material along a gradient, along a thickness, and you can fine tune the properties. So here again we use a polylactic acid, which is a biopolymer, but it is not hydrophilic. So we have to modify the CNC with another modifier, that is a APTS called aminopropyl triethoxysilane, to make it compatible with the hydrophobic polymer, which is PLA. And then we prepare this film by layer technique by varying the composition. So the bottom layer only polymer, then as we go higher, we change the amount of polymer to the APTS modified CNC. And then we prepare this kind of gradient structure from bottom only polymer. As we are going up, we are increasing the amount of this filler CNC. And the idea is that PLA is used, polylactic acid is used as a polymer in the packaging industry, but the problem is it is very brittle. It's not tough, so if you cannot stretch it, it's very very brittle material. So we prepared this kind of gradient film. If you see the cross section, as we go along the thickness, the composition from PLA, we can see the increase in the filler ratio, which is very similar to what is found in a natural component, for example, in our tooth. So, and one more thing is that we can prepare very transparent packaging film, which is also flexible. And this kind of structure also gives us very good toughness. That means elongation, you can see, which is not possible if we just cast it and get the film. But if we prepare it in a compositional gradient manner, because when we pull this packaging film, each layer starts to slide. So the material does not break immediately. As we pull, each composition layer will slide past each other, giving us a sufficient time before failure. So it increases this elongation, which gives us very good toughness. Also in dynamic mechanical analysis, we can see that this is done at a temperature, the mechanical testing done at a temperature 80 degrees, which is a glass transition temperature of PLA. We see that your PLA breaks, but this kind of compositional gradient film elongates. It is called strain hardening. As we are stretching it, the material becomes more hard, strengthened. This material is also biodegradable. It can degrade up to 15% within 50 days. And we use this material for the packaging of these cut fruit pieces. And here you see the material which was unwrapped. This is a strawberry piece, an apple piece. Within 1 day, it loses its water content, becomes dry and black, as you can see. And the fruit pieces which was covered with PLA film, the shelf life, the fruit can be kept for 1 day. This is under normal condition, room condition, and these are the values. And when we keep the material in the refrigerator, so the material the fruits which was wrapped with the compositional gradient film increase the shelf life to 3 to 5 days. And if we keep it in the fridge, even we can store the material for up to 30 days. So this is a summary that by engineering cellulose nanocrystal, it's called a gold material in material science community.
CNC can be used in batteries. CNC can be used as an adsorbent for waterborne pollutant removal. It can be used as a in sensing material. It's a material which is very interesting. You can do anything. You can do it in wound healing, cell culture, everywhere, because it's non-toxic, it's bio-based, and you can fine-tune its property. So that's why like CNC is very interesting material, and you can use it in different application as I have shown here. With this, I will end my talk, and I would like to thank my institute, ISR Bhopal, my department, all my lab members, and the funding agency, Department of Biotechnology, CRB, ANRF, and CRB Power Grant, and CSIR, and all of you for your kind patience to listen to my talk. Thank you. Thank you so much, madam, for sharing an innovation towards sustainability. You have told us about multiple uses of CNC also. To conclude, cellulose nanocrystals show us how nature already holds the blueprint for advanced materials. By engineering these nature-inspired nanocomposites, we can create flexible food packaging that is strong, lightweight, biodegradable, and food safe. This is a clear pathway where innovation meets sustainability, reducing plastic waste while extending shelf life and protecting food. So, the takeaway from this technical session one is that climate change is not just an environmental crisis, it is an economic opportunity. The circular economy shows us that waste can become wealth, challenges can become solutions, and growth can go hand in hand with sustainability. Let us move from a take, make, dispose model to a regenerate, reuse, restore model for a climate resilient future. With this, we end this session here. We'll take a short 20 minutes break for lunch and we'll resume back here after 20 minutes by 2:45 by 2:45 p.m. Thank you. Thank you so much, Saira. Right.
It's my privilege to introduce and welcome the esteemed judges who have graciously consented to evaluate this session. Our first judge for oral paper presentation is Dr. Archana Singh, Principal Scientist, CSIR Ampli, who brings a wealth of academic and research experience in the field of chemical sciences. After earning a PhD degree from Australia, she is actively involved in research and has made notable contributions through her publications in various international and national journals. She has been handling various projects from DST, DBT, SERB. She has also been elected as member of INEAS in the year 2024 and also a recipient of many awards. I request IQAC coordinator and HOD chemistry Dr. Neena Arora ma'am to welcome Dr. Archana Singh with a sapling. Our second judge, Dr. Ankit Agarwal sir, is Dean, Faculty of Science, Rabindranath Tagore University, Bhopal, and is widely respected for his expertise in the field of plant and environmental biotechnology. Sir has published more than 20 research papers and guided 2 PhD students. Dr. Ankit has been handling various research projects funded by government agencies. I request Dr. Megha Singh, Organizing Secretary and HOD Department of English, to welcome Sir with a sapling. On behalf of organizing committee, I also welcome our judges for poster session, Professor Jyoti Saxena Madam and Professor Anjum Ansari Ma'am. Dr. Jyoti Saxena is a complete academician with 42 years of distinguished services in MP. She is currently holding the position of HOD Chemistry at Institute for Excellence in Higher Education. She has contributed immensely as administrator, coordinator, co-convener, and research committee member. Ma'am, we are honored to have you here. I request Dr. Sunita Yadav Madam to kindly welcome Dr. Jyoti Saxena Ma'am with a sapling. Professor Anjum Ansari is working as Principal Government College, Daktara, Sivor. Ma'am has earned her PhD in chemistry, has been an expert member of various committees and interview panels. She has more than 20 research papers to her credit. She is also a reviewer for various journals. I request Dr. Shalu Saxena, Ma'am, Organizing Secretary and Associate Professor, Department of Mathematics, to welcome Ma'am with a sapling. I again extend a heartfelt welcome to our esteemed judges
and thanks for sparing your valuable time to be a part of this seminar. We'll be running parallel sections for oral and poster exhibitions. I kindly request the judges for poster exhibition to please proceed to IT department. There we'll have e-poster presentation and offline poster evaluations will also take place in IT department. If anybody is presenting a poster, you are supposed to go to your posters. Just stand next to your posters. Judges will be evaluating your posters there. With our judges now seated and ready, it is time to formally commence the oral presentation segment of this technical session 1. I now invite our first presenter, Sikandar Khan, to present his work. He is from Sagar Institute of Research and Technology, and his topic is sustainable utilization of agriculture waste for environmental cleanup and resource recovery. I'll just explain the rules once again. I've already mentioned, but every participant will get 4 minutes of presentation time and 1 minute of question answer session. And our timekeeper, Mrs. Chaya Makhijani madam, will ring the bell and remind you for the times. Okay, thank you. Slide show. Thank you. May I begin? Hello. Yeah. So, good afternoon, first of all, everyone, my beloved teachers, delegates, and my fellow mates. My name is Sikandar Khan, and I'm from SIRT College, Bhopal. Today, I'm going to present you. सिकंदर प्लीज अपना लैपटॉप का फ्लैप ऊपर कर लीजिए थोड़ा ताकि आपका वीडियो सही दिखे. मैम प्लीज कर दीजिए. सही है. Thank you, ma'am. Yeah. So my topic was environmental well-being, including if we say on agriculture waste. So हम सब जानते हैं कि पानी बहुत important है और पानी के बिना जिंदगी नहीं है. By 2050, 50% of the population will not have drinking water. उसका रीजन ये नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा. उसका रीजन ये है कि साफ पानी बचेगा ही नहीं हमारे पास. हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं कि हमारे पास साफ पानी बचेगा नहीं पीने के लिए. तो हाँ, उसके बहुत से रीजन है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टारगेट ऑन अ रीजन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट क्या, जैसे ऑरेंज पील, मस्टर्ड स्टॉक, पिजन स्टॉक, फॉर इन सब को लेके हमने ऐसी चीज बनाई कि हम ना पानी में से हेवी मेटल्स, जस्ट अ सेकंड, I have to change the slides. Yeah, हेवी मेटल जैसे लेड, कार्डियम, क्रोमियम, हम इन सब को उस वेस्ट से निकाल सकते हैं पानी में से. उससे हम क्या टारगेट कर रहे हैं, एक तो हम हमारे कचरे को साफ कर रहे हैं, उल्टा हम पानी, क्योंकि ये जो चीजें हैवी मेटल डिसॉल्व है, दिखेगा नहीं कि आप क्या पी रहे हैं. हमें ये विजिबल ही नहीं है कि हम हैवी मेटल्स ले रहे हैं और ये हमारी किडनी के लिए बहुत खराब है. इसके लिए मेरी मैम ने रिसर्च करी है और ऐसा मटेरियल बनाया है कि हम जब इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो इसको बहुत क्लियरिफाई कर लेगा और ड्रिंकिंग के लिए बना लेगा, जिससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी. क्यों? क्योंकि हम कचरे को भी साफ कर रहे हैं और हम पानी भी खिला रहे हैं. या अब कैसे बनाएंगे? अब मैंने ये तो बता दिया कि हम कचरे को यूज कर रहे हैं, उसकी भी कुछ प्रोसेस होगी. सबसे पहले हमने उसको नाम दिया बायोचार. अगर अब हमें उसकी प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑरेंज पील, पिजन पी स्टॉक, मस्टर्ड स्टॉक, इन सब की ये प्रोसेस है. तो उसको हम सबसे पहले डिस्टिल वाटर से साफ करेंगे. देन वी हैव टू ड्राई इट, ओवर ड्राइंग फॉर 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. Then carbonization in muffle furnace, cooling and grinding of the biochar. Then we have to, then it's particularly ready if I am going to say. देखो, अपन कुछ भी बनाते हैं तो हम उसके स्पेसिफिक पैरामीटर्स रखते हैं.
कि अगर वो उस पैरामीटर में लाए करेगा तो ही हम यूज करेंगे। इसके लिए भी हमने कुछ पैरामीटर रखे कि वो कितना कॉन्टेक्ट टाइम ले रहा है, हमें कितना उसका एब्जॉर्बेंट डोजेज देना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और सबसे आखिरी में कि यार हमने जितना वेस्ट यूज करा उसमें सबसे अच्छा क्या निकला। देखो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसके सिर्फ 2 फायदे हैं, पर इसके बहुत फायदे हैं। देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कचरा है, कचरे का कोई काम नहीं होता अगर हम उसको यूज ना ले। अगर इस प्रोसेस से हम उस कचरे को एक बहुत यूजफुल वे में यूज कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ यूजफुल क्यों, क्योंकि किसान के पास जब कचरा बचेगा उसे जलाता है, उससे एयर पॉल्यूशन भी होगा, उसकी जमीन पे भी पॉल्यूशन होगा, वो उसको साफ करवाना ही है। इससे हमने एक ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करी। लोग अब देखिए, अब मैंने आपको एक बताया था कि पानी को साफ करता है। हम बाहर से पानी साफ करने के लिए जो एब्जॉर्बेंट मंगाते हैं वो बहुत महंगा आता है। एक तो ये हम इसको वेस्ट से बना रहे हैं और उल्टा ये सस्ता पड़ रहा है, तो इससे हमें लो कॉस्ट हो रही है, इससे हमें गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा मिलेगा। इम्प्रूव वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया जैसे ये पानी में से हैवी मेटल्स जो बहुत मुश्किल से निकलता है वो निकालेगा। उसके लिए अब हमें कोई बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े उसकी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज नहीं होगा। सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स रिकवरी, 50% भारत की जनता में किसान है। उस किसान के लिए बहुत चीजें महंगी भी हैं, बहुत चीजें सस्ती भी हैं। फर्टिलाइजर उसके लिए बहुत महंगा है, तो और पानी तो उसकी बात अलग ही है। अब 2 मिनट तक ओके मैं, पानी बहुत महंगा है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम उस किसान के लिए एक तो 50% है, तो हम उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसान को क्या चाहिए, किसान को चाहिए कि वो अपने कहीं ना कहीं से कुछ बचा ले ताकि वो अपने खेत में दे। इसलिए हम उसके पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि वो अपना कचरा यूज कर रहा है, उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। एक सेकंड, ये बाकी ये जो हमने एक स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन रखे हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम, इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेंट डोजेज, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मानना है कि आइडेंटिफाइंग सरफेस फंक्शनल ग्रुप। इससे हमको पता कर पाएगा कि यार हमें कौन से पानी में कौन सा अपना ऑब्जॉर्बेंट यूज करना है, जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ को क्लीन कर पाए। अब ये रिसर्च तो कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ ऑरेंज फील्ड का 92% था हाईएस्ट, और जबकि ऑरेंज फील्ड का कचरा सबसे, क्योंकि ऑरेंज फील्ड का कहीं यूज ही नहीं है, उसका हाईएस्ट ये प्रूफ करते हैं कि हम हमारे कचरे को कितना साफ कर सकते हैं। ठीक है मैडम, एक बस एक लाइन बोलनी लास्ट प्लीज, एक कंक्लूजन दूंगा। देखिए, मैंने एक कोट पढ़ा था, वी डोंट सेव वाटर फॉर आवरसेल्व्स, वी सेव इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। बस ये ध्यान में रखते हुए हम लोग ने रिसर्च करी, और थैंक यू मैं अनीता मैम के लिए जिन्होंने इतनी रिसर्च करी। मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल। क्वेश्चन? जी मैम। So, secondly, we have shown this maybe that saying that it is first economic. Yes, ma'am. But even using first one, I think 24 hours, 120 degrees some temperature for Yes, ma'am. dry. Yes, And ma'am. then I saw during carbonization, where you are heating that material from 400 to 500 degrees centigrade. Yes, ma'am. So, how it is मैम, economic? आपने ब्रिक को बनते हुए देखा है? That is fine. Yeah. आपने ब्रिक को बनते हुए तो देखा हो मैम, वहां भी तो यही प्रोसेस लगभग कॉपी होती है। हम बस ये कह रहे हैं कि हम कचरे को भी यूज कर रहे हैं। अगर देखिए गवर्नमेंट से, जी मैम, But whenever you are saying economic, there is a comment where you have to compare your material जी मैम, with the commercial available material. थैंक यू मैम। Cost and service. मैम नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगा। जी मैम, थैंक यू। Thanks. आपने अच्छा काम किया है, बायोकार है और ऑर्गेनिक वेस्ट से आपने, जैसे कि आपने दिखाया कि ऑर्गेनिक फीड का सबसे ज्यादा रिकवरी होता है, लेकिन जैसा मैडम ने बोला कि आपने उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ड्राई किया है, जी सर। तो फिर उसका बायो मटेरियल कैसे सर्वाइव करेगा उस पर्टिकुलर सर उसको ही तो डिसॉल्व कराना है, हमें हमें उसका ही यूज करना है, हमें उसको कोई पकाना गलाना नहीं है, हमें उसी को पिघला के उसी को यूज करना है। और सर आपने बस एक चीज स्टार्टिंग में बोली, मेरी सर ये मेरी मेहनत पूरी नहीं है, मेरी मैम की मेहनत है ज्यादातर, उन्होंने ये हेल्प करी है, तो उसके लिए बस मैम थैंक यू। आपको बस एक डाउट क्लियर करना था, बाकी थैंक यू फॉर जजिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Sikandar. Our next participant is Dr. Harsha Galori. She's from SPM Science College.
and she's a professor in physics. She'll be joining us online. She'll be presenting her paper online. Welcome, ma'am, and you can start your presentation. Okay. हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर हर्षा जालोरी। मैं आज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस पाथवे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं अपना लेक्चर दूंगी। मैं फिजिक्स में प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से। एक सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये रहा कि देखिए आप अपन खुद देख रहे हैं कि अपनी लगातार जो डिपेंडेंसी होती जा रही है फॉसिल फ्यूल की, वो डिपेंडेंसी के कारण अपने को जो नुकसान हो रहा है वो अपन ने अभी रिसेंट जो वार हुआ जो अभी भी चल रहा है यूएस ईरान का, वहां हमने देखा कि हम लोगों को एलपीजी की कितनी मुश्किल गई। और उसके अलावा इसके जो नुकसान है वो अलग है फॉसिल फ्यूल के, जिसके कारण हमारे पास जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, और एक्सट्रीम वेदर, कभी एकदम ठंड ज्यादा हो जाती है या एकदम ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ये भी हमारे सारे ग्लोबल वार्मिंग का है। दूसरा और एक कारण, इसके कारण जो हमारी जितनी फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो उससे क्या होगा कि हम खुद के ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो हमें इजी रहेगा और हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें उसके लिए फ्यूल इंपोर्ट करना पड़े। अब रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सोलर एनर्जी यानी पीवी पैनल्स जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये इसमें सनलाइट जैसे ही आपके इन सोलर सेल्स के ऊपर जब सनलाइट वो इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगा, उनके जो पीएन जंक्शन को ब्रेक करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और दूसरा है सीएसपी सिस्टम यानी सेंट्रलाइज सोलर पैनल सिस्टम, जिसमें पूरी भी जो सोलर लाइट है उसको बहुत सारे मिरर्स लगा के एक जगह हम सेंटर्ड कर लेते हैं, और उस जो इतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है उससे हम पानी को गर्म करके भाप बना के भी हम टरबाइन चलाते हैं। और दूसरी इसके पश्चात है हमारे पास जो सोलर जो रूफ टॉप लेकर हम उसको बड़े लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। अब आ रही है हमारी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में आप देखिए, विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा जो फायदा है आपको जीरो इमिशन यानी CO2 का कोई इमिशन नहीं, कोई फ्यूल यूज नहीं हो रहा है। ऑनशोर भी है और ऑफशोर भी है, लेकिन ऑफशोर में ये फायदा है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर और लगातार मोर कंसिस्टेंट विंड्स हमको मिलेंगी। जबकि अगर आप ऑनशोर लेंगे तो हम ज्यादा डिपेंड रहेंगे कि हमारी विंड का कब मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद है हमारी हाइड्रो पावर यानी आप किससे ले रहे हैं, जो स्टोर्ड वाटर से या फ्लोइंग वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। जहाँ पे गिरते हुए पानी से काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो फिर वो क्या करेगी, आपकी टरबाइन को चलाएगी, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद है बायोमास यानी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट और इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट, जिससे हम बायोमास एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। जियोथर्मल यानी अर्थ के इंटीरियर में जो जितनी हीट हो रही है उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये अगर हम इसकी पूरी ग्लोबली देखें तो हम ये देखते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 3400 गीगावाट यानी 10⁻⁹ इस कारण जो जॉब क्रिएट हुए हैं 13 मिलियन। और कम से कम जो हमारी कॉस्ट है सोलर, जो पहले जब शुरू में सोलर सेल्स लगते थे और उससे हम आज देखें तो उनकी कॉस्ट लगभग 90% डिक्रीज हो चुकी है। अब इसमें जो मेन हम लोग को चैलेंजेस मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट यानी इसको लगाना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। दूसरा, ग्रिड इंटीग्रेशन का मतलब आप ये देखिए कि जो सोलर आपको एनर्जी मिल रही कांस्टेंट नहीं मिल रही है सोलर लाइट, कभी कम कभी धूप कम है कभी ज्यादा है। इसी प्रकार विंड एनर्जी वो भी आपको कभी मिलेगी और कभी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो ये जो वेरिएबल आउटपुट होते हैं इसके लिए अपने को एक जरूरत पड़ती है मॉडर्नाइज ग्रिड, जिसमें दोनों सोलर और जो विंड एनर्जी दोनों को एक ग्रिड से जोड़ देते हैं ताकि हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। तो इसमें हमें एक ग्रिड इंटीग्रेशन की जरूरत है। इसके बाद एनर्जी स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एनर्जी स्टोरेज लेकिन अब इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज यदि अपने को बेटर मिल जाए तो हम इसको अच्छे से रिन्यूएबल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिसी अनसिटी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें भी कई बार चेंज आता रहता है। इनकंसिस्टेंट रेगुलेशन के कारण भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा पीछे हटते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम और कोबाल्ट, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है जो थोड़े मतलब सप्लाई में मुश्किल आती है। प्लस इसके अलावा स्किल वर्कफोर्स, हमारे पास इतने इफिशिएंट वर्कफोर्स भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम इन जो बैरियर्स है अगर इनको हम थोड़ा ओवरकम कर ले तो हमें क्या बेटर स्थिति मिल सकती है। Just 1 minute left. हाँ, अब technology जैसे कि आज जो हमारे पास नई बैटरीज आ रही है, लिथियम आयन और थर्मल इलेक्ट्रोड सिस्टम, ये क्या कर रही है, ये अब अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, इनेबल कर रही है सोलर और विंड को, ताकि हमें कंटिन्यूस पावर मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विंड एनर्जी, अब अपॉर्चुनिटीज हमको इससे क्या क्या मिल रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एनर्जी इंडिपेंडेंसी होगी। मतलब जो अगर कहीं भी कोई स्थिति जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा या जो प्राइस वोलेटिल इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम रहेगी, हमें कांस्टेंट सप्लाई मिलता रहेगा। और अगर हम फोसिल फ्यूल को रिप्लेस करेंगे तो सबसे बड़ी बात ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी बेटर होगी, हेल्थ केयर हमारी हेल्थ भी पहले से बेटर होगी, और पॉल्यूशन से जो जो इलनेस होती है वो भी हमको कम हो जाएंगी। अगर हम इसके कारण जो हमारा मेन रूरल डेवलपमेंट है, सो डिसेंट्रलाइज सोलर मिनी ग्रिड और स्मॉल, जिसके कारण हम रिमोट कम्युनिटीज में भी हम हेल्थ और एजुकेशन लेवलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें पॉलिसी जो रिकमेंडेशन है उसमें हम देखिए कि अगर हम इसमें जो हम चाह रहे हैं कि मॉडर्नाइज ग्रिड कर दें, सबसे बात ग्रिड इंटीग्रेशन कर दें, तो हमको इसमें बहुत बेटर स्थिति मिलेगी। Ma'am, thank you. Can we conclude? Have concluded, ma'am? हाँ मैडम, कंक्लूजन ये है कि देखिए मैडम, टेक्नोलॉजी अगर अभी हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी आई है ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करें तो हम इसमें बहुत बेटर स्थिति हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा हमारे पास अगर हम स्टेबल पॉलिसीज हों, हमें और इंटरनेशनल कॉपरेशन मिले तो हम और बेटर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एआई और आईओटी का अगर हम यूज करें, डिजिटलाइजेशन जिसको बोल रहे हैं, तो हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बेटर काम कर सकते हैं। उस एआई का एक एग्जांपल जो स्मार्ट मीटर्स आजकल लग रहे हैं। Thank you so much for the presentation. Do we have any questions? No. No. Thank you so much, ma'am. I request all other participants to kindly stick to the time. Our next participant is Dr. Akhilesh Shinde from Institute of Excellence for Higher Education, and he will be joining us online. Is he there? Dr. Akhilesh Shinde, is he there? No, I don't think so. He is there. So I move on to my next participant. She is Dr. Kavita Chamal, Assistant Professor, Government Model Science College, Jabalpur. Ma'am, Dr. Kavita Chamal, are you there? Not there. Okay. So now I'll call for one offline participant, Dr. Shalini Sethi. Dr. Shalini Sethi is Assistant Professor, Aryabhatta University, Nursing Road, Singapore, and she'll be giving her presentation here. I shared. Above this. Yeah. Yeah, this one.
Yeah, good afternoon, one and all present over here. Directly straight, I come to the introduction. Fishes are the fastest growing and easily available source of protein. Though the intensive culture farming has posed a hazardous impact on the environment. So, organic aquaculture, it offers a sustainable alternate to produce the healthy fish as well as to conserve the environment. So, in this presentation, I am going to explain what is organic aquaculture, why it is needed, how it works, its benefits, challenges, and future prospect. Before going ahead, we'll understand what is actually the organic aquaculture. Organic aquaculture is a holistic system which goes with the nature rather against it. So it mainly focuses on maintaining the healthy water and soil. It uses the nutrient recycling, whereas it completely avoids the synthetic fertilizers, GMOs, and synthetic growth promoters. So the main objective of organic aquaculture is not only to produce the healthy fish, but also to protect the environment. You can see one of the farm of organic aquaculture in this picture. Now the question is, why do we need the organic aquaculture? In the conventional culture, to augment the fish production, farmers are continuously using the excess feed. They use the synthetic chemicals, fertilizers to augment the fish production. That results in the water pollution, antimicrobial resistance in the fish, and moreover, the bioaccumulation of harmful chemicals. So, the organic aquaculture it addresses all these problems by using the eco-friendly method that results in the conservation of the biodiversity, improving the pollution, and it leaves no residue in our water. So, before starting organic aquaculture, there are some conditions that has to be fulfilled. So, the first one is the source of water. It should be free from all the contaminants like municipal waste or any industrial effluent and all. Another thing is the soil also, it should be free from pesticide residue. There should be a buffer zone maintained between the where you are going to start aquaculture and the conventional pond. So you can avoid the contamination between this. And the more importantly, the fish seed should be get from healthy brood stock, which are particularly fed on organic feed. This is another picture of an organic farm. You can see the pond should be completely virgin and no industry or the human habitation should be there. The basic principle of organic aquaculture is animal welfare. Conventional farming, the farmers, they use the heavy stocking density. But unlike conventional farms, in aquatic organic aquaculture, the farmers, they have to maintain the low stocking density. Low stocking density, fewer fishes per pond. So that ensures that the fishes get the enough space to swim, they get the enough oxygen, and that reduces the stress, and consequently the disease outbreak can be minimized. So the healthy fish, they require fewer medicine, making the system more sustainable.
Now, another very important component of organic aquaculture is food. So, the feed should be prepared using the natural ingredients which directly come from the plant or the animal sources. So, the balanced and nutritional food, it improves the fish health and the meat quality. Here, another picture of the collected feed. Now, the disease management. Important aspect. So instead of using antibiotics, all the biological methods or herbal methods should be used to control the diseases. Here, I have given you some examples. They have prepared some herbal formulation to control fish parasite. It improves the immunity as well as the act as a biosynthesizer. Now, the very important aspect of organic aquaculture, how much profit a farmer can generate. So, actually, we can say the organic aquaculture, it gives a lower income. Definitely going to be more price for the same product. So, it can fetch a higher price. Even export also, they can get the good price for their product. You can see the grown up organically fish. Here, since the time is very less, so I'm not going in a detail. You can see what the ongoing activities are happening in India. Some institute like ICR, CIFA, they are conducting the fish trial to improve the technology. And already some shrimp farmers, they have adopted this technique, right? And since man is giving me a convenient signal to wind it up, I'm sorry, you can just read it over there. Another thing, the government, suppose someone wants to start this, so these are the schemes, Pradhan Mantri Matsya Yojana and FAA certificate and all. So one can. Sorry, ma'am. Yes, I understand very much, ma'am. Yes, so this is the conclusion, and I welcome your any suggestion, feedback, and question, ma'am. So I have a general query that you mentioned that in this case, the farmers have to maintain certain density lines, like number of fishes in particular volume. Yes, ma'am. How they can assure? Is there any particular data or something like that? Absolutely, ma'am. Generally, in a conventional intensive farming, the density of the fish should they are maintaining more than 8,000 per hectare. So in organic aquaculture, it should be less than half. I mean, the maximum they can maintain, they can do 4,000 stocking per hectare. Is it practically possible for them? Yes, ma'am. See, still that practice is in development. As I told you that in a beginning stage, it fetches less profit for them. But in a long term, if they will do due to the customer demand and all, suppose if you go to the market, you are willing to get more price for the organic product. So that way, in the long term, they get the good profit. Even the export market, they are offering the good price for the organic fish. आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात की है। Yes, sir. तो क्या ऐसा है अभी कि एनिमल्स में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की एजेंसी दी है? Yes, sir. MPDA and APEDA, they are providing the organic certification. But again, you have to fulfill all the criteria, and getting the certification is also one of the tough criteria. But definitely in a long term, some shrimp farmers in Tamil Nadu and in South already they have adopted this technology, and they are fetching a good profit out of that. They are exporting the shrimps. Shrimp farming is there in a practice, and they are getting a good price for that. Yeah, thank you. Thank you, Shalini ma'am. Our next participant will be joining us online, Dr. Gaurav Gupta. He is Assistant Professor, Faculty of Law, Integral University. Dr. Gaurav, you can come online. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everyone. Today I am presenting on a paper titled Ecological Constitutionalism and Nature's Legal Personhood, Reconstructing Environment Well-being. The core question the paper asks is simple but radical. What if rivers, forests, and mountains were not just property to be owned and exploited, but legal persons with the right of their own? The paper argues that as climate change and ecological collapse accelerate, our existing legal tool,
built to manage nature as a resource are not longer enough, and that a genuine paradigm shift is needed. The paper identifies three structural flaws in traditional environmental law. First one is the standing constraint. That means the locus standi. Courts generally require a human plaintiff to show direct personal injury before a case can even be heard. If an ecosystem is destroyed, but no individual person suffer a provable financial or physical loss, there are often no legal avenue for redress at all. The second structural flaw is valuation of harm. When courts do award damages, they are calculated based on human financial loss or cleanup cost, not the deeper damage to the ecosystem own regenerative capacity. The third one is the regulatory permitting, not preventing. Most environmental statutes function as licenses that specify how much pollution or resources extracting it allowed, rather than laws that categorically prevent ecological harm. Intellectually, the foundation of this paper is based on the Christopher D. Stone landmark 1972 essay, Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects. In this essay, the Stone observed that legal history is really a history of for own repair and have its interest directly represented in court. This is the conceptual seed for two linked ideas that the paper develops. First is the ecological constitutionalism, and the second one is the nature's legal personhood. The ecological constitutionalism embedded ecological protection directly into a country's constitutional architecture rather than treating it as an ordinary policy matter. India have also the provision like Article 21, Article 48A and 51AG regarding this provision. But the nature's legal personhood recognizing a specific natural feature that as a juristic person, the nature identifies as a juristic person, an entity with right to exist, persist, and regenerate, represented in court through human guardians or trustees with any damages recovered going toward the restoration of the learned Panchmam, nature, the right to intelligent respect for its existence and its life cycles, an independent right to restoration separate from human compensation, and require the state to take preventive measures against ecosystem destruction. In New Zealand, Parliament passed the Te Awa Tapua Wanganui River Act 2017, declaring the Wanganui River an indivisible living whole possessing full legal personality with corresponding rights, powers, duties, and liabilities. In Colombia, facing severe pollution from illegal mining and deforestation in the Atrato River. Yes, ma'am, please. The court ruled the river itself was the subject of rights, specifically right to protection, conservation, maintenance, and restoration, and ordered the creation of a joint commission for gardening made up community representatives and government. But India, there have two landmark cases related to Muhammad Salim versus state of Uttarakhand and Lalit Miglani versus state of Uttarakhand, where the nature's entities will claimed as a living entities, and the court passed that the idea acting as the government should act as a guardian of those cannot represent themselves for the nature. But unfortunately, the both cases were stay granted by the Supreme Court in 2017 as well. So Indian Constitution always provide the such provision, but the court is still in dilemma to provide such. Thank you. Yes, Thank you for joining us. Ma'am, do we have any questions? No, thank you, Dr. Bora, for joining us here. Our next participant is Ms. Yuki Kohli. She will be joining us online, and she is Assistant Professor at Jagran Lake City University. Ms. Yuki Kohli.
Please start your presentation, and I again the participants to stick to the time limit. Good afternoon, everybody. Is my screen visible? Yes. Yes, it's visible. Okay. So I am Yukti Poli from Jagran Lake City University, and the topic for my today's presentation is waste to energy technologies, opportunities, and challenges. So presently, India is dealing with an immense problem with trash problem. Concerns. Hello, Yukti, Yeah. please. Slideshow पे switch कर जाइए. Ma'am, can you please repeat? Slide is visible, but other slides are also visible on the side panel. तो आप slide show पर आ जाइए. नीचे वो जो कप का साइन बना हुआ है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए. Ma'am, now is it moving? Lower right hand bottom. Ma'am, now is it moving? Yeah, carry on. Yeah. So presently, India is dealing with the trash problem. Concerns about pollution, land scarcity, greenhouse gas emission, and depletion of natural resources has been increased, and traditional waste management techniques are failing immensely. Due to these difficulties, eco entrepreneurship has suffered as a revolutionary strategy, which can be used for recycling, upcycling, or compositing the creative ways to product techniques to convert trashes into useful financial resources. India's shift to a circular economy is accelerating by the green entrepreneurs. So basically, the green entrepreneurs are trying to use these waste managements and trying to convert it into energy resources. There have been programs like Swachh Bharat Mission, Startup India, extended producer responsibilities, etc., which are contributing to the growth of the waste to wealth management. If we talk about the waste management statistically, then India is producing over 62 million tons of municipal solid garbage waste every year, which is data according to Central Pollution Control Board, and only a small portion of this volume is treated, and around 62 million tons are produced, almost 43 million tons are collected, but only 12 million tons are processed before the final disposal. Presently, if we talk about the natural consumption, which for the waste produced is around 123 grams per person per day. But after 5 years, it would be increased by 98.8 grams per person in the next coming 5 years. Talking about metropolitan states like Delhi, for example, if we say the daily generation of esteemed trash today is around 526 grams per person. Around 2020-30, it would be increased to 165 million tons, which would be almost 3 times what the current amount of trash management is. In the present time, the market for municipal solid waste management is expecting a rise from an estimate of 7.85 million in 2025 to $10.37 million by 2030. So these are few statistical data which is talking about the waste management. If I talk about the opportunities that are present in the sector for converting the trash or the waste into technologies or into energies. So there are few opportunities like plastic cleanliness. So according to some research, the research are indicating that almost 41% of the Indian circular economy startups are starting dealing with the plastic trash. They are reusing and recycling these trash in order to convert it into energies. Second option is e-waste recycling. So according to a study by International Council for Miss Yukti, can we conclude? Yeah, sure. Yeah. So as you can see on your screen, there are few opportunities which are given by the subsectors like plastic cleanliness, e-waste recycling, which would be recycling the waste material, agricultural waste, using the agricultural waste in
form of composite. Then the biological materials like the floral temple waste that are produced every day into the temples can be reused for in the form of composites. Then there are textile and other waste management which can be used. Just a minute, ma'am. So there are some case studies. If you can go through these case studies, because of shortage of time, I cannot explain these case studies. So these are few case studies which are actually using the waste material for converting into a technologies. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Our next participant is Dr. Bhavna Sharma, and she is joining us from Himachal Pradesh, Dharamshala, Himachal Pradesh. She is joining us online. Dr. Bhavna Sharma, welcome here, and you can start your presentation. Thank you very much, ma'am. Let me share my screen first of all. I hope my screen is visible. Screen is visible, but can you switch to slideshow mode? Because the side panel is also visible. I have, okay, I'll start with the presentation. Respected Chairperson, distinguished guests, honorable members of the academic community and dear participants, a very good afternoon. Myself, Dr. Bhavna Sharma, Assistant Professor, School of Legal Studies, Himachal Pradesh University Regional Center, Dharamshala. So today I'm going to put forward my ideas under the title Climate Change and Himalayan Ecosystem Resilience in Himachal Pradesh and Empirical Assessment of Environmental Vulnerability and Adaptation Strategies. So in the 21st century has witnessed climate change emerging as one of the most significant challenge affecting ecosystems, economies, and human societies. However, the impact of climate change are not uniform across regions. Mountain ecosystems, particularly the Himalayas, are among the most vulnerable areas because of their fragile ecology, dependence on climate sensitive resources, and exposure to natural hazards. Himachal Pradesh provides an important case studies in this context. The state represents a unique combination of ecological richness and environmental vulnerability. Its forests, rivers, glaciers, biodiversities, and mountain landscape provide essential ecosystem services. Supporting agriculture, horticulture, tourism, hydropower, and the livelihood of local communities. At the same time, increasing climate variability, extreme rainfall events, landslides, forest fires, and changing water availability have created new challenges for sustainable development. The central argument of my paper is that climate vulnerability in Himachal Pradesh is not determined by climate changes, rather, it emerges from the interaction between climate exposure, ecosystem sensitivity, and adaptive capacity. And most importantly, total ignorance of the traditional knowledge. Therefore, effective climate action requires not only reducing emissions, but also strengthening the resilience of ecosystems and communities. The study adopts an empirical approach based on the secondary data obtained from reliable sources such as Indian Meteorological Department, Forest Survey of India, Himachal Pradesh State Action Plan on Climate Change, Himachal Pradesh Disaster Management Authority, and Niti Aayog. The paper develops a climate vulnerability framework based on three major dimensions. First is the climate exposure, second is the ecosystem sensitivity, and third is the adaptive capacity. The findings of the study indicate several important trends. First of all, climate-related hazards have become increasingly significant in Himachal Pradesh. Extreme rainfall events have resulted in flash floods, landslides, causing damage to infrastructure, agricultural land, and natural ecosystems. These events demonstrate the increasing vulnerability of mountain settlements. Secondly, forest ecosystems continue to play a crucial and very critical role in the climate resilience. Forests contribute to carbon storage, biodiversity conservation, soil protection, and water regulation. However, increasing forest fire incidents, land use changes, and developmental pressure on these mountains threaten ecological stability. Thirdly, climate vulnerability is especially uneven districts with higher tourism pressure,
Infrastructure expansion and ecological disturbance require stronger adaptation measures. Therefore, a uniform policy approach may not be effective, especially when we talk about the Himalayan regions. Climate action needs to be location specific and based on local ecological conditions. The study highlights importance of ecosystem based adaptation as a pathway towards climate resilience instead of depending only on Dr. Bhavna, time is up. Can we conclude, Dr. Bhavna? I think we have lost the signal. Still, we have to wait for one. No questions. Okay, I think we have dropped the signal from Dr. Bhavna Sharma. So I'll take on the next participant. Next participant is Dr. Akhilesh Shinde. Dr. Akhilesh Shinde. Yes, ma'am. Yeah, okay. Dr. Akhilesh Shinde is from Institute of Excellence in Communication, and you have a presentation. Yes, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, it's visible. And can you switch to slide mode? Fine, ma'am. Yes. Yes, you can start. Yeah. Okay. So, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Akhilesh Shinde, Assistant Professor in Department of Chemistry from Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal. अखिलेश जी आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं. Okay, ma'am. Let me just check this. Now, fine, ma'am. Hello. अभी आया तो नहीं है सर, वीडियो तो नहीं आया आपका. चलिए ठीक है, आप बोलना शुरू कीजिए. मतलब बस वो वीडियो का जो आइकन है उस पे आप वो जैसे अपन म्यूट अनम्यूट करते हैं वैसे वीडियो का बटन होता है वो दबा. मैंने क्लिक किया है, शायद हो सके चालू भी है मेरे लैपटॉप में, बट ठीक है सर, आप स्लाइड शो शुरू करें. या सो मेरा स्लाइड दिख रहा होगा मैम. हेलो. यस सर. यस. So the topic of my today's presentation is natural surfactant for sustainable cleaning, a comparative study of Rita and synthetic detergent. Background and research gap की अगर हम बात करेंगे तो synthetic detergents cause water pollution and it has adverse effect on our environment. On the other side, Rita contains natural saponin and it can use as a natural detergent and it is very safe and biodegradable. This research is limited for the educational comparison because I have done this research with my BSc second year students and we need to explore this idea to next level to make it like more useful and more applicable in the daily life. So objective and methodology. So the first objective of our study is to measure the surface tension of water, detergent and Rita extract using the drop count method. Second is to measure the cleaning efficiency. For that we use the gray stain scale. Third one, to compare the environmental aspect and cleaning performance. So for this particular study, what we have done, we have prepared the Rita extract and detergent solution. For Rita extract, we have taken 10 gram of Rita shells and it were boiled in 100 ml distilled water for 10 minutes. Then we cool that particular extract and filter it. For detergent, what we have done, we have used a synthetic detergent. We have taken 1 gram detergent and dissolved in 100 ml of distilled water. I directly come to the my results. So we have done for surface tension, we measure the drop count, density, and then surface tension. So these are my results. So you can see that distilled water has a number of drop are 20, synthetic detergent are 37, and whereas Rita extract has 32. And in terms of density, you can see the distilled water has density 0.99, whereas synthetic detergent has 1.01 and the Rita extract at 1.03. The interesting result comes to the surface tension. You can see that distilled water has a surface tension 72.8,
whereas synthetic detergent had 39.82 and Rita extract had 46.96. So you can see that as compared to synthetic detergent, the Rita extract has 10, there is a difference of almost 8 to 10 that in the terms of surface tension. And we can see that if we take the pure water, it has surface tension, sorry, number of drops like 20, whereas Rita is at 32 and synthetic detergent 37. So as compared to pure water, Rita extract uh, has lower surface tension, and synthetic detergent has less, even less surface tension. But in terms of number of drops, so 37 and 32, they are comparable. So we can see that in terms of surface tension, Rita extract and synthetic detergent both are working almost in the similar range. Secondly, we have seen the cleaning efficiency. For that, we have taken the cotton cloth and we have taken some stain for ink, chocolate, then coffee, turmeric, beetroot, and mobiline. From the result, yeah. Can you conclude? We are running into short of time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm just concluding. This is my final result. So you can see in term for ink, they are almost working similarly. For chocolate also, the synthetic detergent and Rita are working almost similar. Coffee, we can use Rita extract in place of synthetic detergent. Where the synthetic detergent is performing well in the case of beetroot and mobile oil. So we can conclude from this result that for cleaning of some moderate stain, we can use Rita extract in place of synthetic detergent. So, lastly, I would like to conclude with the environmental impact and my conclusion. Rita, that is renewable, biodegradable. So, and it is plant-based and decompose very naturally. It is suitable for light and moderate cleaning, and it supports the green chemistry and sustainability. We would like to scale up this work in the future. So, thank you so much. Dr. Ajmal Singh, ma'am, please. Hello, am I audible? Yes, ma'am. So my question is I was going through the data and I can see which is Ma- essentially मैम आवाज आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है. हेलो. Podium, please mute yourself, and Devesh, please unmute yourself. Devesh, please unmute yourself and tell guest एक बार फिर से question. Akhilesh sir, are you there? Yes, ma'am. की वैल्यू है और जो डिटर्जेंट की सफिशिएंसी है वो डिफरेंट है जबकि डेंसिटी सेम है. मैम एक्चुअली में जो हमने लिया है वो 1 ग्राम लिया हुआ है डिटर्जेंट को, और यहाँ पे हमने 10 ग्राम जो है वो रीठा एक्सट्रैक्ट लिया था. तो मे बी दैट कुड बी वन रीजन. ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है मैम, उसका एक पार्ट है, और उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए. एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस इन फ्रंट ऑफ यू. और मैं इसको स्केल अप करना चाहता हूँ, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि क्या हम ग्रीन केमिस्ट्री के तौर पर जो हमारे नेचुरल सर्फेक्टेंट है उसको हम यूज़ करें, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी है हमारे प्लांट और एनिमल, उसको फायदा हो सके. सो आई विल ट्राई टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर. थैंक यू. Thank you, Akhilesh sir. Our next participant is joining us offline. She is Mansi Tripathi from LMCT. Mansi, come and start your presentation. Stick to the
My topic is environment and heritage management in the Ramayana, an Indian knowledge system perspective for achieving sustainable goal development. So now the introduction, the environment degradation and all the hazards that we humans are causing towards the nature is an alarming thing. And even due to that, because of our carelessness, the environment plus our cultural heritage, most of the sites that are belonged to us as a cultural heritage, we have lost that particular things. So that is how the Indian knowledge system comes into execution over here and in relevance to SDGs. So here we are talking about the Indian knowledge system with perspective to the environmental ethics. The first goes with Vasudev Kutumbakam. That is our old age saying where the world is a family and all the living beings are our responsibility to be taken care of. Dharma, the duty towards the nature, what we are doing towards the nature. It's not about questioning what others are doing about the nature. It's about our perspective. Harmony, how human beings are joining hands towards the nature and not like master traders over there. Ahimsa, that degrades as how we are harming our own nature and few of the species are even lost in that particular manner. And the last is Panch Tattva. We all know that all the human beings are willing into these particular Panch Tattva. Any living being that is there on the earth is made up of Panch Tattva and is going to be indulged or is going to be vanished in particular Panch Tattvas. Now we talk about particularly an epic that is Ramayana. In Ramayana, we are seeing this not as a religious text piece, we are seeing it just as an epic and as a reference. There we have got teachings that how a human being can adapt to the nature and not just go beyond the nature. The rivers, the Gangas are a sign of prosperity, are a sign of giving life towards the new living beings. Wildlife like Japan, are an evidence that yes, even a human can stay with the wildlife in a very peaceful environment. Sacred lands like mountains, the waterfalls give a very mental peace towards the human beings. The SDG goals now that we are talking about, the sixth SDG goal talks about respect and protection of rivers, that is sanitation and water bodies. The 11th SDG goal talks about protection of natural and cultural heritage that creates sustainable and reliant communities. 13th, the climate change talks about how the ecological balance of forest conservation and responsible living help in climate actions. And the 15th talks about the life on land, the wildlife on land, because human beings are more dangerous than the wildlife in today's era, what we believe is. So the core findings are that even if we want to get a teaching from, we can get a teaching from the epic on the basis of not judging it as a fiction or a non-fiction, even if the things are non-fiction, but they are helping us towards the human nature, towards believing in the human society, we can follow that. Environmental protection is our own dharma. That means it is responsibility of each and every human being, apart from our religion, apart from our caste, and apart from the societal status. Indian knowledge system is a very good initiative actually to know our own Indian teachings. So we can go back towards that. The values that we can align our own ethics with SDGs, then we will be more able to digest the 17 goals. And the last is that persevering nature is persevering heritage. So last, I would like to conclude that nature is not inherited from our ancestors and we have borrowed it from our coming generations. Thank you. जानकारी बहुत अच्छी और इस तरीके से भी पर एक तो सजेशन कि जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि रामायण रिलीजियस टेक्स्ट की तरह ना देख के तो भी देखो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको रिलीजियस की तरह भी देखना अगर वो नॉन फिक्शन फिक्शन की बात करें उस पर थोड़ा कि क्या जरूरी थी इस बात
Ma'am, it was not important, but many a times when we are on a stage where all the people belong to all the religion, वो contradictory हो जाता है कि मैंने अपने text को क्यों रखा. तो अपने क्लियर कीजिए तब मुझसे सोचिए इस लाइन का मतलब क्या होता है. Yes. I'd say really a very different way of thinking Ramayana. अगर any your questions are there which needs to pass to many people. How is there any idea anything? Surely, ma'am. Actually, I'm pursuing a PhD from Manet, and this is my topic, Ramayana. So, all the conferences that I have attended from that particular day, I am connecting that it with Ramayana. So, in my own way, in each seminar, each conference, like two I have almost done, one in BSS and one in LLB, MLB, sorry. So, I have taken this particular text as my inspiration. I'm much I have solved the papers in scope of tests like the global. Then I think I agree with that. You keep on presenting, then the choice of those versions you are taking it to many steps. It's a good. Thank you, Manji. Our next presenter is Deepa Vaswani from NC. Good afternoon, one and all present here. I am Deepa Vaswani, Assistant Professor from Allen City College. Today my topic is green economy and green economy model and circular economy approaches. As we know that we are following the traditional method, that is we are taking something and making use of it and then we are disposing, and that is not good for our environment. Green economy refers to the sustainable development without harming the resources by using it in a limited quantity and making it efficient. And circular economy refers about waste and pollution. No, it is not changing. Waste and pollution, that we have to make the use of the waste in our hand. After that, we have to dispose that. And after that, it reduces the pollution that we are facing nowadays, very type of pollutions. By using these models, green economy and circular economy model, we can together build a resilient economy without harming our planet. Next is our that is green economy. Green economy particularly invest in renewable energy resources like solar energy panels, and wind energy, and like many more renewable energy we can use. And it also refers to our green infrastructure, that our infrastructure should be like eco-friendly. Then next is our sustainable agriculture. Sustainable agriculture is because if we are using the fertilizer, then it will create the soil pollution. So we must have to think about that. We have to use the organic fertilizers, and then our eco-friendly industries. Eco-friendly industry refers about that if some industry are polluting, that they have to use the filters, and a particular examination of that industry should be taken. And then our circular economy system. It I also told earlier that it based on waste and pollution. We have to reduce the waste by using it, by recycling it, and by remanufacturing and repair work. We can go for this, and so that we can able to develop our planet in a prosperous way and in a sustainable way. Then next is our main objective. Main objective is that we have to understand the principle of green and circular economy. Green and circular economy, it does not the work of the other people. We have to start by ourselves. We have to do it by our hand in our home.
Then next is we have to analyze the link. If we are like in our homes, we are just wasting our everything. Like in dustbin, we are wasting our green waste and then another waste. If we use that green waste, if we give that green waste to in colony animals, then we can reduce it. Then we have to, after that, we have to examine the challenges which are facing, that is unawareness about that. And after these objectives, we can make the transition, very good transition. And the main thing is that we can reduce the carbon emission if we are going for the green economy and the circular economy. We can improve our resources efficiency. We can save it for our future generation. Next is we can support multiple SDG goals, and that overall benefits our planet. Last, like I want to conclude that it is the need of our 21st generation, 21st century, that we have to go for that. And by following green economy and circular economy, we can able to save the resources for our future generation and for ourselves also. Thank you. Thank you. We have two more offline participants left. I'm presenting Nikisha Mandya for our presentation. Stick to the time limit, Nikisha. जल्दी हो जाएगा तो जल्दी कर देंगे. Okay, ma'am. Good afternoon to all. I am Nikisha Mohovia, research scholar from Department of Bioscience, Barkatullah University, Bhopal. Today I am here to represent my research work entitled Multi-Marker Approaches Combining METCOX1 Gene Sequencing and RAPD Markers Revealed Genetic Characterization of Chitala Chitala and Notopterus Notopterus of Halali Reservoir, Madhya Pradesh. As we all know, freshwater fishes play an important role in managing aquatic ecosystem, aquatic biodiversity, and it plays a major role in fisheries. In my work, I have worked on two species, Chitala Chitala and Notopterus Notopterus, in which Chitala Chitala is near threatened species. जब हम इन दोनों फिश को अगर हम देखते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकली काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं, तो इनको कई बार आइडेंटिफाई करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्स1 जीन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के असेसमेंट के लिए आरएपीडी मार्कर पर काम किया. एंड रिसर्च कैप इसमें ये था कि आरएपीडी और मेटकॉक्स1 का जो स्टडी है अभी तक हलाली रिजर्वायर पे इन फिशेस पर नहीं हुआ था. The study has following objectives: molecular identification of both species, DNA barcoding, assessment of genetic diversity using RAPD markers, and support conservation and fisheries. This is the study site, and this is the flow of DNA barcoding. Very first, we have collected fish samples. After the collection of fish sample, we have performed DNA isolation using PCI method. DNA आइसोलेशन करने के बाद हमने इसे पीसीआर किया कॉक्स1 जीन और आरएपीडी के 20 प्राइमर्स के साथ हमने पीसीआर किया. इसके बाद मेटकॉक्स1 जीन की जो सीक्वेंस से जो हमने पीसीआर किया था उस प्रोडक्ट को हमने सीक्वेंसिंग के लिए भेजा.
सेंटर सीक्वेंसिंग जब इसकी हुई तो इसके बाद हमें सीक्वेंसेस मिले, उनको हमने कट करने के बाद, एडिट करने के बाद और अलाइन करने के बाद इनको हमने एनसीबीआई पर सबमिट किया। एंड जो आरएपीडी का डेटा था, आरएपीडी के डेटा को हमने, ये रिजल्ट्स हैं जो हमने एनसीबीआई पर सबमिट किया अपना डेटा, उसके एक्सेशन नंबर्स हैं जो हमें शीतल और नोटोपेरस दोनों के लिए मिले। दिस इज द नेबर जॉइनिंग ट्री। ये हमें मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों क्लेड्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि हम ये दोनों स्पीशीज को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। These are the barcodes generated from board systems. Here are the RFID marker analysis results. Using this gel images, we have generated binary matrix and analyzed using इसको हमने analyze किया POPGene 1.31 और PCOA plot भी हमने इसे analysis किया। ये primer wise polymorphism के results हैं। And REPD एनालिसिस से हमें 115 लोसाई जनरेट हुए, जिनमें हमने 19 प्राइमर्स का यूज किया था। चिताला exhibited a higher percentage of polymorphism than notoperis. The REPD marker effectively differentiated the two species and revealed differences in their genetic diversity. The REPD analysis demonstrated that Chitala possesses greater genetic diversity than Notoperis, highlighting the effectiveness of REPD markers in assisting genetic variation and supporting conservation studies. Here, principal coordinate analysis plot and minimum evolutionary phylogenetic tree. So PCA separated Chitala and Notoperis into distinct genetic clusters. मैं कंक्लूड कर दूं। So morphological and molecular analysis successfully identify Chitala and Notoperis. एंड जब हमने ये पूरा रिजल्ट देखा तो आरएपीडी में हमें चिताला में जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखने को मिला कंपेयर टू नोटोपेरस, जो कि हमें बताता है कि चिताला स्पीशीज जो है अभी ये स्टेबल हो रही है। अभी तक ये नियर थ्रेटन में थी बट ये स्टेबल हो रही है। एंड थैंक यू। Our last presenter is Malika Balu. She's a research scholar from Academic University. पीपीटी है पर वो शेयर करने के बाद फिर स्टार्ट कर 2 मिनट के डिटेल्स देख लेंगे स्टार्ट में देखेंगे। Good evening, judges. My topic of research paper was transformation of a traditional waste management system through green startups in Madhya Pradesh, an empirical study. For background and context, it's understanding Madhya Pradesh waste management landscape and urban dynamics. Traditional system challenges were there. It was outdated municipal infrastructure was there due to because they just dump and forget the waste they have disposed of. Lack of source segregation. Segregation of the waste was the biggest problem with the municipal infrastructure. Informal sector vulnerability. Rag pickers and safety gears and structured fair compensation policy was a big problem for them. Environmental hazards are there. Unmanaged landfills lead to toxic and contaminated greenhouse methane gas emission is also a biggest problem for the traditional waste management system. Primary objective is to evaluate the transition from legacy municipal systems to agile green startups across MP cities like Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior.
quantify the economic viability, job creation potentials, and resource recovery efficiency of technological enabled circular models. Mixed method approach is required, combining quantitative surveys with qualitative deep dive founder interviews across 4 primary tier 1 and tier 2 cities hub. Sample distribution we have taken was 35 registered startups were considered, 12 municipal corporations. Data were collected and 450 urban household respondents were surveyed. Key evaluation metrics were segregation accuracy percentage, route fuel savings, landfill diversion rate, and wage improvement ratio were considered. Analytical tools, statistical correlation, and comparative gap analysis measuring operational performance pre and post were considered. Startup lead innovation with the smart logistics services were considered for the development of green startup. Value addition services have been taken into consideration. Formal inclusion of integrating informal rack pickers into the structured employment with digital identity, healthcare, and fair wages were considered. 82% of key information metrics were considered. Empirical impact highlight was 82% over a 24 months period was considered. Bioenergy and processing, circular economy action were taken. Madhya Pradesh leads in converting urban waste management to green fuel. The Asian continent's largest bio-CNG facility in Indore exemplifies startup government synergy. Traditional versus startup model comparison was there. Operational approach, technology level, worker status, and revenue sources were considered for the comparison of traditional and startup model. Evaluation of waste system in MP. The whole journey of waste management system in MP was considered. Smart logistic and IO technology was there in Bhopal. We have a Kabadiwala, one of the green startup who has combined the digital platform with the waste management system. Environmental and social impact was that the integration of an eco startup in MP has transformed urban spaces, reducing annual urban carbon emission by over 1.2 million metric tons, while uplifting over 15,000 formal waste workers in dignified livelihood. Strategic recommendations for the P3 frameworks was considered. Capital access and incentive models has been used. Thank you. Thank you, Monica. With this, we conclude this technical session. We are very grateful to all the participants who presented a very well-researched work. And I invite Dr. Jikha Mandai to guide us for this technical session. Thank you, Varsha. Om Sri Sai Ram. Esteemed dignitaries, respected speakers, delegates, faculty members, dear students. Once again, I, Dr. Shikha Mandloi, on behalf of Sri Sathya College for Women and IQSE, welcome you all in technical session 3. Theme of this session is Heritage, Policy and Innovation, Pathways to Sustainability through Circular Economy. So this session is about one big idea that sustainability is possible when we learn from heritage, act through policy, and grow through innovation. Our first speaker of this session has joined us. Dr. Lokendra Thakkar is a distinguished environmental professional with over 3.5 decades of experience in environment, biodiversity conservation, climate change, and sustainable development. I request Dr. Anju Bajpai, Principal Law College, to accompany sir on the dais, please. I request Dr. Shalu Saxena, Organizing Secretary, to please welcome sir with the sapling. Sir, we present this sapling as a token of welcome
Just as the circular economy turns waste into wealth and made the sapling grow to give back to nature manifold oxygen, shade, and life. I request Dr. Anju Bajpayee Madam to please present the memento to the sir. Thank you, Madam. Knowing that sir is going to speak on a very interesting topic that connects science with the real world, without taking time, may I take the privilege of introducing sir to all of you. Dr. Lokendra Thakkar is currently serving as the Executive Director of the National Center for Human Settlements and Environment, NCHSC, Bhopal. Previously, he was Chief Scientific Officer at EPCO and Center Head of the State Knowledge Management Center on Climate Change, Government of Madhya Pradesh. He has also served as officer in charge of the Madhya Pradesh State Wetland Authority and nodal officer for SDGs for the Department of Environment, Government of MP. Dr. Thakkar is a lead India Fellow supported by the Rockefeller Foundation and a climate reality leader, mentor, and lead presenter with the Climate Reality Project founded by former US Vice President Al Gore. Through this platform, he has trained hundreds of professionals and students on climate action. An accomplished communicator, he has also been associated with radio and television broadcasting for over 30 years. Please join me in welcoming Dr. Lokendra Thakkar to address us on green audits, carbon footprint, tracking, and SDG. So please. So I don't have any PowerPoint presentation, so I'll speak. So very good evening to all of you. As you've been seeing PowerPoint after PowerPoint after PowerPoint, so I decided to speak and talk to you. In any case, we are very handful of people over here, so no PowerPoints. I'll just speak for a few minutes and then perhaps take your leave. I was seeing the presentation of this girl who was talking about Ramayana. Is she here? Where are you? Good. Thank you. I really liked your idea. And if you're pursuing your PhD in that particular subject, even if it is more interesting. But I was expecting at least one Chopai Doha of Ramayana which connects with environment. Can you cite something? Is anything that, have you read the Ramayana or not? Oh. Vivek Devar is I think he's no more, right? Yeah. But he was a great personality. He is a great economist. But I don't know how, command he has over the Ramayana. I don't know. I've met him a couple of times. Anyways, so while you were presenting your topic, one topic came to my mind, which I would like to read for you, and this is very topical for the current season. रामायण के किष्किंधा कांड में एक चौपाई है और वो चौपाई कहती है कि सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा जिमी गुण सज्जन वही आवही लाखा। इसका मतलब क्या हुआ है? तो मतलब ये है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को बारिश के मौसम में जीवन की और राजनीति की जो नुआंसेस हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से पानी का एक एक बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह से अच्छी आदतों से, अच्छे विचारों से आपका जीवन का व्यक्तित्व निकलता है। तो रामायण में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको हर पेज पर एक ऐसा साइटेशन मिलेगा जो नेचर से, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। और जो मैम ने आपके प्रेजेंटेशन में कमेंट किया, आई एब्सोल्युटली एग्री विद हर कि आपको पहले खुद क्लैरिटी और कंफर्मेशन चाहिए विद इन योरसेल्फ व्हाट यू आर टॉकिंग। इफ यू आर नॉट श्योर,
कि Ramayana can actually give a message, then perhaps you will not be able to convince others. First, be sure as to what you are talking. So that's your initial stages. When you study, I think you would definitely be more confident, more clear about your thoughts and your ideas. But it's a very fantastic idea to work on. Congratulations. So I'm here to talk about climate actions. And if I read the topic, the moment I got this invite, I have been reading this topic again and again. It says that we have to link two things: environmental health and climate actions. And also it talks about sustainable planet. So these are all terms. So I was trying to connect how these climate action and human health is connected. There is nothing, I mean, very mystic. It's very clear. Everybody knows it. That environmental health, which is SDG goal number 3, and climate action, which is SDG goal number 13, these are all linked. Actually, goal number 13 is the enabler. वो आपको ऐसी, अगर आप गोल नंबर 13 पे काम कर रहे हैं, which is climate actions, अगर आप पूरी मतलब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका गोल 3 का कितनी चिंता है ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, क्योंकि गोल 13 is talking about taking climate actions, which means protecting planet, जो आपके टाइटल में लिखा हुआ है, और गोल 3 is health. तो गोल 13 is an enabler. वो ऐसी व्यवस्थाएं आपके समाज में, आपके देश में, आपके समाज में स्थापित करता है कि आपको गोल 3 की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं हो. लेकिन समस्या ये है कि हम गोल 13 पे काम कर पा रहे हैं, न गोल 3 पे कर रहे हैं. और एक चीज जो मैं बताना चाहता था कि ये दोनों, क्योंकि 3 and 13 they are two sides of the same coin. और आप जानते हैं कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो आपकी क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है. अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो क्लाइमेट एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, स्पेशली हीट वेव्स, कोई बता सकता है कि कितनी जानें गई होंगी पिछले साल? अभी जो अप्रैल मई जून की गर्मी में कितने लोग गए होंगे, अपनी जान जिन्होंने गंवा दी होगी इस हीट में? कोई आइडिया? एनी आइडिया? फॉरेन में तो काफी आया है. फॉरेन में तो हाँ, वो गलत कहानी है. यूरोप में इस बार इतनी, हाँ, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार थे नहीं. हमारे यहाँ तो लोग, हाँ, मतलब 40-45 में प्याज रख करके जिम में चलते थे, कपड़ा वपड़ा बांध करके. उनके यहाँ तो ऐसी कोई परंपरा ही नहीं प्याज की, लेकिन वो है छोड़ देना. यूरोप को, इंडिया में this year about 345 people have lost their lives because of heat waves. अब क्योंकि कोई 345 दिन किसी एक व्यक्ति किसी एक दिन नहीं गए तो बहुत बड़ी घटना नहीं बता सकती. दुर्भाग्य से कभी कोई घटना हो जाए कि 350 लोग कहीं चले जाएं, अपनी जान गंवा दें, तो बहुत बड़ा त्रासदी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाएगा. लेकिन अप्रैल मई और जून के महीने में एक आदमी यहाँ, एक महिला वहां, एक बच्चा वहां, ऐसे करके धीरे 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 350 लोग चले. ये बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते, हम बिल्कुल नोटिस नहीं करते. और ये क्लाइमेट एक्सट्रीम कंडीशंस की हालत है. फ्लडिंग में भी लोग, कितने लोग जान चले जाते हैं. एक स्टडी बताती है कि 1 डिग्री टेम्परेचर अधिक हो जाता है और क्लाइमेट एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, तो जो भारत में प्रतिदिन मृत्यु की होने वालों की संख्या है उसमें कम से कम 3,500 लोगों का इजाफा हो जाता है. अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग 1 डिग्री के जाने से मरे, लेकिन वो हार्ट के मरीज होंगे लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो गया. वो शायद कैंसर के मरीज होंगे लेकिन कंडीशन से हुई. और जो मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं बाहर तपती धूप में, उनके लिए तो जिंदगी और भी ज्यादा परेशान है. इतनी मुश्किल है महिलाओं को, स्पेशली विमेन जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, वो ईट हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर में काम कर रही हैं, उनके लिए 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा हो जाना उनकी पूरे शरीर की पूरी एनर्जी को सैपिंग, एनर्जी सैपिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाता, काम नहीं कर पाते, रोजगार नहीं मिलता.
घर में फिर बच्चों को खाना नहीं होता, फिर मैल न्यूट्रिशन की समस्या। तो एक पूरा साइकिल है, दुष्चक्र चल जाता है। हम पहचानते, हमको लगता है 1 डिग्री तो है, हम लोगों में से किसी को भी 1 डिग्री के कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में है, घर में भी है, बाहर भी है, कार में भी है, बाजार में भी है, मॉल में है, वी आर ऑलवेज protected. But look out people who are actually vulnerable, who are poor, who are outside, who are exposed to the extreme heat conditions. So I just wanted to say कि जो extreme heat conditions हैं, अभी आज आपने पेपर में पढ़ा होगा एक वैक्सीन बना है, किसका बना नया वैक्सीन बताइए। कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे वैक्सीन के नाम सुने, अभी कल ही एक नया वैक्सीन आया है जिसको ICMR ने अप्रूव किया है। Can you link that vaccine with climate change and human health? ये वैक्सीन है डेंगू का। अब डेंगू जो बुखार है ये अभी बीच में आया है, आप लोग जो बच्चे हो तो नहीं जानते, लेकिन पहले जब पुराने जब मतलब 100 साल पहले डेंगू एक बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन बीच में ये महामारी कम हुई। लेकिन अभी ये क्लाइमेट एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये जो मच्छर से होने वाली बीमारियां ये बहुत बढ़ गई हैं। और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि इनकी जो ट्रांसमिशन विंडोज हैं, मतलब मलेरिया साल में हर बार पूरे 12 महीने नहीं होता, 4 महीने, या हर इलाके में नहीं होता। ट्राइबल इलाकों में जहाँ मच्छर ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, वहां पे हो जाता है। लेकिन अब क्या ट्रांसमिशन विंडोज बढ़ गई, आपको वो मलेरिया की समस्या जो है जनवरी से लेकर के इधर जून जुलाई तक आ जाती है। पहले इतनी लंबा अवधि नहीं होती थी। दिस इज व्हाट वी कॉल इन साइंटिफिक टर्म्स ट्रांसमिशन विंडोज। तो फॉर चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो बहुत बढ़ गई, और इसका सीधा संबंध जो है क्लाइमेट चेंज से और एक्सट्रीम हीट कंडीशन से। हमारी जो शहरों की जो समस्या है हेल्थ की, वो शहरीकरण है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कोई नुकसान है तो वो है हमारी जैव विविधता का खत्म होना, और हैबिटेट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। और इसके कारण इंक्रीजिंग जो हीट वेव्स हैं या हमारे इंक्रीजिंग फ्लडिंग कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, वो होती हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, आज देखिए सरकार कितने सारी हेल्थ पर प्रोग्राम चला रही है, आयुष्मान भारत है, तो ये वो है, हर दुकानों की लाइन में आपको एक लैब मिलेगी, पैथोलॉजी लैब। हॉस्पिटल्स के विज्ञापन इतने हैं जैसे कि आपको मॉल में कोई बुला रहा है। 365 दिन सेवा उपलब्ध, 24 घंटे 24/7, रिड्यूस रेट पे कार्डियक ऑपरेशन, घटी दरों पर घुटनों के ऑपरेशन। ये इतने बड़े बड़े विज्ञापन आप देख रहे हैं, कितना ज्यादा हेल्थ का मार्केट डेवलप हुआ है। इसका पॉलिसीज और अन्य कारण भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ इतनी बीमारियां भी बढ़ी, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने 5 स्टार से लेकर के छोटे छोटे हॉस्पिटल चल रहे हैं, और कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट है। लेकिन इसके कारण कई बार लगता है कि हम हेल्थ पे बहुत खर्चा कर रहे हैं। सरकार ने जो जेनरिक मेडिसिन के लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन आप अगर 1 रुपया खर्च करते हैं एनवायरमेंट को बचाने में, तो आपके 100 रुपए बचते हैं हॉस्पिटल की कॉस्ट। तो हाउ मच यू आर गोइंग टू, दिस इज ए डिसीजन दैट द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज टू टेक। हम लोग 4 घंटा डॉक्टर के यहाँ इंतजार करते हैं क्यू में अपने क्रम आने का, लेकिन हम 1 घंटा सुबह वॉक करने नहीं चाहते। दिस इज द वे दैट वी आर थिंकिंग। मोस्ट ऑफ अस आर वेरी केयरलेस अबाउट हेल्थ, और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो और ज्यादा हमारी प्रॉब्लम को एक्सेंचुएट कर रही है और ज्यादा बढ़ा रही है। तो कॉस्ट ऑफ एक्शन वर्सेस कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, करने और नहीं करने की दोनों की कीमत है। करने की भी कीमत है और नहीं करने की भी कीमत है। जो नहीं करते हैं उसकी कीमत का हमको अंदाजा नहीं होता। और क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट एक्शंस की आपने बात की है, SDG 13 की, this is what the climate action is taking, that you take actions. Otherwise, if you don't take action, the cost of inaction will be much higher than what you are taking climate actions. But we are not able to understand the difference, because cost of inaction sometimes and many times cannot be understood immediately.
the effect and the impact comes much later. So मैं अपनी बात को नहीं खत्म करूंगा. I think time is already running out. But मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन हेल्थ के मुद्दे अब हॉस्पिटल्स में और लैब्स में तय नहीं होंगे. ह्यूमन हेल्थ के मुद्दे अब जंगल को बचाने में, बगीचों को बचाने में, तालाबों को बचाने में, एयर क्वालिटी को बचाने में. और SDG 13 और SDG 3 they are two sides of the same coin. If you are working on SDG 13, your SDG 3, which is human health and well-being, can also and easily be taken care of. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable insights on climate change and SDGs. Our next speaker for the session has joined us. Dear delegates, please join me to welcome Dr. Engineer Manish Modkar, Scientist D and Head Sustainable Construction Materials Division and Center for Advanced Radiation Shielding and Geopolymeric Materials, CSIR, EMPRI, Bhopal. I request Dr. Neena Arora, Madam, convener, to please accompany sir on the dais, please. I request Dr. Megha Singh to please present sapling to the sir and welcome him. So we are pleased to welcome our esteemed guest with the sapling today, a living symbol of growth, sustainability, and hope for a circular future. Thank you, madam. Before inviting sir for his address, may I have the privilege of introducing the very innovative scientist who is working on developing advanced geopolymeric materials for sustainable and climate resilient infrastructure. Dr. Engineer Manish Modkar, Chief Scientist and Head, Sustainable Construction Materials Division and Center for Advanced Radiation Shielding and Geopolymeric Materials, CSIR, AMPRI, and Professor, Engineering Sciences, ACSIR. He is a pioneer in developing cement-free, fly ash-based geopolymer concrete and radiation shielding materials using industrial waste. His work directly contributes to climate action by reducing carbon emissions from cement and by promoting circular economy through waste valorization. With 79 research and development projects, 8 patents, 4 from US and 4 Indian, 52 SCI publications, and the recent CIDC Vishwakarma Award 2025, his technologies have been demonstrated at CSIR, AMPRI, and AIMS Bhopal, setting benchmarks for sustainable infrastructure in India. He has also guided 29 MTech and 6 PhDs. Today, we'll be sharing his insights on environmental health and climate action, economic solution for a sustainable planet. Please join me to welcome Dr. Manish Modkar.
दूसरा ये नहीं Good evening. First of all, I am thankful to Sathya Sai College administration, Jai Sai Ram, giving this opportunity to me to share my views in front of August Wellbeing. So, respected all the dignitaries, this particular hall. I am giving a small talk on this particular national seminar on environmental well-being and climate action. Sir has already told you the importance of this in, climate change and all. So I am just adding to that because I am basically civil engineer and MTech PhD environmental engineering. So I am working on bulk utilization of industrial waste for making sustainable construction materials. So friends, this I have 33 years of experience in this particular area. I have developed this advanced eco-friendly, cement-free geopolymeric concrete for infrastructural application. I am a chief scientist and heading the sustainable construction division of CSIR MP Bhopal. So friends, we all know we are sitting in this particular hall and we are sitting in this building. So since last 200 years, we are depending upon the cement as a binder. Nobody accepts any other binder in the world. Since last 200 years, Joseph Espidon was the mason who has patented this cement as a binder. And as he was from Portland, so आपने सुना होगा that cement name is Portland cement. So Portland is near England. There is a place where he has invented that cement. So friends, cement is a very energy intensive process. आप लोगों ने कभी सीमेंट प्लांट कहीं जाने का मौका मिला होगा या देखा होगा, तो सीमेंट में आर्जिलिशियस और कैलकारियस मिक्सचर मैंने क्ले और लाइमस्टोन को मिला के 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है. और that 1450 degree centigrade to develop that particular temperature, the coal combustion is there, and it is estimated that one ton of cement produces around 1 ton of carbon dioxide. So you can see, in India we are generating this, producing around 280 million tons of cement per annum. So around 280 million tons of carbon dioxide being released by cement industry. Another drawback is that
it is production is 8% world CO2 it is contributing to the world, and it is highly energy intensive and highly environmental threatening process. So to mitigate that use of cement, we thought of doing some research on any alternative material where we can work on it. So concrete, you must have heard about the concrete, columns and beams जो भी होते हैं वो concrete के होते हैं. आपकी roads भी बनती हैं तो बहुत सारी concretes की बनती. So that concrete is the largest man-made material utilized by the mankind. And 20 to 30% of that concrete is a binder material. उसमें कुछ metals होते हैं, that is called गिट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ. So 50 to 60% metal होता है उसमें, 20 to 30% sand होती है, that is a fine aggregate, and 20 to 30% is a binding material. So conventionally, all over the world, ordinary Portland cement is used as a binder, and 1 ton of cement produces around 1 ton of carbon dioxide. And to save the resources, natural resources, we have done this work on replacing cement by fly ash-based geopolymeric, cement-free geopolymeric concrete. Friends, in India, आप सोचेंगे फ्लाई ऐश कहाँ से निकलती है, तो फ्लाई ऐश हमारे इंडिया में आज की तारीख में as on date, as per the Central Electricity Authority, 189 thermal power plants are registered in India, or they are generating around 318 million tons of fly ash. That fly ash is being used in as a admixture, means additive in the cement industry. 15 से 35% तक का मिलाने की अभी IS 3812 के हिसाब से एक परमिशन मिली हुई है 2013 में. उसमें ये बोला गया कि अगर हम सीमेंट में 15 से 35% सीमेंट का आप फ्लाई ऐश को मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज PPC. इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. आप जब मार्केट में आज जाएंगे तो आपको सिर्फ PPC मिलेगी. OPC has 3 variants, 33, 43, 53. आप कभी जाएंगे OPC लेने तो आपको वो पूछेगा कि आपको OPC कौन से ग्रेड की चाहिए. तो 33, 43, 53 मीन्स आपको इट्स अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 days कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. अगर उसकी 53 MPa है तो वो 53 ग्रेड की सीमेंट होती है. आपने देखा होगा जब मेट्रोस बनती हैं, मेट्रो के पिलर्स बनते हैं, कि जहां हाई राइज बिल्डिंग बनती है वहां 53 ग्रेड का सीमेंट OPC यूज होता है. जहां हमारा सिंपल घर का G+1 बनाना रहता है 33 ग्रेड की सीमेंट से काम चल जाता है. पर फ्रेंड्स, आप सिर्फ 15 से 35% सीमेंट में ऐड कर रहे हैं. नॉट इट इज अलाउड एट द सीमेंट प्लांट ओनली, नॉट एट द आपके डोर स्टेप पे अलाउ नहीं है. तो इसको हमने 100% फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट फ्री कंक्रीट डेवलप करने के लिए काम किया. हम जब फ्लाई ऐश लेते हैं, आपने फ्लाई ऐश एक आंख देखी होगी. दैट फ्लाई ऐश इज बेसिकली व्हेन वी कैरेक्टराइज दिस फ्लाई ऐश विद आवर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, तो हमको पता चलता है कि इट्स अ सिलिको एल्यूमिनस मटेरियल. इसमें सिलिका भी होता है और एल्यूमिना भी होता है. अगर सिलिका और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड 70% से ज्यादा होता है तो इट इज कैटेगराइज्ड एज क्लास F फ्लाई ऐश. और अगर 50% तक रहता है तो इट इज कॉल्ड एज क्लास C फ्लाई ऐश. तो पूरे वर्ल्ड में अभी अपने इंडिया में 189 में से करीब करीब यू कैन से 150 प्लांट्स आर जनरेटिंग क्लास F फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश जो निकलती है वो डिपेंडिंग अपॉन दी कोल कंबशन होती है. कौन सा कोल आप जला रहे हैं तो वैसी फ्लाई ऐश निकलेगी. तो दैट कोल, इफ बिटुमिनस कोल इज देयर देन वी विल जनरेट क्लास F फ्लाई ऐश. तो मैक्सिमम इंडिया में बिटुमिनस कोल ही यूज करते हैं. अगर सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट और लिग्नाइट करते हैं तो क्लास C फ्लाई ऐश निकलती है. तो इंडिया में एज पर IS 3812 सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में मिक्स करने के लिए क्लास F फ्लाई ऐश इज अलाउड फॉर मिक्सिंग.
मैंने इस पे काम चालू किया. We have done some laboratory experimentation. Then we have bought around 21 tons of fly ash to MP Bhopal from Sarni Thermal Power Plant. और उसको जब हमने एनालाइज करके देखा तो वी गॉट दैट इट इज अ क्लास एफ फ्लाई एश. इसमें सिलिका 58%, एल्यूमिना 27%, आयरन ऑक्साइड 6.5% मिला. इसको हमने जब और एनालाइज किया, इसको एक्सआरडी किया, तो इसमें क्वार्ट्स, मोलाइट, हेमेटाइट और सिल्यूमिनाइट मिला. इसका पार्टिकल साइज FTIR और SEM करके देखा तो SEM में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉल तरीके, हॉलो बॉल तरीके दिखते हैं. अब वर्ल्ड में जियो पॉलीमर बनाने के लिए मीन्स एक प्रोफेसर डेविड ओइड फ्रांस में है जिनने 1978 में ये नाम दिया जियो पॉलीमर. इट्स नॉट ए पॉलीमर फ्रेंड्स, इट्स अ इनऑर्गेनिक पॉलीमर. अगर किसी भी सिलिको एल्यूमिनस मटेरियल को आप अल्कली से रिएक्ट कर देते हैं तो रूम टेम्परेचर पे एक ऐसा जेल बन जाता है दैट बिहेव्स लाइक ए सीमेंट. तो उनने उसको नाम दिया जियो पॉलीमर. पर उसकी कुछ कंस्टेंट थे कि उसमें मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज नॉट पॉसिबल इन फ्रांस. तो उसको हमने इनकैश किया कि जब हमारे इंडिया में पूरे 8 महीने हमको ये टेम्परेचर मिल जाता है तो व्हाई डोंट वी वर्क ऑन इट. तो हमने उस पर काम किया और मैंने इस पे मैक्सिमम फ्लाई एश से बनाया. वी कैन मेक इट बाय फ्लाई एश, स्लैग, मेटाक्यूलिन, सिलिका फ्यूम, राइजर्स कैश. इन सब चीजों से जियो पॉलीमर बनाया जा सकता है. जो कलकली लेते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सिलिकेट लेते हैं. और सेटिंग एंड हार्डनिंग होने के बाद एक ब्यूटी इसकी ये है कि अब व्हेन वी कंपेयर दिस टू सीमेंट एंड दिस पर्टिकुलर बाइंडर, तो सीमेंट 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है और ये 35 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है. सीमेंट में पानी डालने के बाद में तराई करने से स्ट्रेंथ आती है, इसमें पानी उड़ाने से स्ट्रेंथ आती है. मैंने इसमें क्यूरिंग की जरूरत नहीं लगती, सिर्फ डोर डाल दी हमने और उसको पानी उड़ता जाएगा, स्ट्रेंथ आती जाएगी. सो बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स बाद में क्यूरिंग करते नहीं. तो एक हमारे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला, इसमें SiO बॉन्ड बनता है और उसमें CSH जेल बनता है. 83% कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है इसमें. ओनली 0.17 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है पर टन ऑफ प्रोडक्शन. फ्रेंड्स, इस पे मुझे 8 पेटेंट ग्रांट हुए हैं, 4 US, 4 इंडियन. और इसका अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं हम तो इट इज सीमेंट कंक्रीट जो है प्रोन टू सेग्रीगेशन होता है, ये रेजिस्टेंट टू सेग्रीगेशन होता है. सीमेंट कंक्रीट में वाटर क्यूरिंग लगता है, इसमें नो वाटर क्यूरिंग नहीं लगता है. ये सीमेंट कंक्रीट में अगर आग लग जाती है तो 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा CSH जेल टूट जाता है. इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो बाद में उस बिल्डिंग में आप रह नहीं सकते. लेकिन ये इस कंक्रीट में 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्ट्रेंथ को कुछ नहीं होता. दूसरा, ये सल्फेट रेजिस्टेंट है, इसका श्रिंकेज 1/3 है. इसका थर्मल एक्सपांशन 1/3 है. क्रीप कोफिशिएंट इसका लो है, हाफ है. और एक्सेलेंट ड्यूरेबिलिटी है. क्यों बोल रहे हैं? इट इज प्रूवन दैट मिस्र के पिरामिड जो बने हुए हैं वो इसी टाइप के जियोपॉलीमरिक मटेरियल से बने. तो ये प्रोफेसर डेविड ओविड मिस्र में, वहां इजिप्ट में जाके सैंपल लेके उन्होंने उसको एनालाइज किया और उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा कि ये जो मटेरियल है ये इट इज अ जियोपॉलीमरिक. तो उस जमाने में जब बने हुए आज हजारों साल से वहां खड़े हैं. पर हम साइंटिस्ट हैं, आप भी सब प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं. जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते तब तक हमारी समाज हमसे कन्विंस नहीं होता. तो मैंने 2014 में अपने कैंपस में एक छोटी सी 34 मीटर लेंथ और 150 mm थिकनेस की एक रोड डाली. ये रोड का आपको फोटोग्राफ्स, लाइव फोटोग्राफ से सबके, इसको रोलर से सिंपल पानी डाल के, रोलर से मुरम डाल के करने के बाद हमने छोटे मिक्सर को लेके ये
काम चालू किया और मैंने ये 2 दिन के अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा किया था 2014 में। और 7th डे में मैंने इस पे अपनी गाड़ी चलाई थी। 7th डे ड्राइंग के बाद इसमें करीब 18 मीटर क्यूब कंक्रीट डला था, 8 टन्स ऑफ फ्लाई ऐश यूज किया था इसमें, और इसकी स्ट्रेंथ M35 आई थी, 35 मेगा पास्कल आई थी। इसकी लो वर्केबिलिटी थी उस समय 2014 में जब मैंने काम किया मेरे स्टूडेंट्स ने, तब बिल्कुल जैसे ही बनाते थे वो एकदम सेट हो जाता था और बिल्कुल लो वर्केबिलिटी थी उसमें। वर्केबिलिटी मीन्स एक फावड़े से जो एक मेसन जब खींचता है कंक्रीट को तो वो कंक्रीट को मिक्स नहीं कर पाता था। देन उस पर हमने और काम किया। ये 14 डेज के बाद इट इज रेडी फॉर यूज फॉर ट्रैफिक। इसके बाद 2017 में मैंने एम्स भोपाल में, बिकॉज हमारे यहाँ कहते हैं आपके अंदर कैंपस में तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता तो बाहर कुछ डाल के दिखाइए, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया और 2017 में एम्स भोपाल में CPWD वाज कंस्ट्रक्टिंग ए रोड, तो मैंने उनसे बात करके और देन वहां से परमिशन लेके एक बड़ा मिक्सर जो होता है RM800 उसको यूज करके, और ये 2017 में मैंने एक बड़ा ट्रायल किया। ये एम्स की बिल्डिंग है, इसके सामने की रोड डली हुई है। ये रोड एक मिनट में कॉल है सर, मैं कहीं लेक्चर देना है। तो ये एम्स भोपाल में जब OPD सेक्शन के सामने है, आधी रोड इसकी सीमेंट कंक्रीट की डली है, आधी रोड इस कंक्रीट से डली हुई है। और फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि 2017 से आज 2026 आ गया, 9 साल से कंटिन्यूस 24/7 उस पर ट्रैफिक चल रहा है। 110 mm की सड़क है, उसमें मिनिमम क्रैक्स है। उस सड़क का पोर्शन देखने के लिए IITs के प्रोफेसर्स, IITs के डायरेक्टर्स, इंडियन रोड कांग्रेस के लो ऑफिसर्स, हमारी CRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वो सब आके पर्सनली उसमें से सैंपल्स ले लेके गए हुए हैं और उन लोगों ने इसका पोस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके भी बताया है कि ये रोड जो है वो कन्वेंशनल कंक्रीट से करीब 20% हायर स्ट्रेंथ है। ये आपको इस तरह से ट्राइबिक से इसको हमने वो किया था। और आप ये देखिए, अगर इसमें चलता होगा, ये नहीं, ठीक है, नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल ट्राइमिक से हमने फिनिश किया था इसको, जो कन्वेंशनल मेथड्स होती हैं। और इसमें भी हमने करीब 20 इट इज लेंथ 23 मीटर थी और 3.5 मीटर विड्थ थी, और इसका स्ट्रेंथ भी करीब 35 MPa आया था। और इस समय हमने एक सुपर प्लास्टिसाइजर डेवलप किया था जिसकी इसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ गई थी। सो दैट सुपर प्लास्टिसाइजर वाज द इन्वेंशन की उसके कारण हम ये कर पाए। देन फ्रेंड्स, इसको मैंने इससे पेविंग ब्लॉक्स भी डेवलप किए एंड आई गॉट फंडिंग फ्रॉम माय CSIR। मुझे करीब करीब इसके हाई एंड एप्लीकेशन के लिए मुझे रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट फॉर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के लिए प्रोजेक्ट मिला अराउंड 5.59 करोड़ का, और एक 2.83 करोड़ का ये इसका अप स्केलिंग का प्रोजेक्ट मिला। तो इसमें मैंने एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ एस्टेब्लिश किया है। कभी मैडम तो आए थे, अरोड़ा मैडम, पर मैंने एक बहुत बड़ा सेंटर है, आप लोगों को जब समय मिले प्लीज यू कैन विजिट हियर। इट्स अ फर्स्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड which is working on radiation shielding and geopolymeric materials। तो इसमें अपस्केल्ड लेवल पे, और इसको कवरेज हमारे न्यूज ने भी दिया था कि फ्लाई ऐश से बनी सड़क सीमेंट से ज्यादा मजबूत। फिर उसको हमने डिफरेंट टाइम्स पे इसकी इवैल्यूएशन किए, और इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी थी कि इसकी लो वर्केबिलिटी थी और मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, उसके बाद भी हम नहीं रुके। मेरे एमटेक स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स के साथ काम करके मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिखा, दैट इज रोलर कॉम्पैक्टेड जियोपॉलीमरिक कंक्रीट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रोलर से जैसी अपनी ब्लैक रोड बनती है, जैसे फ्लेक्सिबल रोड बनती है, वैसे हमने इसका रोड को बनाने की कोशिश करी। एंड इसको बनाने
इसको प्रिपेयर करने के बाद में आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट कि ये जो आप देख रहे हैं ये रोलर से हमारे यहाँ एमपी में जो हमने रोड डाली थी उसी के ऊपर हमने 100 mm की और एक लेयर डाल के देखी। ये 2026 मार्च में किया था एक्सपेरिमेंट और इसकी स्ट्रेंथ भी हमारे को 35 to 40 MPa आई और इस रोड को इंडिया की फर्स्ट सीमेंट फ्री जियोपॉलीमरिक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट रोड का वो मिला नेम और भोपाल में बनी देश की पहली रात की सड़क सीमेंट जीरो। तो ये हमने बनाई, इसको हमारी डायरेक्टर जनरल, हमारी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जो लेडी डायरेक्टर जनरल बनी है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, वो मैडम हमारे उनने आके इस रोड का इनॉग्रेशन किया और मैडम ने इसको उसी दिन दिल्ली जाके कैबिनेट मिनिस्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि वी हैव इन्वेंटेड दिस सॉर्ट ऑफ कंक्रीट। तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनने एक मीटिंग कॉल करी, मुझे और मेरे डायरेक्टर साहब को वहां बुलाया गया और हमने एक प्रेजेंटेशन वहां अपना ये पूरा दिया और आई एम ग्लैड टू शेयर दैट कि आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन we got approval of 2 kilometer trial on national highway। तो अब नेशनल हाईवे पे ये सड़क डलेगी और इसका हमने और वेरिएंट बनाया है। इसके लिए सुपर प्लास्टिसाइजर, एक केमिकल सुपर प्लास्टिसाइजर डेवलप किया है जिसको डालने से इसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती पर फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको हमने वो भी बनाया और हमारे ही कैंपस में हमने इसके कॉलम्स और बीम्स भी डाले। तो ये हमने एक पूरा स्ट्रक्चर इससे बनाया है। ये भी पूरे इंडिया का पहला स्ट्रक्चर है जो जियोपॉलीमर कंक्रीट से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो बना है पूरा जियोपॉलीमर कंक्रीट से है। इसके पहले मैंने 2010 में एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्ट्रक्चर छोटा सा एक बूथ लाइक स्ट्रक्चर बनाया था और इस स्ट्रक्चर को प्रोफेसर डेविड ओविड ने फ्रांस में अपने उद्बोधन में ये कहा था कि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। इसको अभी कभी आपको समय मिले तो कभी आके देख सकते हैं। इसका मैंने अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी स्टडीज के लिए इसको ऐसा कैसे ही रखा है कि कल से कोई मेरे से पूछता है कि आपने कंक्रीट बनाई तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। आज 2010 से लेके आज 2016 साल से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से करते रहते हैं और हमने पाया कि इसकी स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ती जा रही। तो ये इस तरह के इसके पेविंग ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, कर्ब स्टोन भी बना सकते हैं। मैंने 5000 पेवर ब्लॉक्स बना के अपने कैंपस में इसका डिमॉन्स्ट्रेट किया है। फिर मुझे NGT ने कॉल किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनने बोला था कि मोरबी, जो गुजरात में एक मोरबी है, वहां अपनी टाइल्स और कमोड और वॉश बेसिन्स बनते हैं। तो ये लोग जब वॉश बेसिन बनता है और जरा सा एक हेयर लाइन क्रैक आ जाता है तो वो दे यूज्ड टू थ्रो इट, क्योंकि उनके लिए वो खराब हो जाता है। तो मिलियंस ऑफ टन्स वहां इकट्ठा हो गया। तो वहां से NGT ने उनको ऑब्जेक्ट किया। फिर दे केम टू एमपी भोपाल, मुझे कांटेक्ट किया था और फिर देन आई हैव गिवन ए प्रोजेक्ट प्रपोजल और मैं 10 टन वहां से मटेरियल वेस्ट लेके आया था यहाँ और मैंने उसको प्रोसेस करके इसके सीमेंट फ्री मैट्रिक्स में इसको यूज करके मैंने पेविंग ब्लॉक्स और कर्ब स्टोन डेवलप किए। और ये नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वहाँ एक मोरबी में अभी नई इंडस्ट्री लग रही है जो इसको यूज करके और वहाँ पेविंग ब्लॉक्स और कर्ब स्टोन बनाई। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हम अपनी जो कन्वेंशनल रोड और पेविंग ब्लॉक्स और कर्ब स्टोन की टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको जस्ट बताया कि एक मैंने हाई एंड एप्लीकेशन पे काम किया, दैट इज रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट फॉर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो उसका भी मुझे प्रोजेक्ट मिला था बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज से और उसके थ्रू मैंने रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट, सीमेंट फ्री रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट डेवलप करी और उसको AERB का अप्रूवल मिल गया है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। और अब जाके आगे
इसके अंदर जो एग्रीगेट डेवलप किया है वो रेडमड से किया है। रेडमड इज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बेस्ड, उससे हमने हैवी डेंसिटी एग्रीगेट डेवलप किया है और उसको यूज करके हमने ये कंक्रीट डेवलप की। तो इसका फ्रेंड्स अभी आप ये स्लैब्स देख रहे हैं, ये स्लैब्स एक 35 से 40 किलो का एक स्लैब बनाते हैं हम। ये स्लैब रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग की। ये स्लैब्स को 80 स्लैब्स को हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लेके गए एंड वहां 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। वहां गामा सोर्स होता है उनके पास, उस गामा सोर्स के सामने इन स्लैब्स को रख के टेस्ट किया एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट कि हमारी जो कंक्रीट डेवलप की थी हमने, उसकी एट्यूनेशन फैक्टर में गामा रेस रोकने की क्षमता that is 12% higher than the conventional hematite ore based concrete that they are using. तो अब हमारे डायरेक्टर ने डीई सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और अब भविष्य में हमारे देश के पास एक अल्टरनेटिव टू हेमेटाइट और एग्रीगेट है जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए अपनी कंक्रीट बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे एक और चांस मिला था लास्ट 2024 में, मैं यूसीआईएल ने मुझे इनवाइट किया था, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जादूगोड़ा में है, कभी आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड में जादूगोड़ा करके जगह है, वहाँ यूसीआईएल है, जहाँ यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अपने हिंदुस्तान का यूरेनियम की वहाँ माइंस है, वहाँ माइंस में से यूरेनियम को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद 1 टन ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस 670 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम। 1 टन को प्रोसेस करते हैं तो 670 ग्राम से निकलता है। बाकी जो मटेरियल रहता है 99% मटेरियल वो फेंक देते हैं। सिंस लास्ट 70 years they were throwing that material. अब एनजीटी ने उनको बोला कि आप एम्प्री जाइए और आप वहां के साइंटिस्ट से कंसल्ट करिए, और फिर वहां से लेटर आया, देन आई हैव बीन कॉल्ड देयर एंड मैं वहां से अपना बख्तरबंद गाड़ी में, क्योंकि बिकॉज ये सब स्ट्रेटेजिक सैंपल्स होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी था, तो उन लोगों ने एक गाड़ी में पूरी यूरेनियम मिल टेलिंग मुझे भेजी थी और उसमें मैंने प्रोसेस करके उससे पेविंग ब्लॉक करस्टोन बना के वापस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भेज दी। अब वो फ्यूचर में वहां टेस्ट हो रहे हैं अभी कि सॉलिडिफिकेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। तो ये सब कुछ चीजें रहती है जो हम लोग ज्यादा पब्लिक में शेयर नहीं कर पाते हैं, पर हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों को करना पड़ता है जाके कि हमारे देश के लिए जो हो सकता है। ये हमारी फैसिलिटीज है मेरे सेंटर पे। ये सर्वो कंट्रोल कंप्रेशन फ्रैक्चरल टेस्टिंग मशीन है, एक्सआरडी है हमारे यहाँ, एसईएम है, एफटीआईआर है, एक्सआरएफ है, और जो बड़े इक्विपमेंट्स है जिससे हम लोग अपने टेस्ट कर सकते हैं, टीसीएलपी है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचेट प्रोसीजर। मैं आपको 1 मिनट के लिए और दूंगा। आप लोग सब केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी होंगे। आप कोई भी हैजार्डस वेस्ट को अगर आप जमीन पर डाल देते हैं तो उसमें से लीचेबिलिटी होती है। आपने सुना होगा लीचेबल कंसंट्रेशन हो जाता है। तो लीचेबिलिटी में हैवी मेटल अगर उसमें लेड होगा तो लेड जो है ग्राउंड वाटर में लीच हो जाएगा। तो लीचेबिलिटी इज हाईएस्ट इन एसिडिक कंडीशन। तो उसके लिए कैसे लीचेबिलिटी को टेस्ट करें, तो देयर इज ए प्रोसीजर एज पर यूएस ईपीए मेथड नंबर 1311। आप डालिएगा नेट पे, टीसीएलपी टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचेट प्रोसीजर। ये जो कोने में आप लास्ट बार देख रहे हैं वो टीसीएलपी इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास इसके 4 यूनिट्स हैं। कभी आप कोई स्टूडेंट आके टीसीएलपी करना चाहे या देखना चाहे तो कभी हम लोग करेंगे, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। उसमें हम 25 ग्राम्स ऑफ सैंपल लेते हैं, उसको एक डाइल्यूशन लिक्विड में मिक्स करते हैं और उसके बाद उसमें 10 psi के प्रेशर पे हम उस सिरिंज में उसको सैंपल को निकालते हैं। उस सैंपल को फिर हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे या आईसीपीएमएस में उसको टेस्ट करते हैं कि कितना लीचेट होगा। तो वो एक तब हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ आपका जो वेस्ट है वो इट इज हैजार्डस और नॉट। तो वो भी हम टेस्ट करते हैं। तो ये मैं आपको, मेरा एम्प्री की नई बिल्डिंग है ऊपर, और ये 2 सेंटर्स ये मैंने नए एस्टेब्लिश किए हैं यहाँ।
तो कभी आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम टू दैट पर्टिकुलर सेंटर। मतलब कि काफी लगता है कि इतना ज्यादा उधर जो हमारे को नहीं दिखती है वो फाउंडेशन के सैंपल्स इतने हैं छोटे छोटे स्कोप है बहुत नॉर्मल सीमेंट में और टायर जो आपने बनाया है उसको कॉस्टिंग वाइज कितना डिफरेंस है? अभी राइट नाउ जो हम लोग लैब लेवल पे टेस्ट किया, बिकॉज हम लोग जो लेबोरेटरी केमिकल्स यूज करते हैं और हमने कमर्शियल ग्रेड के केमिकल से भी काम किया है। ये जो पूरे रोड्स वगैरह डाले कमर्शियल ग्रेड के केमिकल्स डाले, इट इज अराउंड 15 to 20% हायर देन दी सीमेंट अभी। बट क्या होता है आपको बताऊं, हम लोग 1 टन 2 टन केमिकल्स खरीद पाते हैं मैक्सिमम। उनकी डिमांड रहती है अगर आप 1 ट्रक पूरा खरीद लें तो हम 50% हमारे केमिकल की कॉस्ट कम कर देंगे। सेकंड थिंग, इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इसकी थिकनेस ऑफ द रोड हम करीब 20-30% कम कर सकते, तो वहां सेविंग होगी। थर्ड, 83% लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के कारण भी गवर्नमेंट उस पर वो देती है कि भाई आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, सीमेंट बनाने के लिए आपको लाइमस्टोन की माइन चाहिए, क्ले की माइन चाहिए, यहाँ हम वेस्ट प्रोडक्ट से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर पूरी तरह से बेनिफिट निकाला जाए तो इट इज एट पार टू लेस देन दैट सीमेंट कॉम। पर अभी क्या है, जब तक कि बल्क लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अभी मैंने एक और प्रोजेक्ट लिखा है और आई गॉट दैट अप्रूवल आल्सो। अभी एक वीक पहले ही आ गया है वो अप्रूवल। तो मुझे 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, उसमें रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट जो होता है आपने देखा होगा, तो इस कंक्रीट के लिए रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए अप्रूवल आ गया है मेरे पास। अब मैं यहाँ एक फर्स्ट रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट इंडिया का यहाँ सेटअप होएगा, उसको देख के पूरे इंडिया में फिर प्लांट्स लगेंगे। तो क्या होता है कि आप भी देखते हो, आप किसी चीज नई चीज को कन्विंस करने में लोगों को, क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर आप रात को पंखे के नीचे सोते हैं तो आप 100% श्योर रहते हैं कि ये पंखा मेरे सिर पे नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको कुछ कंक्रीट पे इतना विश्वास है कि ये छत मेरे पे गिरेगी नहीं। तो वो विश्वास लाने में 200 साल लग गए सीमेंट को। अब कोई नई चीज से हम कोई बनाते हैं तो वो विश्वास जो है वो लोगों को एकदम नहीं मिलता। मैंने लोगों को डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस मटेरियल की चीज में कहीं कोई क्रैक आ जाएगा, कोई गिर जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले रोड से काम चालू किया, क्योंकि रोड जो है सबसे सेफेस्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गड्ढा होगा। तो रोड पे काम किया, अब रोड से हम स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहे हैं। रोड में इट इज प्रूवन। अब 2 किलोमीटर का ट्रायल जिस दिन हो जाएगा तो इंडियन रोड कांग्रेस उसको अप्रूव कर दे। तो अब हम लोग सब काम कर रहे हैं, और जिस दिन कोई बड़ा ट्रायल और करेंगे तो हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे, आपके यहाँ के स्टूडेंट्स आके देख सकते। हाँ, जियो पॉलीमर्स की वो कब तक देखने को मिल जाएंगे? एक कॉमन सर आपने कभी डेमोन्स्ट्रेशन दी है एम्स पे और कॉमनली जो बनती है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी टेक्निक्स? मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम लोगों ने जैसे नेशनल हाईवे ट्रायल का अप्रूव हो गया। अब हम अपने यहाँ रोड, अपने कैंपस में रोड डाल दी हमने, एम्स में डाली है। अभी गवर्नमेंट ऑफ एमपी भी कह रही है कि हम डालें, तो अब हम उनके साथ भी, कल ही मेरी मीटिंग है मिनिस्टर ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी। तो देखिए कब तक कहाँ पहुँचते हैं, ये मैं निकाल सकता हूँ। और कोई क्वेश्चन जी? बस यही कहना था आपसे। हम लोग सब जिस चीज को वेस्ट बोलते हैं वो वेस्ट इज अ रिसोर्स, इसको इसीलिए यूएस ने फ्लैश को ग्रे गोल्ड बोला। तो बाहर कंट्रीज में इसको बहुत वो मिला है कि
इस तरह के कोई काम करें जो बेस से हम कोई काम कर सकते। रिसोर्सेज इतने हैं हमारे यहाँ। अब इसके काम करते करते अभी मुझे नया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से एक वो आया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि एक आपने सुना होगा, माइंस जब कोल माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में से कोल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टोरिंग करके भरना पड़ता है। तो वो मटेरियल के लिए बोल रहे हैं कि आप आपके स्प्लैश बेस्ड जियोपॉलीमर फाउंडेशन को आप इसमें यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें क्यूरिंग नहीं लगती। सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि क्यूरिंग नहीं लगती है, उसमें टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है अच्छा, तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो एक रिक्वायरमेंट वहां से आई है। इस तरह की कुछ नई नई रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। तो अब उससे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से भी बात हुई है, तो उन्होंने इसके लिए भी अप्रूव किया है। तो जो खासकर आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, वो एक बार आके एक बार देखेंगे तो उनको अच्छा विजन बदलेगा, आपको इनोवेशन के लिए नए थॉट्स आएंगे कि क्या है एक्चुअली। तो पता नहीं और है जो आपके फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो रेडिएशन शील्डिंग कैसे होती है, कैसे आप तो रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स डेवलप करते हैं, लेड को कैसे आप वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for those insightful remarks on how sustainable materials can drive climate action. Geopolymers are a perfect example of circular economy in action. They transform grey gold, slag, and other byproducts into high-performance construction materials. Our next speaker, Dr. Pooja Sathya, archaeologist Dharohar, has joined us. I request Dr. Megha Singh to please accompany Dr. Pooja on dais. I invite Dr. Varsha to please welcome Dr. Pooja with the plant sapling and present memento. Pooja has joined us since morning and now she is running short of time. So she's requesting us to skip her introduction, but I would like to tell you all that she's our alumni and she's president of our alumni session, Restore Chill Talk. I invite her for her talk on the topic The Stone and the Stream, Heritage, Environment, Interrelationship in Bhojpur. साई राम। और जिस सड़क की बात सर कर रहे थे उस सड़क से मैं रोज गुजरती हूँ, वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस रोड से मुझे वापस भी जाना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए इसलिए मना किया कि मैं इसी घर की हूँ और सब मुझे जानते भी हैं। करीब 30 साल पहले हम इन्हीं गलियों में इन्हीं कक्षाओं में पढ़ा करते थे। तो मैं आज जो प्रेजेंट करूंगी वो सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, वो हम सब छात्राओं की है जो इस महाविद्यालय से पढ़कर गई या पढ़ रही हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन को मैं अपनी ओर से, मेरा की ओर से और हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी टीचर और बहुत प्रिय टीचर इंदिरा नारायण मैडम को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो इस वर्ष हमारे बीच में हुई है। और शायद इतिहास में मेरा करियर चुनने का कारण वो और महाविद्यालय था। तो मैं भावुक हो जाऊं उन्हें याद करके, उससे पहले अपना विषय शुरू करती हूँ। समय की बहुत कमी है, थोड़ा फास्ट करूंगी। कहीं मजा नहीं आए तो वोटिंग करना और अच्छा लगे तो ताली बजाना। तो हम सब के पास में, भोपाल के पास में ही एक मंदिर है, भोजपुर का मंदिर। लगभग हम सब ने देखा ही होगा और जिसने नहीं देखा उसे देखना चाहिए। लास्ट के जो सेशन चले आ रहे हैं सब विज्ञान के भरी भरकम विषयों पर है और मैं तो कला संकाय से हूँ, तो आपको कला की तरफ ले जाऊंगी, आध्यात्म की तरफ ले जाऊंगी, धर्म की तरफ ले जाऊंगी और धर्म को हम अपने जीवन में उतार कर कैसे अपनी प्रकृति को संजोते हैं वो कोशिश करूंगी कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं
कि हम अपने को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे संजो लें। तो आपको मैं दिखाती हूँ एक नए तरीके से। भाई साहब चल नहीं रहा, जरा देखो आके। यार ये चल नहीं रहा जरा। तो ये जो है ना इमेज को ना यार पूरी पीपीटी है, कहाँ से चल रहा है? अच्छा अरे थोड़ा सा बताओ। अच्छा ओके। तो ये भोजपुर की पुरानी फोटो है और हम जो जिस जगह की बात कर रहे हैं अभी हम भोपाल में बैठे हैं और मैं जो बात करूंगी वो भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है उसकी बात कर रही हूँ। तो आप एरिया को समझिएगा और सेंटर में उसके भोजपुर होगा। और हम सब ने कहावत सुनी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये वही राजा भोज हैं जिन्होंने भोजपुर का शिव मंदिर बनाया। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, पुस्तकें तो बहुत लिखते हैं पर सर जैसे इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो भोज वो है जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और बड़ा तालाब हमारे पास है। तो उसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है ना, और हम सब ने देखा भी है। अरे यार, तो अगर हम इस एरिया को थोड़ा ध्यान से देखें, जो मैंने आपको भोजपुर और भोपाल वाला जो हिस्सा दिखाया है, थोड़ा पीछे जाना है। एक 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 हाँ ओके। तो अगर हम इस क्षेत्र को सैटेलाइट से देखें तो अभी ये आपको बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा है, प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है, हम सब जानते हैं, है ना। और अगर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो ये जो प्लेट्यू है ये हमको ओम की शेप का दिखता है। और आश्चर्यजनक बात ये है, ये देखिए अब दिखा। और अगर इसको आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके एकदम सेंटर में भोजपुर का शिव मंदिर है। तो क्या ये शिव मंदिर उस समय खोज ने कोई सैटेलाइट इमेज देखी थी, ये क्या हुआ था नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि इस ओम घाटी पर के बिल्कुल मध्य में भोजपुर का शिव मंदिर है। तो ओम घाटी का होने का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है हम सब जानते हैं, डिटेल में नहीं जा रही, पर एक यात्रा है हमारी जो हमें चेतन से स्वप्न की ओर ले जाती है और वहां से अवचेतन यानी जो समाधि की स्थिति होती है। और समाधि से जब आप सरस्वती है उसके बीच में और फिर आप सुषुप्त अवस्था में पहुंचते हैं जहां माया है जो आपको रोकती है परब्रह्म से मिलने के लिए। और यदि आपकी साधना उसे क्रॉस कर जाती है तो वो जो बिंदु दिख रहा है जो हमारे माथे पर भी है बिंदी के तौर पे, वो तुरीय अवस्था है जहां हम पर ब्रह्म को पा लेते हैं, यही ओम है। तो बहुत डिटेल में जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखने की बात है कि अगर हम जानते हो कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि सृष्टि का सृजन कब हुआ, सृष्टि का सृजन हो गया लेकिन उसमें जब जीवन नहीं आया तो फिर शिव ने ओम का नाद किया और जैसे ही उन्होंने ओम का नाद किया ऐसे ही उस वाइब्रेशन से सृष्टि में जीवन आ गया। और फिर शिवलिंग की जगह कौन सी है ओम में, बिल्कुल वही है जो 1000 साल पहले जहां इतना बड़ा शिवलिंग रख दिया गया। तो ये है ना इस जगह को जागृत करने का तरीका। तो संभवतः इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिसको हम ओम घाटी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, साइंटिफिक डिपार्टमेंट कह रहा है, मैंने रेफरेंस डाला हुआ है, जल्दी मैं नहीं बोल रही। तो इस एरिया को, पूरे इस क्षेत्र को जागृत करते हैं आप तब जब आप शिवलिंग की ओर मुंह कर कहते हैं ओम। तो ओम अगर आप अभी भोजपुर के सामने जाएं तो आपको दिखेगी बेतवा नदी, लेकिन अब अगर आप 1000 साल पहले गए होते तो आपको दिखाई देता वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब जो अब नहीं है। तो ये जो रेड डॉट है ये दिख रहा है भोजपुर का मंदिर, बीच में मंदिर द्वीप दिख रहा है, द्वीप मतलब आइलैंड,
तो ये पूरा तालाब था, इसलिए मंडी द्वीप का नाम पड़ा मंडी द्वीप, है ना। तो ये ऐसा तालाब था, और इधर देखिए बड़ा तालाब भोपाल है, हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पर ये ओम के अंदर एक तालाब था, लेकिन ये तालाब आर्टिफिशियल था। तो एक बड़ी सी लैंड थी, उसको चुना गया, और उस समय ना जाने कैसे सर्वे किया, और इस तालाब को आर्टिफिशियली 1000 साल पहले बनाया गया। तो अगर आप खड़े होते भोपाल में, तो आपको तब उस समय 1000 साल पहले बड़ा तालाब भी नहीं दिखता, वहां से दिखती एक नदी बहती हुई कोलास, जो अब तालाब के अंदर है। तो वहां से एक नदी बहती थी कोलास। तो ये मैं बता रही हूँ राजा भोज ने जो प्लानिंग की, आज भी आप गूगल अर्थ को जूम इन करेंगे तो वो जो उसका ट्रेस कर सकते हैं आप। तो ये नदी बहती थी, इस नदी आगे बह जाती थी जहां आजकल हलाली है, और ये कुछ ऐसे बहती थी। तो भोज ने इस पर एक बांध बना दिया। पानी की बड़ी सुबह से बात हो रही है कि पानी बड़ा जरूरी है, तो उस पानी को इकट्ठा करना है, तो नदी का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा किया, एक बांध बनाया जिसको आजकल कमला बांध कहते हैं। इस बांध के बन जाने से, ये वो बांध है 1000 साल पुराना है, तो ये बन गया बड़ा तालाब, पानी रुकने लगा, कंट्रोल हुआ और बन गया बड़ा तालाब, ठीक, और भर गया पानी। अब आगे की प्लानिंग शुरू हुई और पानी को ले गए भोजपुर की तरफ। तो मैं लंबी कहानी क्या को नहीं ले जा रही, पर आगे जब ये स्ट्रीम चलती है जिसको आजकल हम बोलते हैं कल्याण स्रोत, इसका पुराना नाम है कल्याण स्रोत, क्योंकि कल्याण नाम के गोल्ड ने बताया था कि कैसे इसका पानी मर्ज कराना है। तो ये जो बड़े तालाब का पानी है, ये जब आगे बढ़ता है, फिर जब बगरची आ जाता है सीआरपीएफ, वहां एक और डैम बनाया। फिर इस डैम के बन जाने से जो नदी है कल्याण स्रोत नदी, वो 90 डिग्री पर मुड़ गई, और जब मुड़ गई तो फिर उसका पानी बेतवा की ओर बढ़ा। फिर एक और बांध बनाया बिल्कुल भोजपुर पे, जहां हम लोग पहले नदी में जाते थे, आजकल बंद कर दिया, वहां पर एक और डैम बनाया। ये है वो कल्याण स्रोत वाला, ये 90 डिग्री पर अभी भी मुड़ी हुई है, नहीं तो इसका ओरिजिनल कोर्स जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो था। ये डैम है, 1 किलोमीटर से लंबा डैम है ये देखिए, इसी के ऊपर से अपन भोजपुर जाते हैं। फिर ये जब आगे चला पानी लेकर, तो ये 2 पहाड़ियां जो हमको दिख रही हैं, इस पर फिर से एक डैम बनाया। तो 3 डैम के बनने से क्या हुआ कि ये जो एरिया था 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये एक कटोरे जैसा हो गया, और चारों तरफ की पहाड़ियां जो हैं वो इसको कटोरे का किनारा हो गई। तो जितने आउटलेट थे वो बंद कर दिया, और बन गया एक बड़ा सा कटोरा, और उसमें भर गया। सर ने चौपाई पड़ी थी और कहा था कि बूंद बूंद सहेज के ही तालाब बनाओ, है ना। तो वही बात है, बूंद बूंद सहेजी और तालाब बनाया। तो 1000 साल पहले अगर आप खड़े होते तो ये तालाब कुछ ऐसा दिखता, लेकिन फिलहाल ये तालाब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 14वीं सेंचुरी में मानूगढ़ सुल्तान था होशंग शाह, उसने तीसरा बांध तोड़ दिया, तो ये सारा पानी बह गया। ये और जहां पर जब ये तालाब पूरा बन गया, तो जहां पर 9 नदियों का संगम होता था, क्योंकि अगर आपने किंवदंती सुनी होगी कि भोजपुर का मंदिर क्यों बनाया, तो किंवदंती है कि राजा भोज को लिपरेसी हो गई थी, किसी ने कहा कि 9 नदियां 99 नाले जोड़कर एक तालाब बनाओ, शिव की आराधना करो तो तुम्हारा लिपरेसी दूर हो जाएगी। तो ये किंवदंती कितनी सत्य नहीं मालूम, लेकिन जहां पर 9 नदियों का संगम होता है, वहीं पर भोजपुर का मंदिर बना। मैं इसलिए ये कह रही हूं कि जो धर्म है वो कहता है कि आप एक एक बूंद को सहेजो, और उसको कैसे सहेजो, कैसे करो, उसे अपने जीवन में उतार लो। तो फिर जब उस जगह मंदिर ये अपना क्या बोलते हैं जगह जब तालाब बन गया, तो फिर वहां पर शिवलिंग की स्थापना की। तो शिवलिंग की स्थापना देखिए विशाल विशाल पत्थरों से की, और आपने देखा होगा ये पत्थर कैसे बने, जो टॉप का पत्थर है ना 60 हाथियों के भार के बराबर है, उसे उठाया और अंगूठी की तरह ऐसे पहना दिया। और ये पत्थर वही का है लोकल, जो तालाब बनाने के लिए पत्थर निकाला गया था गहरीकरण के लिए, किसी तरीके की कोई हानि नहीं है, गहरीकरण भी हो गया और वही पत्थर निर्माण के लिए उपयोग भी हो गया। और फिर उसके स्तंभ रखे गए, आसपास काम चलता रहा, लगातार मंदिर बनता रहा।
उसके डिजाइन्स बने। आपने देखा होगा आसपास जो लोहे की रेलिंग है, पत्थर को कैसे तोड़ा, लकड़ी की गुंडी लेकर जो सेकेंडरी टर्शरी वुड होती है उसकी गुलियां बनाते हैं और उसको छेद करके पत्थर में घुसा देते हैं और उसमें कुछ नहीं करना, आपको रोज आना है, एक लोटा पानी डालना, चले जाना है। कोई डायनामाइट नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। 7-8 दिन बाद, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है, अपने आप टूट जाएगी, अपने आप स्प्लिट हो जाएगी, ना ही लगे ना फिट करी, है ना। और ये फिर आगे बनता गया इस तरह से मंदिर, है ना। इसमें कहीं कोई प्रदूषण नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये खड़ा तो जब मंदिर बन गया, हम सब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते हैं। क्यों करते हैं? तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग को कहा गया कि ये अष्ट मूर्ति है, उसके 8 मुख हैं। भले ही आपको गोल दिखाई देता है लिंग भाग, लेकिन उसके 8 मुख होते हैं और 8 नाम है उन मुखों के। तो जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो उन मुखों के आधार पर ओम की प्रदक्षिणा होती है ना। और ओम की प्रदक्षिणा होती है तो वो जागृत होता है। तो शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? शतपथ ब्राह्मण कहता है कि शिवलिंग क्या है? तो वो अष्टमूर्ति है, उसमें भव है यानी जल है, तालाब है। फिर शिव का अगला मुख जो है वो रुद्र है, ताप है, जिसमें कि वाष्पीकरण होता है। फिर भीम अनंत आकाश है जहाँ बादल बनते हैं। ईशान है सूर्य जो उसे पका के बारिश बनाता है। पशुपति है, बारिश होती है तो सब कुछ पलता है। महादेव चंद्र के रूप में है जिससे फसल होती है और फिर वापस वो पृथ्वी पर गिरता है और फिर वो भव बन जाता है। ये चक्र चलता रहता है। सुबह जो है सर्कुलेशन एनवायरमेंट की बात हो रही थी, मुझे लगता है ये वो ही कुछ है। तो पूरा जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उसका अर्थ ये होता है कि हम उस प्रकृति के उस चक्र को जल अर्पित कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, उस जल को अर्पित कर रहे हैं जो बाष्प बन के वापस बरसेगा और हमें फसल देगा, है ना। तो हमको समझ में आया कि ये तो पूरा की पूरा ओम लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जब ये बांध टूट गया और बहुत समय गुजर गया तो फिर क्या हुआ कि जो 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था वो बन गया कृषि भूमि में और बन गया वहां पर, आपने कभी आशीर्वाद आटे का नाम सुना होगा, उसका जो गेहूं है वो उसी तालाब की मिट्टी से जाता है और हम सबका पेट भरता है। और इसके साथ ही हमने देखा कि तालाब में 265 से ज्यादा तो बर्ड्स की प्रजातियां हैं, कितने ही प्रकार की मछलियां हैं। तालाब जो है वो रामसर साइट है इसलिए कि वो जैव विविधता में अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। तो भोज ने जब तालाब बनाया था उसका जो आज हमें परिणाम मिल रहा है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। मुझे लगता है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले हम उसे बनाएं और फिर उसको अपने जीवन में कुछ इसी तरह उतारें, तो निश्चित ही यह धरती हमेशा बची रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पूजा, आपने बहुत ही रिफ्रेश कर दिया हम सबको आपके चिर परिचित अनोखे अंदाज से जिसमें कि आप अपनी बात हमें समझाती हैं। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई कि सस्टेनेबिलिटी हम जनरली स्टूडेंट्स को समझाते हैं या बहुत सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं कि जीवन जीने का वो तरीका है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि उसका उपयोग हमारी जनरेशन भी करे और हमारे आने वाले जनरेशंस भी उसका यूज कर पाए। आज से 1000 साल पहले राजा भोज ने सस्टेनेबिलिटी पे कितने
अमूल्य काम किए हैं, उनका योगदान जो है अतुलनीय है, इससे हमें पूजा ने परिचित कराया. थैंक यू सो मच पूजा. So we have spent this day discussing how science and technology can address climate challenges. From policy to practice, every solution must ultimately protect human health, ecosystems, and the future of our planet. Thanks to all our speakers for sharing such valuable research. Your work truly reflects the spirit of this seminar, turning climate action into sustainable solutions for our communities. With this, we end this session here. I now invite Dr. Varsha to please continue with the valedictory session. Thank you, Chikhama. A very warm and gracious good evening to one and all. In alignment with the divine blessings of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, we believe that end of education is character. As we approach the concluding chapter of this profoundly enriching journey, I, Dr. Varsha Saxena, welcome you all to the valedictory session of this national seminar on environmental well-being and climate action towards a sustainable planet. Over the course of this seminar, we have witnessed confluence of intellect, scientific insight, and ecological consciousness. It's my absolute honor to extend a heartfelt welcome to our chief guest, Dr. Manish Mudgal, sir, Principal Scientist, CSIR AMPRI. With immense pleasure, I also welcome our respected director and patron of this seminar, Dr. Pratibha Singh ma'am, visionary principal and co-patron, Dr. Renu Mishra ma'am, co-patron and ex-principal and dean science faculty, Dr. Archana Srivastav ma'am, respected principal law college, Dr. Anju Vajpayee ma'am, dynamic and diligent IQSC coordinator, Dr. Meena Arora ma'am, respected faculty colleagues, enthusiastic delegates, and my dear students. I request the honorable dignitaries to take their seats on the dais. An event of this scale is rich with intense brainstorming, research presentations, and vibrant discussions. To give us a consolidated insight of the milestones achieved, I invite IQSC coordinator and convener of the seminar, Dr. Meena Arora, to present the comprehensive report of the seminar. Thank you, Varsha. A very good evening to all. Om Shri Sai Ram. It's my privilege to present the report of the National Seminar on Environmental Health and Climate Action Towards a Sustainable Planet, organized by Internal Quality Assurance Cell, Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal, with the generous financial support of the MP Council of Science and Technology, Bhopal. I warmly extend my welcome to our chief guest, Dr. Manish Mudgalji, Director Madam, Dr. Pratibha Singh Madam, Principal Dr. Renu Mishra, Principal Law College Dr. Anju Vajpayee, Ex-Principal Dr. Archana Srivastav, all the faculty members, dignitaries, delegates, dear students, research scholars, all the participants who joined online and offline. A hearty welcome to all of you in the valedictory session. This seminar was conceived to provide a multidisciplinary platform for academicians, scientists, policymakers, industry experts, research scholars, and students to deliberate on the urgent challenges of environmental degradation, climate change, and sustainable economic development. The program was aimed to promote innovative solutions aligned with the Sustainable Development Goals. The seminar commenced with the inaugural session raised by eminent dignitaries, Chief Guest Professor Rajiv Dikshit Ji, Vice Chairman Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Government of MP Bhopal. He emphasized the need for collective responsibility and awareness to ensure environmental protection and a healthier, sustainable future. He raised the concern about excessive use of chemicals in daily life. Guest of honor, respected Dr. N.P. Shukla ji,
former Chairman, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi. He highlighted the importance of and the development of Miyawaki forest as urban forest for environment conservation. Chairman, College Governing Body, Shri Jambu Bhandari ji, highlighted the growing environmental concern and need for immediate action. The technical session was featured distinguished experts from academia, research institute, and government organization who shared their valuable knowledge and experiences. Dr. N.P. Shukla, former Chairman, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, Government of India, New Delhi, delivered an enlightening lecture on circular economy model for environmental health and sustainable growth. He highlighted the importance of resource efficiency, waste minimization, and policy intervention for sustainable economic development. Dr. Engineer Manish Mudgalji, Chief Scientist and Head Sustainable Construction Material Division and Center for Advanced Radiation Shielding and Geopolymeric Material, CSIR MP Bhopal, delivered an insightful presentation on advanced eco-friendly cement-free geopolymeric concrete for infrastructure applications. He demonstrated how innovative technologies can transform waste into valuable resources, contributing to environmental sustainability and economic growth. Dr. Lokendra Thakkar, Senior Scientific Officer, APCO Institute of Environmental Studies, Environmental Planning and Coordination Organization, APCO, Government of Madhya Pradesh delivered an informative lecture on green audits, carbon footprint tracking, and SDG reporting. He emphasized the importance of environmental assessment, carbon accounting, and institutional sustainability reporting for achieving national and global climate goals. Dr. Paramita Das, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, ISER Bhopal, delivered an excellent lecture on cellulose nanocrystals as novel functional nanomaterials towards sustainable packaging. She explained the potential of biodegradable nanomaterials as eco-friendly alternatives to conventional plastic packaging, thereby supporting sustainable industrial practices. Dr. Pooja Saxena, Director, Dharohar Foundation, highlighted the significance of stone and the stream heritage environment interrelationship in Bhojpur. She explained how conservation of natural ecosystem and cultural heritage must go hand in hand to ensure sustainable development. Throughout the seminar, engaging discussions took place on environmental health, climate resilience, circular economy, green technologies, renewable energy, sustainable materials, carbon footprint reduction, waste management, and the role of scientific innovation in achieving the Sustainable Development Goals. The seminar witnessed enthusiastic participation from more than 160 participants, including faculty members, research scholars, students, scientists, and professionals from various institutions in both offline and online modes. Their active participation throughout questions and meaningful interaction greatly enriched the academic deliberations. As a tangible commitment towards sustainability, the organizing committee also announced a plantation drive of 1,000 trees in collaboration with the Sri Sathya Sai Seva organization to offset the carbon footprint of the seminar and promote environmental stewardship. The session on oral and poster presentation was also organized, and the results of which will be shortly announced. The success of this seminar would not have been possible without the generous financial support of the Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal,
They express our sincere gratitude to MPCST for encouraging scientific dialogue and environmental awareness. We also extend our heartfelt gratitude to our chief guest, keynote speaker, invited speaker, delegates, organizing committee, faculty members, student volunteers, technical staff, and every participant whose contribution made this seminar a grand success. I have sincerely hope that the ideas shared and the collaborations initiated during this seminar will inspire future research, innovation, and collective actions towards building a healthier environment and a sustainable future. Let me conclude. The future of our planet depends not only on scientific progress, but also on our values, ethics, and individual responsibility. Let us leave this seminar with renewed awareness and a commitment to live in harmony with nature. As Bhagwan Sri Sathya Sai Baba said, love nature, serve nature, and protect nature. Together, let us become ambassador of sustainable development and create a healthier, greener, and more compassionate world. Thank you so much. Sign off. Thank you, Ninama. We now arrive at one of the most eagerly awaited moments of our seminar, the felicitation of those bright, promising minds who distinguished themselves in poster and oral presentation competitions. I request our dignitaries on the dais to kindly distribute the certificates and trophies to prize winners. First, I'll announce the oral presenters. The first prize for oral paper presentation goes to Nikisha Mahovia. Is she there? Nikisha Mahovia. Please call Mrs. Dew. The second prize for oral paper presentation goes to Dr. Akhilesh Shinde. He was present with us online. So he's not present here because he was. Congratulations to Dr. Akhilesh Shinde. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. The third prize goes to Mansi Tripathi. Mansi Tripathi, come and accept your prize. That's for oral presentations. Now we'll proceed to poster presentation awards. First prize for poster presentation session goes to Deepak Raghuvanshi. Deepak Raghuvanshi. Second prize for poster presentation goes to Manisha Pandey. Manisha Pandey. Second prize. Second prize for online. Second prize in poster presentation for online presentation goes to Faiz Osmani. Online presentation time. Congratulations to you, Faiz Osmani. Congratulations. Next we go to the UG category.
And the first prize goes to Insha Hassan Zaidi. Congratulations, Insha. Congratulations, Insha, once again. The second prize, the second prize for UG category goes to Aisha Siddiqui. Congratulations, Aisha. The third prize for poster presentation goes to Aruchi Saxena. I think she has left. Aruchi has left, so we'll ask Meena ma'am to keep her prize because she's our student. Okay. Congratulations to Aruchi. Next we go to. The next is PG student poster presentation. And the first prize goes to Reena Kumari. Congratulations, Reena Kumari. Second prize goes to Priyanshu Kumre. Second prize in PG student poster presentation category goes to Priyanshu Kumre. लिस्ट में लिखा नहीं है डेजिग्नेशन नहीं है Third prize for PG poster presentation category goes to Anjani Dubey. Anjani Dubey. Congratulations. And Swastika Chaturvedi. Anjani Dubey and Swastika Chaturvedi. Heartiest congratulations to all the winners. Special prize. Special prize. Special prize. Special prize from our organizing team goes to Anita Gajbhie. Anita Gajbhie. और कौन है कंडीशन कौन है देखिए ये सब सेकंड से उसमें दो और कुछ Congratulations once again. Special prize from organizing team also goes to our first oral presenter Sikandar Khan. Congratulations to you. Congratulations to all the prize winners. Heartiest congratulations to all the winners. We are truly grateful to our judges for their insightful evaluation and constructive feedback. I now most respectfully invite our chief guest, Dr. Manish Mudgal sir, to bless our students with his wisdom. Good evening, and already I have given my talk and respected all the dignitaries on the dais, of the dais, and the whole administration of Sathya Sai Women's College, who has given this opportunity to me for sharing my thoughts at
such a renowned institute of Bhopal. You can say it's a renowned institute of MP. We are listening this institute, and I'm glad to share that my first PhD student is from Sathya Sai College. She was Pooja Bharadwaj. She has done PhD, and I was co-guide of her. And she was the first ACSR PhD of CSIR entry. So I have guided her in geopolymer only. So she has done this PhD. Now she is somewhere abroad. So she is working, and all over the India, we are seeing this fame of this college, and very disciplined, very enthusiastic teachers, well behaved staff, and wherever we go, we used to listen the praising of this particular college. So I am very much glad and thankful for giving opportunity here, and I heartfully invite all of you, all chemical sciences, physical sciences students with your staff to MP Bhopal. On every 26th of September, we are celebrating our open day celebration. That time you can have a glance of our institute. You can see the most sophisticated equipments what we have in this institute. I'm just sharing you, we have TEM facilities. It is one of its kind in India. That is transmission electron microscopy. So आपको मैंने स्टूडेंट्स को नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि एक बाल जो है था अपना, उस बाल को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाया जाता है. तो पार्टिकल के हम जो एटॉमिक स्केल पे उसको देखा जा सकता है कि आपका गोल्ड पार्टिकल एटम कैसा दिखता है. तो वो भी हमारे करीब उसकी कॉस्ट है उस इक्विपमेंट की 9.5 करोड़ की कॉस्ट है. So that instrument is with us. We have ICP, we have FTIR, we have XRD, we have XRF. Most sophisticated instruments जो होते हैं, जैसे मेरे पास 5000 किलोन्यूटन की compression fracture testing machine है. That is first of its kind in MP. IITs के बाद अगर है तो MP भोपाल में है. तो आप कभी आइए. मटेरियल साइंस इज अ वास्ट नॉलेज बेस. आप मटेरियल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल से लेके केमिकल मटेरियल से लेके मेटलर्जिकल मटेरियल से लेके नॉन मेटलर्जिकल में सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं. उसकी अलग अलग आयामों पे काम होता है. तो प्लीज डू विजिट समटाइम एंड सी आवर एग्जिबिट्स. मैंने एक पूरा एग्जीबिशन हॉल बनाया है, तो उसमें हम लोगों ने अपना पूरा वर्क एक जगह पे रखा है. सो दैट अगर हम लोग कुछ कारणवश किसी को अंदर नहीं ले आ पाते तो उस एग्जीबिशन में यू कैन सी दैट. तो मैं यहाँ भी कहूँगा आपके यहाँ सत्य साई कॉलेज में भी कि जो भी बच्चों ने आपके यहाँ कुछ इन्वेंशन किए हैं, कुछ PhDs किए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, तो उसका एक एग्जीबिशन हॉल बनाएं और उसमें उनके पोस्टर्स लगाएं, और सो दैट इन फ्यूचर यू कैन recognize that event contribution made by your students. So my heartfelt congratulations for this particular mega event you have done here. And I have already offered, madam, that not only MPCST, DST, PRNS, and different organizations are there to support you in this sort of conducting seminars. So, well, in time you have to write them. They are happy to share their support in terms of money, also in terms of application, in terms of different avenues they are supporting us. So different organizations are there. We are in touch with different organizations. Even you can do some collaborative seminars with EMPRI also. If you touch our director, Professor Khallada Bhaskar is our new director.
He is basically chemical sciences man. He was in IIP Dehradun as a chief scientist, and before 1 year back, he has taken over the charge of our director. So I just wanted to share his inventions. He has developed biobitumen. From biochar, he has developed bitumen, and that bitumen, because we are importing bitumen from outside India for construction of roads, so he has developed biobitumen, and that technology has been transferred to 23 companies in India by Dr. Gadkari. गडकरी जी ने उसकी टेक्नोलॉजी लास्ट 6 months पहले उसको 23 कंपनीज को दी है, और अब इंडिया में बायो विटामिन मैन्युफैक्चर होने लगा है, और यस वेरी मच गुड एक्सपीरियंस इन केमिकल साइंसेस. तो कभी मौका पड़ेगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी उनको इनवाइट करें, so he can give a talk on chemical sciences, because he is an eminent speaker also, and he is a distinguished professor of ACSR. We are having dual designation. I am chief scientist also. I am professor of ACSR, but our director is distinguished professor of ACSI. So he is having a good knowledge. So my whenever time comes, मैं आपको request करूँगा कि उनको invite करें. I'll help you to bring him here sometime. So most welcome to MP Bhopal on our open day at this on 26th September 2026. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words of encouragement and your invitation to visit MP Bhopal. As we draw this seminar to its gentle close, I now request Dr. Sunita Yadav, my organizing secretary, to propose a formal vote of thanks. The feedback link will be shortly shared in the IQC group. Kindly fill it. You will receive your certificate shortly. Thank you. ओम श्री साई राम। वैसे इस पल का इंतजार सभी बच्चे बहुत देर से कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ओम श्री साई राम। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, एमिनेंट स्पीकर, एसटीएम डेलीगेट, faculty members, researchers, my dear students, a very good evening to one and all. Life doesn't change in one day, but daily efforts change your life. Small improvements and innovations create the biggest success. In the same way, this seminar is a small but meaningful step towards promoting environmental well-being and inspiring positive change in our lives and mindset. It encourages us to take responsibility, adopt sustainable practices, and contribute to protecting our planet. As we arrive at the close of this nation's seminar on environmental well-being and climate action towards a sustainable planet, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the valedictory function. I, Dr. Sunita Yadav, Organizing Secretary and Associate Professor, Zoology, once again heartily welcome you all members present in the auditorium and on virtual platform as well. Welcome you all. On behalf of the organizing committee, I express my sincere gratitude to our esteemed chief guest of inaugural session, Dr. Rajiv Dikshit, guest of honor, Dr. N.P. Shukla, whose inspiring, thought-provoking address set the tone for this program and motivated all the participants. I express our sincere gratitude to our respected chief guest of valedictory session, Dr. Manish Mudgal sir, for your inspiring address and valuable guidance. Your words have motivated us to strengthen our commitment towards environmental conservation and sustainable development. I extend my heartfelt thanks to our resource person, Dr. M.K. Shukla sir, Dr. Parinita Das, Dr. Loken Thakkar sir, and Dr. Pooja Saxena ma'am
for sharing their expertise and enriching us with insightful deliberations. Thank you, sir and ma'am. I am also thankful to all judges for poster and paper presentation, Dr. Jyoti Saxena ma'am, Dr. Archana Singh ma'am, Dr. Ankit Agarwal sir, and Dr. Anjum Ansari. I also express a deep gratitude to our governing body, Chairman governing body, Shri Jambu Bhandari sir, Director Dr. Pratibha Singh ma'am, Principal Dr. Inu Mishra ma'am, Principal Law Dr. Vajpayee ma'am, Co-Patron and Ex-Principal Dr. Archana Srivastav ma'am, and Convener Dr. Neena Arora ma'am, and entire member of organizing committee, volunteers, support staff, whose dedication and teamwork ensured the successful conduct of this event. और ये हमको दिख भी रहा है कि बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम हुआ है. My sincere appreciation goes to all the delegates, researchers, faculty members, and students for your participation and insightful presentations, which made this seminar a vibrant platform for learning and collaboration. We are grateful to our sponsor, media partner, photographers, whose valuable support contributed significantly to the success of this event. As I conclude my vote of thanks, I would like to leave you with a beautiful thought that reminds us that meaningful change begins with action. ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने को कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा. Thank you all for your gracious presence and invaluable support. Wishing you a wonderful day and sustainable future ahead. और लास्ट में जोरदार तालियां उन सब पार्टिसिपेंट के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी यहाँ ऑडिटोरियम में प्रेजेंट है और जो ऑनलाइन भी अभी जुड़े हुए हैं. Thanks to all. साइराम. Thank you, Sunita ma'am. We always enjoy your vote of thanks. और आपकी जो पोएट्री होती है वो बहुत ही bang on होती है. Thank you so much once again. So now we conclude with national anthem. After that, all of us will stand here for a group photograph. Thank you so much. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे.